her B Pharm and Masters from Bombay College of Pharmacy, and she worked during her Masters. I don't know how many of you know Professor Bhalla, but he is one of the father figures in pharmacy. And then she did her PhD from CU Shah College of Pharmacy under again one of our alumnus, Professor Kamlander K. Singh. Currently, she is at UK in a university, teaching in a university, and she has been throughout, as I said, her career associated with industries like GSK and then JB Pharma, Novartis, and her last innings were spent at Perigo India OTC. And she was also a board of directors with Perigo, which is again a multinational company. Some of you might already know. And she has an experience in new chemical entities as well as novel drug delivery systems. And she has also led teams for US FDA inspections of the Perigo's unit at Ambernath. And she has been the key person in commercializing a broad array of products ranging from oral solids to laser drilled devices, molded and compressed lozenges, chewies, etc. She is also conversant with topical, dental, dermatologicals, etc. So recently Perigo moved from India, and then she is mainly consulting with various industries. She's a visiting faculty at a few institutes, and she has also joined as an adjunct faculty at UIPS. So today she will talk to you on the business of innovation, developing commercially viable drug formulations. So we welcome you, ma'am, and okay, should I? Is it? Yeah, I think that will be good. Yeah, yeah. That's it. No, you have to just. and this is a slide change. Yeah. Uh, am I okay? You can at the back. Can you hear me? Yes or no? Yeah. Okay. Good. Okay. All right. So I missed, so thanks, ma'am, for the introduction. Um, I really would have loved to, listen on Monday and Tuesday. I missed meeting him also, Dr. Sanjay Garg. But yesterday, at least, I could get some, flavor of that. So today, really, I'm going to talk about business of innovation, developing commercially viable drug formulations. See, you all are, I think, fortunate than I think our generation people, because we really, you have internet and whatnot, and you have to make use of it for many things that you have access to. So for example, अभी मैं जैसे जैसे बोलती जाऊँगी, and because I'm out and formulation person, मेरे it's very close to my heart, formulation. And today, when I go to buy a drug at the chemist shop and I have to buy something which I have developed, that is really, you will get about you also. Afterwards you'll see that you'll be buying your own drug which you have developed, so that gives us immense satisfaction. Yeah. Yeah. Flutivate ointment जैसे Flutivate and Mupirocin ointment GSK में एक टन बैच बनाती थी मैं नासिक में जाके, and to buy a 5-gram tube I had to spend I think like 200 rupees one day. So you know how it is. So anyway, so that you'll realize later. So this my agenda is a mix, because it's more of business talk today. So I'll be covering of course the technical little bit, but कैसे develop करने हैं हमको formulation में we all try to do all kinds of things, nano, SLN, liposomes, we all talk so many complex things, and yes we have to do that also. I do understand M.Pharm में कुछ करना है, PhD करना है, whatever you have to do. B.Pharm में भी लाइव प्रोजेक्ट होता है, यहाँ पे मैम लाइव प्रोजेक्ट करते हैं, होता है. So we try to do something different, be it small in B.Pharm last year.
but we obviously we want to do something innovative and which is understandable. So we will see how right in the beginning कि cost को भी कैसे उसमें डालें. We tend to overlook that. We tend to use fancy things, you know, in the formulation without even knowing what it would cost. So let's see. Yeah, so other than that, I will be also, when I will talk, since branded formulations, I have been in GSKs and Novartis, which are innovators, NCEs and all. I have also worked in Perigo, which is a generic company. तो जैसे कॉपी टू कॉपी बोलते हैं ना, जेनेरिक में क्या करना है, कॉपी भी मुश्किल हो, कॉपिंग इज़ नॉट ईजी बाय द वे. सो आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट अपने एग्जाम की कॉपी, बट इट इज़ एक्चुअली लिटरली कॉपिंग अ ड्रग is not far from easy. Okay, then QBD a little bit I will touch. I am not here to teach QBD because you all know it, but why it is important I will just talk about it. And then I will talk about OTC and nutraceutical. We always talk about, you know, cancer and rare diseases and all, जो भी बात करते हैं, and we try to do something for that, which is really good, but there is so much you can do. Innovation in OTC markets, consumer को FMCG is slightly different. FMCG means it, even detergents and all वो आते हैं, but there is a thin line. But we should, OTC में काफ़ी कुछ कर सकते हैं हम. We can just do lot of innovation in a very easy way, and you know you can just apply your creativity. तो थोड़ा मैं और थोड़ा newspaper clippings मैंने आज और कल में पढ़े थे, वो मैंने डाल दिए हैं. The reason I have put that is I encourage you to read the newspapers. बहुत कुछ होता है, खाली मोबाइल में पढ़े नहीं रहना है हमको, न्यूज़पेपर. तो you'll get to know. Okay, so ये जो मैंने बताया अभी, spray drying, lipid, 3D, pills, laser, whatever it is, you know, we try to be different. Micro needles and all. Yeah, I want to be different. You know, कल भी differentiated formulations पूछे, you know, he was discussing. So we don't know what to do, right? Now this formulation, this slide is also talking about different formulations, you know what I showed in the last slide, but these are commercialized. These oral thin films, micro needle, inhalation, printed, 3D printing, it is actually commercialized, it is in the market. So what should I do then? You will say that once on one hand you are saying कि you be cost conscious, क्या करते हो technology, on the other hand we are saying ये commercialize हो चुके हैं, तो how do I, you know what should I do? So the first thing that you remember, I am not telling that don't do all this, you have to do, but जब भी आप therapy areas choose करोगे, जैसे cancer है, rare diseases है, you know, जेनेटिक मस्कुलोस्केलेटल और वॉट एवर काइंड ऑफ रेयर डिजीजेज है, उसके लिए आप यू कैन ऑलवेज डू सच काइंड ऑफ थिंग्स वेरी इजीली विदाउट बीइंग टू मच ऑफ बीइंग टू मच कॉस्ट कॉन्शियस. व्हाई? बिकॉज ये बात नहीं है कि कैंसर के पेशेंट को चाहे जितना चार्ज कर दो, यू नो, वी आर फार्मासिस्ट, वी आर ऑल्सो, वी हैव टू हैव दैट एम्पैथी ऑल्सो. तो वी कैन चार्ज, व्हाई कैन वी कैन चार्ज देम? Because they have NGOs and other things, they have assistance, we don't have to worry about that, so you can do whatever you want. But remember one thing, आपका खाली मैम ने बोला 10 पब्लिकेशन करने हैं और यू नो पेटेंट्स करने हैं, इसके लिए मैंने डिग्री मिल ली. नो, that is not what you should aim for. Aim that your thing should, formulation should reach the patient. Okay, now see the cost of this. Okay, नैनो पार्टिकल पर मंथ, आई एम टॉकिंग नाउ दिस, थोड़ा US का बता रही हूँ मैं. ये देखो 5000 लेज़र नहीं होता है, बट आई रीड आउट. नैनो पार्टिकल है ऑलमोस्ट 10,000 तक जाता है डॉलर्स पर मंथ कॉस्ट हो जाता है. लॉन्ग एक्टिंग इंजेक्टेबल तो थोड़ा कम है, $1000 समझो तक जाएगा. एंड लिपिड बेस्ड इज लेस, $16 to $400 पर वायल, थोड़ा कम हो जाएगा. सो यू शुड अंडरस्टैंड दैट दिस इज़ व्हाट इट, चूज अकॉर्डिंगली. अभी ये जो है, नाउ आई एम कमिंग टू इंडिया का. देखो, दीज आर द टॉप 10 2025 के. यू नो, दीज आर नॉट रेवेन्यू और वैल्यूएशन जो कल हमने सीखा ना, वैल्यूएशन बेस्ड या रेवेन्यू बेस्ड या वॉट एवर, इट इज़ नॉट बेस्ड ऑन दैट, बट इट इज़ बेस्ड ऑन इनोवेशन एंड कॉन्ट्रीब्यूशन टू हेल्थ केयर एंड देयर मार्केट प्रेजेंस.
तो सन है, सिप्ला है, टॉरेंट, मैनकाइंड, ऑल दीज. मैनकाइंड आई थिंक इज हियर ओनली नॉर्थ साइड में. कंज्यूमर उनका ओटीसी और क्रीम्स टॉपिकल्स में बहुत ज़्यादा वेरी इनोवेटिव प्रोडक्ट्स दे हैव. मैनी दीज आर इन अहमदाबाद, सम आर इन हैदराबाद, बहुत चलता है हैदराबाद में. So all these things are there. We are vaccines, see biologicals, though I have not touched here biologicals and vaccines. COVID में तो जो कल दिखा रहे थे ना, suddenly farm easy and all, how they went up. Why they went up? Revenue उनका COVID आ गया. They started in 2018, 2019, but for them luckily COVID आने के revenue suddenly shot up. Then it will go down exponential, right? See, this is now again, don't read, but this one, see, nanoparticles, cost of this particular this is some polyneuropathy kind of genetic disorder, $13,000 per vial, and itna $13,000 per vial लेना पड़ेगा patient को. So in such diseases, like if you are working on such kind of diseases, by all means use whatever you want, be very innovative. उसमें restriction नहीं है. Then this Risperdal also here $1,000. So all this ना मैंने ऐसे ही बस cell and gene therapy किसी का कम है, किसी का ज़्यादा है. This what I'm trying to convey is from this slide is you have to do some kind of research. जब भी आप करते हो ना, project लेते हो, look at what the market has, what is the price, and then whether you can compete with the price using the ingredients, and then only you start doing it. अभी mRNA जो Moderna vaccine जो है, you will see it is mRNA, but then dollars कितना है, just $140, which is less. उसकी cost क्यों कम है? Because government has given certain incentive. Emergency cases government does give certain leeway. तो ऐसे सब है. Liposomal pegylated liposomal doxo. Many of you, anybody working on liposomes here? Anybody liposomes काम कर रहा है कोई? Yeah? In fact, masters की जो है अभी first year की अच्छा, you have to give, हाँ. Yeah, so if at all you are working on liposomes, no problem, maybe such indications, therapeutic indications can work. Now this one, this was the first FDA approved nano drug, which cost was almost $2,000, you can say, per vial. Now this injection is for metastatic breast cancer. Okay, तो इसका क्या है, मतलब what was so special about it? All those chemo, whatever you get, all those side effects, it was not, it was a targeted drug delivery. So they could really charge that much. Baxter का है ये, Baxter का. You had to dilute it with saline and then take it. But afterwards ये तो Baxter तो चलो branded company है, they are innovator. Later generics आ जाते हैं. When generics come into play, तुम्हारी cost कम हो जाती है. So can now since you have learnt about patent ना Dr. Garg, so can anybody just copy it and answer me? अगर मैं चलो doxin ये है doxil, तो I want to copy that, can I copy? No, why? हाँ, patent is there. How many years patent का रहता है? 20 years. But there are ways where I can still produce this doxorubicin. I can still do, अगर 20 years इसको नहीं हुए हैं समझो, but I still want to copy, can I do it? You can, yeah, very good, you can. How? Why? Licensing, compulsory licensing you are talking about? या जो जैसे सिप्ला ने किया वैसे, that is one way, AIDS के लिए, right? Glaxo ये बरोस वेलकम के थे anti retrovirals, and सिप्ला they have given to African nations. Okay, so that is one thing. But para 4, para 1, 2, 3, 4 नहीं पढ़ा है ना पेटेंट? पढ़ा है नहीं? नहीं अभी ये इसमें वर्कशॉप में उन्होंने नहीं लिखा. Okay, so I will not go to patent, but I will say that para 4 there is a way you can do it. और ये जो अपने इंडियन ही companies, they are expert in that. Non-infringing patent, you have to work around the patent. Don't
You can develop such a product targeted वगैरह, but do not use the ingredients. Read the patent thoroughly. Do not use what they are talking about. अलग अलग यूज़ करके you can make the same drug and still come into market. That is called as para 4 filing. Okay, so we do that. Dr. Reddy's और ये भी जो बताया ना, they are expert in that. Number one expert in copying, yet not copying, you know. So that you should know how to work around the patent. It is not easy, but you can do it. Para 4. But they have to show the efficacy with the comparator product, and then they can Yeah, they go over the clinical studies. They just show bioequivalence. No. They can be even better. They can be even better than that. Yeah, but in some ways, yes, they can be equal also. But if they are better, yeah, then it will go in under NDA. You are right. So if you can show bioequivalence, but you use different ingredients. वो ingredient मत use करो जो इन्होंने किए हैं. Yes. हाँ. Claims per case, and if we can create something which is not claimed, then we can have a new product. And even if we don't file a patent for it, or do we need to file a patent for it? For that you can file a patent. You need to file a patent. And जैसे see they keep very broad. See patent people you may have be writing cellulose अगर use किया HPMC, they will write HPMC and blah 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 100 celluloses they will write and 100 different things. उसमें से भी आपको निकालना है कि क्या नहीं यूज़ किया है. ही तुम्हें होना पड़ेगा. हाँ. तभी कुछ निकाल पाओगे. हाँ. और जो भी even if you use something there is bound to be litigation होता ही है because these companies will challenge you even though you have used very different. That's why you have to have patent attorney. Some people do that course. IP का course भी अच्छा रहता है. If some person is very good in legal things and all, you can do that course and then they are very this, but you have to be very thorough. Legal language कैसे use करना है. अगर ऐसा है तो there are people like us formulation where you have to appear in court also because you have worked on a generic and you are challenging them, like this. So the point that I'm trying to make is you can do so many things. अगर expiry हुआ है patent तो our job is easy, copy. It's not so easy but you can do that. And अगर नहीं तो life is not easy. But even if it is off patent, still to reproduce becomes very difficult sometimes. Yeah. Because they disclose so many broad things that you don't know what actually they use. Yeah. So easier said than done, especially in complicated preparations. Many times you are like it takes another thing to reproduce. Oh, very difficult. क्योंकि inhalation जो just to tell my experience, Glaxo में हमने salbutamol inhaler introduce किया था way back, early career में बता रही हूँ. We were all very happy. We were about to launch, and तभी ये WTO नहीं था ये patent protection. India में it was not there. And Cipla came. I was in Glaxo very happily. Inhalation चलो मेरा अभी launch I had to go TechTransfer करने जाना है नासिक चलो. Stop there came this stop right there. Don't go. क्यों stop किया? Cipla came Asthalin inhaler. हमारा Ventolin inhaler था. Cipla came with Asthalin inhaler which was 100 the cost what we were going to charge in Glaxo India. Stop there. So we didn't have the patent protection. This is what it is. So they are very fast and Cipla का हमने बता रही हूँ मैं analytical team. It's very difficult inhalation वो जो cascade impactor रहता है lungs it is mimicking this. They have to do every stage इतना they have given limits USP if you see salbutamol. But the analytical team was trying to find out इसमें कुछ तो mistake मिलेगा तो चलो हम challenge करते हैं. कुछ नहीं मिला. Cipla was so good. Cipla really बहुत it was very challenging. I have been in GSK but Cipla has given a lot of pain as a pharma person. Okay, so ये schizophrenia के लिए है ये. This is costing 4,000 rupees Janssen. It's not pronounced as Janssen by the way, it's Janssen. So see what it contains. Very simple things. Very simple. Carmelo sodium citric acid buffers है और कुछ नहीं है इसमें. But it is schizophrenia के लिए so it is costing. You can put a high cost. ये इंडिया का ही cost अभी इंडिया का है 4,000 rupees. है ही नहीं कुछ में इसमें hardly cost क्या होगा खाली API का I don't know how much cost but otherwise nothing buffers है इसमें कुछ नहीं है. So there are successes and failures. These are like sildenafil. Viagra was they could really charge high at that time
and then of course there were cardiac arrest and all. Then Pfizer became जैसे unicorn तो startups का है, लेकिन Pfizer became a blockbuster drug. This was Viagra. Then imatinib again, this was for cancer. Then so these were successes. These were successes, but then if you see, these were some weight loss अच्छे से नहीं हुआ, या फिर Rofecoxib, this was for arthritis, but उसके side effects हो गए. So there will be successes and failures. Companies को ये करना पड़ता है. तो जैसे मैंने यही whatever I have said is premium pricing for premium disease states, all these chronic ailments and these kind of schizophrenia, psychotic you can have. But if you have me too drugs, generics तो बहुत होते हैं, me too बोलते हैं हम industry भी, you will have to have a simple excipients use करो, buffer वगैरह इधर उधर use करो, but have something unique. You know the full form of USP? हाँ, unique selling point ना? United States Pharmacopoeia नहीं बोलना है. USP is not, because we are talking today about marketing. Unique selling point आपका क्या है? I will show you examples, okay? So simple processes with unique outcomes, okay? So development is hard, it's not easy. Competition है, population क्या है, pricing regulations, ethics, patent restrictions, बहुत कुछ है. So we have to see so many things. Suddenly क्या होता है, NP price regulation जो कल बता रहे थे ना, NPPA अपना national pricing control आ जाता है. So government wants to, you know, be like everything, it should be affordable. अगर pricing control आ गया and we have a very high price, cost is very high, then how are we going to market? You know how the affordability loss में चली जाएगी company. So ये सब सोचना पड़ता है. That's why try to keep the formula low priced only. So what do I do? I mean इतना competition है तो मैं as a formulator मैं क्या करूँ क्या? Okay, so now this one I want to show you something. So ये हमारा step wise I'm showing you industry में क्या करते हैं, how we go about. Whenever we are told to develop a drug, I think in academia we try to, you know, see PubMed and all, literature survey पहले करते हैं ना. So we also do the literature survey, but before that we will see these things. I'll tell you one by one what we do. DMF पता है ना, MPharms को है, where in whose syllabus MPharms को होगा. Drug master files, in FDA it is there, US FDA, in Europe में भी होता है, but US का website if you go ना, it is easy. So we will look, first of all we have to see that the drug is DMF approved or not. Drug is DMF approved means काफ़ी सारे कंपनीज हैं. अभी जैसे ibuprofen को ले लो, शासन ड्रग्स, एंड देयर विल बी 100 कंपनीज हु आर मेकिंग ibuprofen, बट आर दे देयर इन USA? अगर US में करना है तो, यूरोप में करना है तो यू शुड सी यूरोप, इज इट देयर, दैट वी सी फर्स्ट. देन वी विल सी द एक्सीपिएंट एंड ऑल दैट, वेदर दैट इज ऑल्सो DMF अप्रूव्ड. कभी कभी एक्सीपिएंट वाले BSF, सो यू मस्ट बी गेटिंग फ्री सैम्पल्स ऑफ एक्सीपिएंट. समटाइम्स BSF या कोई देता होगा ना, आपको भेजता तो होगा, but they will sometimes give very new excipients which they have developed recently. वो लोग भी innovation ही करते ही है ना excipient वाले. So they give you new excipients, but the first thing that you should see is whether it is given in the list in FDA. FDA के database होता है, and I'll give afterwards the links also. I think it is there in this, if not I will give you. FDA, you have to see whether it is approved. If it is not approved, let's say they have given a new excipient and बहुत सक्सेसफुल हुआ तुम्हारा फॉर्मूला, कॉस्ट इफेक्टिव है, सब कुछ है, ओके, मैम ने बोला एकदम कॉस्ट कम करो, ये करो, एंड सब कॉस्ट इफेक्टिव है, एंड इफ इट इज़ नॉट देयर इन दैट लिस्ट, और इफ इट इज़ नॉट इन द IID, इनएक्टिव इंग्रेडिएंट डेटाबेस. पता है आपको इनएक्टिव इंग्रेडिएंट डेटाबेस? नहीं पता, डेंजरस. इफ इट इज़ नॉट देयर इन द इनएक्टिव इंग्रेडिएंट डेटाबेस, देन what will happen? Any idea, any guesses? And if you file a drug, let us say ठीक है, आप तो thesis में रख लोगे, if somebody wants to file the drug in
anywhere, USA, even don't even consider USA, मलेशिया है इधर, अगर वो नहीं है उसमें तो क्या हो जाएगा? एनी गेस? तुम्हारा ड्रग फॉर्मुलेशन कैंसिल, कैंसिल हो जाएगा, बराबर. वाई? But if we can generate toxicity data too. Yeah, that's what I'm coming to that. So मैम ने राइट बोला, so you will have to generate toxicity of that excipient. तो you have to talk to those, that is, it's a big job, because pre-clinical भी करो, clinical भी उनको करना पड़ता है. This normally this is the job of the excipient company. It is not your this, but if you are, yes, if your project is for the excipient company, you can always take, ma'am, projects from companies like BSF and Lubrizol and all, where they are making some novel excipient they have done, and pharmacology में जो भी है, they can take that project as a toxicity study and all. So if as a Sutix person, don't do, I would say better take a drug which is already in that. Okay, yeah, this is just an example. I have half an hour, I think, na? See, you see this, I'll show you. Oh my god, this is just an example of the database. अभी जैसे ये जेलाटिन है, कॉलीटैब, BSF का है ना ये. सो दिस इज अ ड्रग मास्टर फाइल. यू व्हेन यू ओपन दैट लिंक यू विल सी DMF का डेटा. सो इट इज़ फाइल्ड, BSF हैज़ फाइल्ड DMF, एंड जब भी DMF फाइल होता है तो वेरी लाइकली इट विल बी देयर इन द इनएक्टिव इंग्रेडिएंट डेटाबेस ऑल्सो. सो यू हैव टू चेक बोथ. ओके, नाउ आई हैव टेकन अ वेरी सिंपल एग्जाम्पल. अगर आपको डेवलप करना है मेट्रोनिडाजोल वजाइनल जेल, सो व्हाट विल यू डू इन एकेडमिक? क्या करोगे आप? सपोज आपको ऐसे प्रोजेक्ट दिया है तो व्हाट विल यू डू? लिटरेचर सर्वे, है ना? वी डू दैट, ऑफ कोर्स वी विल डू दैट, बट वी विल सी ऑल्सो द प्राइसिंग. सिंस वी आर टॉकिंग टूडे अबाउट द प्राइसिंग एंड कॉस्ट इफेक्टिवनेस, इफ यू सी दिस, इसका लेट्स सी दिस इज ऑलमोस्ट 100 रुपीज़. इंडिया का जो ऊपर वाला देखो JB केमिकल का है, एंड दिस वन इज 55 रुपीज़. ओके, सो यू सी द डिफरेंस. तो एवरीथिंग वर्क्स. सम पीपल आर ब्रांड कॉन्शियस, दे विल यूज़ दैट, अदर सम पीपल विल यूज़ दैट. यहाँ पे देखो US का कॉस्ट क्या है, $89. सी दैट? So India, I mean, very affordable, that way I will say at least. But let us imagine that you are developing for India, domestic, okay? So look at this. So you try to use simple excipients, simple excipients. But at the same time, if you want to be novel, कुछ तो unique चाहिए ना हमको. You can do something. Like हमने देखा ना अभी wax, lipid based systems and all, थोड़ा बहुत cheaper इसमें यूज़ कर सकते हो. ट्राई टू सी समथिंग, मे बी यू कैन डू समथिंग आइदर म्यूको एडेसिव या ऐसे करते हो ना, जैसे इट शुड नॉट गेट वॉश्ड ऑफ. समथिंग यूनिक अबाउट योर फॉर्मुलेशन यू कैन डेफिनेटली डू, बट नॉट यूजिंग एक्सपेंसिव एक्सपीरियंस. ओके, नाउ आइडियली आई वांटेड टू ओपन दिस, बट ठीक है. ऑरेंज बुक, जेनेरिक फॉर्मुलेशन डेवलप करना है आइडियली. यस यस, ऑरेंज बुक आपको पता है कि नहीं? ऑरेंज बुक, हु हैज सीन द ऑरेंज बुक? ओह, अरे तो तब तो मुश्किल है. ओके, ऑरेंज बुक का ऐप भी मिलता है. सी, इफ़ यू आर डेवलपिंग अ जेनेरिक ड्रग, कॉपी करना है, एक्सपर्ट हो कि नहीं हो, आई डू नॉट नो, बट यू विल हैव most likely. See, we have to in India, many people will get into generic companies. The first thing that we see is orange book. Okay, now orange book, उधर ही click कर जाए ना. So Google Play में भी you can always. Okay, this is a snapshot. अगर आप मेट्रो भी ऐसे मैंने क्लिक किया ना, आई जस्ट पुट दैट, यू विल सी दिस,
एंड अभी जैसे आप देखो यहाँ पर ये प्रिस्क्रिप्शन है इधर, ओके, सो यू विल गेट ऑल कॉम्बिनेशंस। अभी यहाँ पे कैप्सूल आया है, टैबलेट है, यू कैन जस्ट फिल्टर इट, आपको जेल चाहिए मिल जाएगा। नाउ यू विल सी हियर, ये देखो who is the company, which company it is also it will show. You understood that? ऑरेंज बुक में क्या देखना है, तो जेनेरिक अगर आपको कॉपी करना है तो यू हैव टू सी द ऑरेंज बुक फर्स्ट। वंस यू सी द ऑरेंज बुक, नाउ यू सी दिस इज ए बी, मतलब ये थेरेप्टिक इक्विवेलेंस दिखाता है। जस्ट नाउ यू आर सेइंग ना कि यू हैव टू बी इक्वल, तो ए बी ए कोड्स वो अलग बात है, आई विल नॉट गेट इन टू दैट, यू नो दैट शोज हाउ इक्वल यू आर। दिस वन, this is saying it is RLD. Okay, what is RLD? Reference listed drug. It is the brand, it is the first company, it is the branded company which has developed this product. Okay, others are equivalent. Okay, now अगर मुझे ये, if I open this, अभी मैंने वो ब्रांडेड वाले कंपनी का ओपन किया बिकॉज उनका पेटेंट होगा। नाउ आई हैव टू सी वेदर दैट पेटेंट इज एक्सपायर्ड, कि अभी तक है या नहीं है, वो मुझे देखना है। नाउ आई गॉट इट, दिस इस सी अप्रूवल डेट इज 2006, मीन्स 2026 तक इट इज गोइंग टू बी देयर, 20 years. ओके, सो हियर यू हैव टू ओपन दिस। तो अभी मे बी एम में आई हैव टू टॉक अबाउट ऑरेंज बुक, आई डोंट नो सिलेबस में होगा नहीं, तो ये मैं आई एम नॉट गोइंग इन टू दैट। सो लुक्स लाइक देयर इज समहाउ वो पेटेंट नहीं है, तो वाई इट इज़ नॉट देयर, समटाइम्स इट इज़ देयर, बट कुछ तो इनवैलिडेट किया होगा या कुछ तो होगा गड़बड़ उसमें। बट एनी वे यू हैव टू देन पेटेंट सर्च में तो आप एक्सपर्ट हो, यू गो टू दैट कंपनी एंड यू सी। सो नाउ आई विल नॉट गो इन टू ईच एंड एवरी लाइक दिस, बट लेट मी सी इफ हाँ, after that I will open this one. Okay, after that what we do is open this site DailyMed. DailyMed एक site है, उसमें Metrogyl, again you type Metrogyl. Once you type that you will get many branded companies के inactive ingredients मिल जाएंगे आपको, inactive all excipients you will get. So you try to use those excipients. See, if we want to get into market, हमको like in industry हमको कुछ नॉवेल नहीं करना है, हमको जस्ट मार्केट में एंटर करना है, तो वी विल जस्ट गो बाय द यू नो एक्सिपेंट्स, वी विल टेक एज इट इज़। ठीक है, आई विल नॉट, क्योंकि ये विद टाइम कंस्ट्रेंट ना, आई विल नॉट गो इनएक्टिव इंग्रेडिएंट डेटाबेस, आई थिंक दिस इज व्हाट इट इज। नहीं, ये और है, ओके। सो ये सब ओके, ठीक है, आई विल नॉट गो इनटू दिस। सो DailyMed ओपन करना है, उसके बाद ये DailyMed से मुझे मिला है, आई एम होल्डिंग द राइट, नाउ look at this, I got from DailyMed this information, I got the inactive ingredients, तो I can just I mean we have our basic knowledge कितना यूज़ करना है, एंड IID भी देखना पड़ता है, उसमें परसेंटेज दिया होता है। टॉपिकल जेल में FDA की साइट, गो बाय US FDA साइट इज़ वेरी वेरी गुड, यू कैन गेट वेरी इजी टू नेविगेट। यूरोपियन थोड़ा डिफिकल्ट होता है, USA में मिल जाएगा आपको। देन दिस आई सॉ फ्रॉम द पेटेंट, आई हैव टेकन दिस फ्रॉम दैट कंपनीज पेटेंट, आई हैव टेकन दिस, आई गॉट सम फॉर्मूले हियर, बस इसमें से कोई सा भी ले लो आप and just do it, make it. So I have assumed here there is no patent restriction because there was, we saw है ना in that नहीं था, but कैसा होता है कि we always give like formulator, इंडस्ट्री में आप क्या करोगे, फॉर्मुलेटर नॉर्मली वी सी द ऑल द पेटेंट्स एंड देन वी गिव इट टू अ पेटेंट अटॉर्नी, ही विल एक्चुअली सी, ही विल कंफर्म दैट यू आर राइट, वी आर नॉट एक्सपर्ट्स इन पेटेंट, ओके, सो ही विल सी ओके जो आपने किया है सही है गलत है, या ही विल गिव मोर एडवाइस कि आप ये नहीं करो, आप अगर करोगे कुछ बाय चांस मिस्टेक तो यू विल हैव टू गो इन कोर्ट, वो हो जाता है कभी कभी, विच इज़ ओके। सो दिस सी, ये दिस इज़ जस्ट एन एग्जाम्पल ऑफ कॉस्ट है ना, ये तो फिनिश प्रोडक्ट की कॉस्ट है, अलग अलग
डॉलर्स है, ये 2.7 वाली है ऐसे, एंड ये कॉस्ट ऑफ इंग्रेडिएंट्स है, एक्सीपेंट की कॉस्ट है ना, ये 350 600 ऐसे ही मैंने डाल दिए हैं जस्ट टू सी, सो दिस इज़ द वे वी डू इट, ओके। तो ये कॉस्ट देखो, ऑफ कोर्स कॉस्ट है, मतलब कार्बोपोल की कॉस्ट ज़्यादा है, बट यू हैव टू यूज़ हार्डली यू नो सम परसेंटेज इज़ वेरी लेस, सो यू कैलकुलेट हाउ मच what will be the cost of your 10 gram tube or whatever, you know, that Calculate cost per unit or cost per kg, and then you can say how many units would come out of it. So you can get a clear idea, because costing is going to be the understood. most important. Yeah. So suppose hydroxy ethyl cellulose and HPMC is giving you the same you know quality parameters, use the cheaper variety ऐसे. उसके बाद once I've identified percentage and all, just start your trials. Excipient compatibility studies करते ही हैं, and just start your trials and do some quick accelerated stability studies. ICH guidelines में है वो अलग है ही, दो तो करना ही है, but initially you can keep at 60 degrees and all, which you all do I think, so that is fine. And try to use standard equipment ना, high pressure homogenizer वगैरह नैनो करना है तो करते हैं, लेकिन सेल्फ असेंबली अगर आप कर सको, बिकॉज हाई प्रेशर सबके पास नहीं होता इंडस्ट्री में. हु विल बाय, पीपल विल लुक एट दैट HPH एंड विल से अरे आई विल नॉट बी एबल टू डू दैट, आई हैव टू गिव टू थर्ड पार्टी. Machinery which would be available with normal pharma industry. Yeah. That way, then you can scale it up. अगर contract manufacturing करवाना पड़ता है तुम्हें, maybe you have an innovative product, but you need to get it manufactured by some plant and then sell it yourself or through some other partners. हाँ. उस case में you have to look into all those. करेक्ट, एंड यू कैन ऑलवेज डू इट एंड आइडेंटिफाई करके रखना है, मतलब पार्टनर थर्ड पार्टी भी होता है हु हैज़ HPH, विच इज़ फाइन, यू कैन ऑलवेज सजेस्ट, ट्राई टू अवॉइड. Then MSDS, which many academic, I don't know about Punjab, but मुंबई में काफ़ी लोगों ने ना MSDS, there is one girl who actually cancer, she was working on carcinogenic and organ failure हुआ. Yeah, so just be careful you use this, see this excipient है ये तो hazardous IPA and all, see we use IPA and all religiously, आराम से use करते हो isopropyl alcohol and all, बट कैसे करना है, मतलब यू हैव टू सी एंड यू हैव टू वेयर सी इनहेल हो रहा है. एक तो क्या है, कॉलेज में भले हम कम यूज़ करते हैं, यू कैन इमेजिन आउटसाइड व्हेन यू हैव टू यूज़ टू मच. अभी हम सेलिन चुएबल बनाते थी, हम लोग थर्ड पार्टी में जाते थे. GSK वॉज नॉट डूइंग, वी वेंट टू अंधेरी, एक यूनिट था, उनके एग्जॉस्ट सिस्टम्स इतने पुअर थे, एंड प्लांट में गए, उधर क्लोरोफॉर्म ओल्ड प्रोसेस था, पता नहीं एज ओल्ड, क्लोरोफॉर्म ऑलमोस्ट फेंट होने को आए हम. दैट टाइम वी आर नॉट यूजिंग ऑल दिस टू मच, 3A, अभी लाइक 3M मास्क एंड एयर स्ट्रीम हेलमेट वो सब यूज़ करना पड़ता है. सी somebody हैज़ टू वर्क, हॉर्मोन्स होते हैं, साइटोटॉक्सिक्स, कैंसर ड्रग्स, somebody हैज़ टू वर्क, बट वेयर ऑल दैट, ये देखो रिसेंट जुलाई का न्यूज़ है, पढ़ा है कि नहीं, सिगाची एक्सीपेंट है, माइक्रो क्रिस्टलाइन सेल्यूलोज, क्या है इसमें, यू विल थिंक वो द सेफेस्ट थिंग, बट बिकॉज वॉल्यूम्स ज़्यादा थे ना, उनके टन्स में बना रहे हैं. ये देखो क्या हुआ, सम स्प्रे ड्राइंग यूनिट में प्रेशर बिल्डअप हो गया, डेथ्स. आई डोंट नो इफ यू हैव रेड, तो रीड, कीप न्यूज़पेपर भी थोड़ा पढ़ा करो. ओके, देन ICH 8, 9, 10, आई हैव 15 मिनट्स, अबाउट 15-20 मिनट्स ना, ठीक है, हो जाएगा. तो इफ़ यू डोंट डू QBD, सी क्वालिटी, ओके, क्वालिटी कंट्रोल वाला है, QA वाला है, हम तो R&D वाले हैं, हम ऐसे सोचना नहीं है. सी वी हैव टू बिल्ड अप राइट फ्रॉम द बिगनिंग, क्वालिटी, योर फॉर्मुलेशन हैज़ टू बी वेरी वेरी रोबस्ट. अभी ओके, आई विल गिव द एग्जांपल व्हेन आई कम टू दैट, आई विल गिव यू लाइव एग्जांपल. तो मैनी टाइम्स इधर उधर का थोड़ा इधर उधर, बियर एंड लैम्बर्ट्स लॉ, इधर उधर स्ट्रेट लाइन मार दी है, कौन देखता है. चलो, auditors are very smart, see they see R&D, जब भी नया product, when we are launching ANDA, when that USFDA audit which I faced, ANDA we had given simple था, ranitidine, it was some coolment flavor, ranitidine coolment flavor. ranitidine tablet में क्या है now, तो अभी nitrosamine का issue, about this was just before the nitrosamine issue, when we the US auditor came हमारे इधर अंबरनाथ में, and
he he said auditors nowadays what they do, you know na, they don't call the manager and all who has done the formulation, who has done the analysis, call those, बाकी सब लोग बाहर जाओ. तो ऑडिटर विल सिट इन द कॉन्फ्रेंस रूम विद द पर्सन, तुम्हारा जर्नल लेके आओ, ये लेके आओ, आंसर माई क्वेश्चंस. 2-3 घंटे वो अंदर थे. सो दे विल आस्क दैट पर्सन ओनली, दे डोंट वांट मैनेजर तो स्मार्टली कुछ कुछ बता देगा. सो दिस पर्सन वॉज हार्डली 2 year old एनालिटिकल, बट हिज, आई टेल यू, आई हैव टू गिव रियली लॉट ऑफ क्रेडिट टू हिम. USFD हमारी जो ऑडिट हुई उसने इतने अच्छे से, वेरी गुड हैंड राइटिंग, लैब में जो भी अगर भी कुछ गलती हो जाती है, सी वी डू मेक मिस्टेक्स, कभी गिर गया, लाइक डाइल्यूशन, एनालिटिकल में सपोज डाइल्यूशन किया है, वॉल्यूमेट्रिक क्लास, गिर गया कुछ, यू नो हो जाता है. बट सो यू हैव टू रिपीट द एक्सपेरिमेंट, एवरीथिंग मस्ट बी डॉक्यूमेंटेड, every single thing documented. Okay, it had fallen and so have repeated. OS generate करना पड़ता है, वो सब क्वालिटी का चीज़ें हैं, but you have to document it. I'm not going in deeply into that. Every single document he was having. Okay, so एकदम से उसने फिर then he went to the lab and pH meter, HPLC पे बैठते हैं वो लोग. एनालिटिकल का तो बहुत अच्छे से करते हैं, फॉर्मुलेशन का भी ऑफ कोर्स, बट देन दे सेंड स्पेशलाइज पीपल कि फॉर फॉर्मुलेटर जो 2 बंदे आएंगे, वन विल यू नो गो डीप इनटू फॉर्मुलेशन लैब एंड अदर वन विल गो इनटू एनालिटिकल लैब. सो दे आर वेरी स्मार्ट, पिकअप करते हैं. दे आर ओनली ऑल्सो सीइंग द बायोमेट्रिक, यू नो अटेंडेंस नाउडेज. कभी ये कर दिया, चलो स्टेबिलिटी एनालिसिस इधर का उधर, उधर का इधर, नहीं चलता है, ये सब नहीं चलता है. दे विल सी इवन वेदर यू आर प्रेजेंट ऑन दैट योर बायोमेट्रिक. नाउडेज दे नो. इंडियंस अनफॉर्चुनेटली वी हैव डेवलप्ड व्हाट अ रेपुटेशन वी हैव, यू नो, सब चीटिंग 2 नंबर के काम करने में एक्सपर्ट एंड, हाँ चलता है एटीट्यूड, जुगाड़ है ना. तो ये नहीं चलेगा. सो अभी ट्रम्प, आई मीन आई डोंट वांट टू गेट इनटू दैट. Yeah. Integrity is very important. Yeah. You have to own it and repeat it. The only thing is repeat करना पड़ जाएगा ना, तो क्या फर्क पड़ता है? In fact, they ask, you know, if there are no mistakes, na, if there are no mistakes, no out of specification, everything is ekdam perfect, then they begin to doubt you. See, we are human beings, na, we are all humans, we are going to make mistakes, it's okay, it is fine to make a mistake, document it. You got it? Own it and document it. Yeah. And in writing, when it is not documented, it is a, do you know this sentence? It is a rumor. खाली वर्बल नहीं चलेगा, मेरा मिस्टेक हो गया नहीं, राइट इट डाउन. ओके, या. तो वी पास द ऑडिट. नाउ ही सेइंग नाउ लेट्स फिक्स एवरीथिंग दैट वी डिडंट टेल द ऑडिटर. छुप छुप के इधर उधर से उसको निकाल के पास करवा दिया ना ऑडिट. थीसिस में भी गोलमाल करके फंसाया रेफरी को. ऐसे नहीं चलेगा, मैम को भी पता नहीं, कुछ इधर से उधर किया, ऐसा नहीं चलता है. ओके, सो राइट फ्रॉम द बिगिनिंग, फ्रॉम योर फाउंडेशन, you are young. If it gets developed like that, then it will be very bad. So it will affect your company also, and you may not be knowing. अगर आप पकड़े गए USFDA audit में, अगर आपको even smallest thing you have not done right and you are caught in that FDA, your name appears in, there is one this FDA में एक site है. So over there your name will come, debarment list बोलते हैं उसको, debarment list. If your name, many Indian, if you open that ना, many Indian people's name, foreigners भी है, many Indian names are there. If your name comes in debarment, सोचो आपका professional career खत्म. So whenever we submit an NDA, we have to the manager or the director has to give in writing that none of the people who have done this, who were involved in my ANDA, are there, appear in the debarment list. देना पड़ता है. हाँ, so sorry, this CPP CQA पढ़ा होगा ना आपने, so ये पता है, चाहे, so I don't need to, you know, tell. Okay, so now here you know all that quality, so I'm not here to teach QBD and all that, but I'm just going to give you some example of OFAT. तो पता है ना, OFAT and OFAT पता है, what is
1 फैक्टर एट अ टाइम मीन्स अगर मेट्रो जेल बनाना है ये वजाइनल जेल, तो लेट अस से यू आर चेंजिंग योर जेलिंग एजेंट का कॉन्सेंट्रेशन, ओके CMC डाल दिया, एक बैच में 1%, 2%, 3% डाला, सो यू आर चेंज 1 फैक्टर एट अ टाइम. इफ यू आर बट नॉर्मली वी ट्राई टू डू DOE ट्रायल्स वेयर वी आर चेंजिंग जेलिंग एजेंट ऑल्सो, प्रोसेसिंग टाइम भी चेंज करो, और भी कुछ प्रोपिलीन ग्लाइकॉल भी चेंज किया, मल्टीपल थिंग्स वी आर चेंजिंग एट वन टाइम. वी नॉर्मली ट्राई टू डू दैट, बट विथ इनिशियली यू कैन ऑलवेज डू OFAT ट्रायल्स अर्ली स्टेज में, ठीक है. नाउ हियर लेट मी सी व्हाट आई हैव टू से. दिस इज जस्ट एन एग्जांपल. QTPP और CQA में क्या फ़र्क है? अगर आप देखो तो ऑलमोस्ट सेम ही है. इधर जेल में 1% है, ऐसे बराबर आना चाहिए, pH इतना है. सो इसमें और इसमें एनीबडी कैन टेल व्हाट इज द मेन डिफरेंस. दिस इज क्रिटिकल क्वालिटी attributes, this one, and this is quality target product profile. Just QTPP और CQA में डिफरेंस क्या है? लार्ज डिफरेंस मतलब बताओ, ऐसे कुछ नहीं, थोड़ा इधर उधर चलेगा. यू कैन रीड इट एंड सी. इधर भी विस्कोसिटी है, उधर भी विस्कोसिटी है, ऐसे क्या है? व्हाट इज सो डिफरेंट? हाँ, हाँ, या सो स्लाइटली, सो आई टेल यू आर ऑलमोस्ट देयर. बट ये है ना, दिस यू कैन से CQA जो है ऑलमोस्ट यू कैन से USP फॉलो करो, फार्माकोपियल लिमिट्स जो है वो होना ही है, स्पेसिफिकेशंस यू हैव टू मीट. एंड दिस इज मोर यू नो, इवन मार्केटिंग पीपल कैन टेल कि बाबा मुझे 50 ग्राम की ट्यूब चाहिए, इवन पैकिंग, मुझे इट शुड नॉट लीक, यू नो. They are not scientific people. They'll say that okay, vaginal gel hai, but it should not be leaking, you know, all those things. It should be neutral, it should not be irritating, so you know that pH should be, you know, neutral. So this is a more of a broad, okay. And CQA will be more like scientific कि हमको ये मीट करना ही है. पेशेंट कंफर्ट है ना, ऑस्मोलैरिटी, ये बोलेगा पेशेंट कंफर्ट चाहिए तो विल से इट शुड बी pH एंड ऑस्मोलैरिटी वट एवर. CMA क्रिटिकल मटेरियल एट्रीब्यूट्स जो है, जेलिंग एजेंट, प्रिजर्वेटिव, ओके. सी मटेरियल्स, नाउ वी नो दैट वी विल सी IID लिस्ट, टॉक्सिक तो नहीं है, नॉवेल नहीं है, प्लस वी विल सी स्पेसिफिकेशंस, इट शुड मीट फार्माकोपियल स्पेसिफिकेशंस. उसके अलावा और कुछ चाहिए तो करना पड़ता है, लाइक पार्टिकल साइज. समटाइम्स यू नीड द मटेरियल टू बी स्मॉल पार्टिकल्स. इनहेलेशंस के लिए लंग में अटक जाएगा, कैन यू यूज़ सैल्ब्यूटामॉल टैबलेट के लिए यूज़ करते हैं, कैन यू यूज़ हियर, यू कांट यूज़. सो यू हैव टू हैव अ स्मॉल पार्ट. नहीं तो ऊपर डायरेक्ट अस्थमा, पहले ही अस्थमा है, डायरेक्ट ऊपर भेज दोगे पेशेंट को ना, तो यू हैव टू हैव दैट. येट योर CMA शुड नॉट बी सो नैरो कि मिले ही ना. हमारे केस में एक एग्जांपल हुआ है ऐसे, जो जस्ट बी कॉन्शियस ऑफ टाइम, सिंपल सा सस्टेन्ड रिलीज टैबलेट था एक, guaifenesin. I can tell you now because it's done. We used to buy guaifenesin of a certain particle size, 8 hours release था. तो टिपिकल अपना जो भी HPMC एंड ऑल, ऐसे कुछ ग्रेट नहीं था फॉर्मूला, टिपिकल सस्टेन्ड रिलीज टैबलेट था. बट दैट guaifenesin जो है उसका पार्टिकल साइज इतना नैरो था, लेट्स से 50 माइक्रॉन्स टू 70 माइक्रॉन ही चाहिए. नाउ दैट guaifenesin granules India used to supply us, they still supply. 50 to 70 उनको नहीं जमता ही नहीं है, बिकॉज दे आर मेकिंग इन बल्क टन्स, दे हैव टू सप्लाई नॉट जस्ट टू अस बट टू सो मेनी कंपनीज. 50 to 70 फिर कितना रिजेक्ट करेंगे वो लोग, तो वो नहीं, थोड़ा इधर उधर हुआ एंड बैचेस यूज टू गेट रिजेक्टेड. देन उधर क्वालिटी कंट्रोल बोलेगा 75 हो गया तो मैं रिजेक्ट कर दूंगा, 71 भी होगा तो ही विल रिजेक्ट, नहीं तो उसका आउट ऑफ स्पेसिफिकेशन हो गया ना. सो दे वे नॉट, कितना रिजेक्ट करें, तो वॉल्यूम्स आर अफेक्टिंग. मार्केट को तो चाहिए, वो प्रोडक्ट नहीं बना सकते हैं बिकॉज यू आर नॉट एबल टू. सो सप्लाई इशूज ऑल्सो यू हैव टू सी. यू हैव टू डिज़ाइन अ रोबस्ट प्रोडक्ट. इतना डिज़ाइन विंडो ये मत रखना ऑफ योर CMAs. डेवलप अ फॉर्मुलेशन ने तो, नहीं तो हमने थोड़ा भी इधर उधर से किया तो इट यूज टू फेल. 8 आवर्स नहीं, 2 घंटे में रिलीज हो जाएगा. सो यू मेक अ फॉर्मूला वेर योर ओके पार्टिकल साइज समथिंग विल बी देयर, स्पेशली जो चाहिए तुमको,
डोंट मेक द डिज़ाइन विंडो सो नैरो, नहीं तो तुम्हारा सप्लाई भी अफेक्ट होता है. आई एम टेलिंग यू दिस थिंग्स बियॉन्ड टेक्निकल, ओके, व्हाट यू हैव टू सी राइट इन द बिगनिंग, नहीं तो तुम्हारा गया, इट विल नॉट वर्क देयर. ये होता है, ये ना अभी ये तो इंजीनियरिंग है दिखता है, लेकिन पीछे पड़े रहते हैं R&D वालों के कि कभी प्रोडक्ट तुम्हारा लॉन्च हो जाए, यू नो, एंड वी आर लाइक प्रेशर होता है बहुत. ओके, सो इफ यू आर नॉट रोबस्ट, उधर टैबलेट मशीन के वी हैव टू लिसन टू लिटरली गाली. इधर JB में गुजरात में प्लांट था हमारा US में गाली नहीं देंगे वो लोग, बट देन पीछे से यू नो इंडियन क्या करते हैं, ये दे आर नॉट डेवलपिंग, ये चलता नहीं है टैबलेट मशीन में स्टिक हो गया हमारा वो प्रोजेक्ट, क्या डेवलप किया है, R&D को गाली पड़ती है, यू नो. सो यू हैव टू बी वेरी, दिस इज़ प्रैक्टिकल, आई एम टेलिंग यू एग्जाम्पल. ये होता है ऐसे, क्या डेवलप करके रखा है इसने, मशीन अटक गया, टूट गया टैबलेट प्रेस. अगर नॉवेल, नाउ आई स्पोक अबाउट नॉवेल ड्रग एंड फिनिश ब्रांडेड ड्रग में क्या करना है. अगर टोटली नया ड्रग है एंड इट्स नॉट देयर in the orange book, obviously you are a branded company, so what you will do, again you look in the orange book, it's okay, look for similar products. So agar metronidazole nahi hai, some other zole naya hai, so you will look at metronidazole or nidazole and you know those kind of products, similar products you can look and see the ingredients and you can start formulating similarly. agar tumhara brand khud ka hai, now you have the you know flexibility, you can use so many different things, okay, but still be cost conscious. Why? Because copy करने वाले उड़ा देंगे तुमको सीधे. So you be you are a branded company, we are allowed to charge high. Why innovators, why we are allowed to give so much high costing? You saw na doxorubicin, why are we allowed, क्यों ऐसे बोलो, हाँ, any say it's okay to be wrong also. Sorry, हाँ, absolutely. So branded जो, if you are the first, then we have to do clinical trials, you have to put so much and so many failures, you have undergone so many failures. Clinical trials are very very expensive. Bioequivalence trials तो हो जाते हैं, but clinical trials are so expensive. So innovator को कुछ तो मिलना चाहिए. अगर innovator is not allowed to exclusivity भी मिलती है, you have seen that. Why? Because थोड़ा तो वसूल होना चाहिए ना पैसा, नहीं तो otherwise people will stop inventing new things. Okay? So otherwise you follow the same thing, same and similar products को देख के you can start, and then you just start your feasibility trials, do the stability in different packs. अलग अलग पैक में हम डालते होंगे डिफरेंट पैक्स, बिकॉज कभी कभी मार्केटिंग वाले सडनली बोलेंगे ये पैक बनाओ, सडनली बोलते हैं लैमी ट्यूब करो, फिर एल्यूमिनियम ट्यूब में करो, फिर लैमी ट्यूब दो, फिर से स्टार्ट नहीं करना है. वी आर नॉट हियर टू लूज टाइम. 10 पैक में ही पहले से ही डाल दो, कोई बोले ना बोले चाहे डाल दो. ऐसे लिक्विड्स का भी हमको ऑस्टो कैल्शियम सिरप, आज ऑरेंज फ्लेवर बनाओ, कल स्ट्रॉबेरी बनाओ, कल ये, तो हम क्या करते थे बल्क में बना के रखो. मार्केटिंग वाला कल फोन आया, अभी ये बनाओ ऑस्टो कैल्शियम टैबलेट, कच्चा ये आम का बनाओ प्रेग्नेंट वेमेन के लिए, दे नहीं, कुछ भी जो नया बंदा आ गया बोलेगा ये आज फ्लेवर बनाओ. इट्स नॉट ईजी, वी हैव टू मेक एवरीथिंग. सो थोड़ा शॉर्टकट करना पड़ता है, शॉर्टकट बट इन द राइट वे, ऐसा शॉर्टकट मत करो. ओके, सो स्टेबिलिटी स्टडीज, डिफरेंट पैक्स पहले से ही डाल दो, जो पैक चाहिए ले लो भैया, ऐसे यू हैव टू बी रेडी. ओके, सो फंडिंग आपको किस में मिलेगा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, यू नो दैट बेटर देन मी, राइट. फंडिंग ये सब केसेस में, ये डिजीज स्टेट्स है, डायबिटीज़ एंड मेंटल हेल्थ, वायरल इन्फेक्शंस, आपको फंडिंग ज़्यादा मिल जाता है. फाइटोकेमिकल्स, सो मेनी ऑफ यू आर वर्किंग ऑन हर्बल्स ना, तो विच इज़ अ गुड थिंग. सो वी आर एनकरेजिंग यूज़ ऑफ नेचुरल मेडिसिन. TRL लेवल्स भी आपने जो पढ़े हैं, सो अगर आपका TRL 4 तक हुआ है, टेक्नोलॉजी लैब तक हो गई है, आई डोंट नो, स्केल अप करना होता है 1/10 ऑफ द बैच. स्केल अप पायलट बैच का मतलब ICH के हिसाब से 1/10 ऑफ द कमर्शियल बैच. अगर आपका कमर्शियल बैच हो, अभी हमारा ऑस्टो कैल्शियम सिरप का बैच होता था 30,000 लीटर्स, 30,000 लीटर्स बैच लिक्विड का, यहाँ से 3rd फ्लोर से लेके वो टैंक जो थी ना, इफ़ दिस वाज द 3rd फ्लोर, इफ़ यू नो
चक्कर आ जाती है ऐसा. आई वॉज वर्ली में था व्हेन आई जॉइन ना, लाइक सो आई यूज्ड टू गो ट्रांसफर टू वर्ली. बाद में वो बंद हो गया, वर्ली एक्सपेंसिव ना, नाउ दे ओनली हैव कॉर्पोरेट ऑफिस. तो नासिक में देन चक्कर आ जाती है. 1 टन का बैचेस बैठनो नासिक में. सो 1/10 ऑफ द बैच. तो अगर आपका बैच 1 टन का हो तो यू हैव टू डू 1/10 ऑफ द बैच इज कॉल्ड एज पायलट, एक्सेप्टेड एज पायलट. अगर आपने पायलट किया है, नहीं किया है तो TRL आई थिंक 5 और 6 में जाएगा पायलट. ये क्या है तो मतलब टर्मिनोलॉजी इन इंडस्ट्री स्लाइटली डिफरेंट. पायलट को हम 5 किलो इज अवर लैब बैच. Pilot batch, like in our Ambarnath we had 50 kg, but technically that is not a pilot batch. It should be 1/10. 50 kg is only if you are making 500 kg. Correct. Yeah. Commercial batches. हाँ ऐसे. So 1/10 of the batch is pilot. Okay. मैम कुछ ऐसी टेक्निकल बातें बता रही हैं जो हमको नहीं पता है ना, so just Yeah. take note of those things. Because I am talking नहीं तो डोजियर में जाएगा ही नहीं अपना, batch will not go there. This is just examples of OTC products where I told you ना, you can, अभी क्या हो गया after COVID, especially exponential change in the needs of all of us, all the people, generation X, Y, Z, whatever it is. Everybody is now wants to take care of themselves, immunity booster, yeah, we have become more conscious of wellness in general, everybody. So nutraceuticals is another. OTC products are also drugs only, so you have to go through all that licensing and all. But if you go for nutraceuticals and all, wellness products, then you can have FSSI license. Okay, so that is easier. हाँ तो ये तो आई विल नॉट गो थ्रू ऑल दैट, बट अफोर्डेबिलिटी, ऑल यू हैव टू सी इज अफोर्डेबिलिटी. रूरल में जाते हैं, इन नोवाटिस वी हैड वन मार्केटिंग सेगमेंट ओनली फॉर रूरल where they had small packs वगैरह. now rural are also becoming more experimental. they know digital health, mobile वगैरह सब जगह आ गया ना, तो छोटे packs हैं, you can reach to the customer. दाबर तुलसी, these are some 2020 के बाद दाबर तुलसी, आयुर्वेदिक बेबी वॉशेस. जॉनसन had come into trouble, if you know जॉनसन बेबी पाउडर है ना, टैल के हिसाब से, तो स्टार्च नाउ दे आर यूजिंग, बट नाउ दैट्स व्हाई दे एंटर्ड द मार्केट क्विकली with different. these are all phytochemicals, effervescent tablets, weight loss tablets, moringa, all these are all, see these packs, you see these packs, पर्स में रखो, निकल जाओ, these are all some different Ayurveda and natural remedies, fast up and all. And this one I like the best actually, recent Digene on the go. It's a stick pack, अभी लॉन्च हुआ है, आई थिंक 2 महीने पहले. ये जो ऊपर देख रहे हो, टेयर एंड सिप. डाइजीन तो अभी एसिडिटी हो गई, आप ट्रैवल कर रहे हो तो यू कैन नॉट कैरी दैट बॉटल ना, तो दीज आर कॉल्ड एज ऑन द गो पैक्स. और इसमें क्या है, आई थॉट इट वॉज इनो जैसे या कुछ नहीं, इट इज़ ओनली डाइजीन लिक्विड, बस पैक अलग है. पैकिंग कर दिया उसको बस. देन दीज आर चूईज एंड गमीज, वेरी पॉपुलर इन द US. गमीज का बहुत चलता है अभी, विटामिन नाइस एंड पॉकेट में रख लो, खाओ अच्छे से. सो विटामिन एंड यू कैन make all these gummies with phytochemicals, and still you would get some funding and all उसके हिसाब से. This one also I liked, Rally spray, because it is of course it is haldi and bandage spray. I don't know if you have seen bandage spray, recently advertisement आती है टीवी में. तो अगर आप स्पोर्ट्स इंजुरी, दे हैव शोन लाइक एडवर्टाइजमेंट, स्पोर्ट्स इंजुरी हुई, आपको खरोच आ गई ना, तो आप स्प्रे करो म्यूको एडेसिव, एज सिंपल एज दैट. यू डोंट हैव टू पुट बैंडेड, या so they say you no need of band-aid and all, आप स्प्रे करो बस सील हो जाएगा. मस्ट बी देयर, आई मीन आई एम नॉट गॉन इनटू दैट, बट इट इज़ ईजी फॉर यू. तो मैम कुछ भी नहीं है. तो ऐसे है. तो थिंक अबाउट ऑल दिस इनोवेशंस एंड यंग जनरेशन स्पोर्ट्स एंड ऑल दैट. दिस इज ऑल्सो सम, दिस चूइंग मैंने दिखाया ना, वो जो कैनव्यू मतलब J&J का OTC. अभी ORS जो, सी ORS अगेन फॉर रूरल एंड अंडर प्रिविलेज पीपल, नाउ फंडिंग मिल जाता है. ORS का सैशेट्स आते हैं ना अपने, ORS डायरिया हो जाता है बच्चों को, तो इंस्टेड ऑफ दैट नाउ दे आर प्रमोटिंग कि रेडी टू यूज सम हाइड्रा एक्टिव टेक्नोलॉजी. आई एम नॉट गॉन इनटू दैट, बट है ना. हाँ
इतना कुछ नहीं होगा, you know, it will be just osmotic something, but the way they advertise, you know, that is marketing. So, Surprisingly, they show that this girl or this group of teenagers, they are going to a dance party or something, and you feel dehydrated and you okay. can just have this hydrate. This हाँ तरह हाँ, की ads आती हैं उनकी. ओके, आई एम नॉट सी दैट. सो इलेक्ट्रो रश फ्रूटी जैसे पैक है, बस पी लो. मैराथन वगैरह दौड़ते हो, बस पी लो. नो नीड पानी वगैरह कहाँ से मिलेगा, है ना. तो ऑल दीज थिंग्स आर यू नो दोज थिंग्स. हेल्दी एजिंग लॉन्जिविटी बन जेरियाट्रिक पेशेंट्स के लिए भी वेलनेस है. एंड दिस इज जस्ट लास्ट 2 स्लाइड्स नाउ. दिस इज जस्ट अबाउट रूरल इन प्री. अभी दिस इज 2 September न्यूज़पेपर अभी मैं पढ़ रही थी, तो चलो मैम, आई हैड दिस इन माइंड. सो रीड द न्यूज़पेपर नाउ. सी इसमें लिखा है कि अभी अफोर्डेबल नाउ एफएमसीजी में तो रूरल लोग बहुत ले रहे हैं. दे आर more conscious and they know now, more well informed. Okay, so they have premium brands, छोटे छोटे टूथपेस्ट, जूसेस, फ्रेशनर्स, माउथ फ्रेशनर्स, टूथपेस्ट छोटे पैक्स में आप दे सकते हो उनको. ओके, एंड लाइक बबूल एंड ऑल आया था ना, बबूल. सो बी लाइक, अगर वो लोग दातून से करते हैं, यूज दोज इंग्रेडिएंट्स लाइक दैट. एंड दिस वन, ये तो मुझे बहुत, मैम यू शुड इनवाइट दिस पर्सन. आई लाइक दिस वाज जस्ट 1 day बिफोर इन द न्यूज़पेपर आई सॉ. ये है ना फ्लॉस, डेंटल फ्लॉस. ओके, डेंटल फ्लॉस के ऊपर उसने वैक्सीन दे हैव डन. दिस इज डॉक्टर हरविंदर गिल, ही इज इन नॉर्थ कैरोलिना. ओके, आई डोंट नो एलुमनाई ऑफ पंजाब है कि, मुझे तो नहीं पता है, आई हैव नॉट सीन हिज, बट ही हैज़ डेवलप्ड this floss where he has embedded it with some vaccine, flu virus. And this Rohan Ingrole, I think he was the guide and he's the student, and he has seen mice को floss किया उन्होंने दोनों मिलके with great difficulty ऐसे, but this is very successful. So use your imagination. floss के ऊपर कौन बोलता है? See, non injectable, if you can avoid insulin जैसे nasal spray है, you know, all these things. Non-invasive therapies, do try non-invasive therapies. Injectable जहाँ जहाँ है, अगर आप उसको without any कर सकते हो, do it. Okay, so all this, he should be your next okay person. बस और कुछ नहीं है. Just reach to the end user. Okay, and look at regulatory narcotics drugs है, जैसे restrictions होते हैं, you can do it. Narcotics तो people need it, morphine and all, it is extremely good for cancer patients who are in extreme pain. They need it, everybody needs it. You have to work on it, but they follow the regulations. Okay, that's about it. I think all I say is reach the end user with the proper pricing. Okay, that's about ends my talk. And then if you have anything, Ma'am is here with us today and tomorrow. So if you have any specific ideas, any specific products in mind, so with her experience, I think it will be very useful. And for the masters, she's here till Tuesday for ULP Salmanus. So she'll be here till Tuesday with us. So anyone, if they want to have any discussions with her, you're most welcome. And thank you so much. We have the small certificate for you. I'm sure listening to her, each one of us might have got some ideas on the things we've been working on. So, and बहुत कुछ ऐसा जो हम नहीं करते हैं, वो भी पता लगा. So I think while she is here, each one of you can see and discuss with her, and I'm sure she won't mind even if you email her or anything. Thank you. So we break for a quick tea. Can we get back by 11:10? Can we meet? We have to. So we have our next speaker already with us. So we would start at 11:10. So we have chai and I think samosa for you all.
जो आपने कल बोलने के लगा था तैयार करा दो वो चाय ले लो यार करा देंगे वो भी लेंगे behind the scenes literally लेवल पे issues आते हैं काम करके पता प्रोडक्शन में what book is that अंदर दे देंगे चांस अंदर मैं कहती ये भी चलेगा चलेगा ये If you allow, you are asking me कोई issue नहीं है Thank you so much. Brenda? वॉशरूम वॉशरूम खाली नीचे 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 जाओगे ना Lots of students today. Lots of otherwise we have around 70 registrations there, but last much but अभी in fact it was only because we got some masters studies outside for our highly on the research. because she's an adjunct faculty, so I wanted the she could actually instigate them to interact. हम टेस्टी है सवेरे समोसा खा के मुट्ठी सारा दिन चाहिए समोसा ला के देते इसको चलिए नहीं मिक्स नहीं है मेरे टैबलेट के नाम लोग भी साइन करा साथ साथ करके आ रहे उसकी भी हेल्प करना ना उत्तर कहाँ है अच्छा ये ऑर्डर प्लेस कर रहे हैं ऑर्डर प्लेस कर रहे हैं खाली मतलब
साइन दोबारा करूँ क्या? टेढ़े मेढ़े हो गए। मेरे को हैगा ना वो वाला, मेरे को लग गया सी मेरे पास में होएगा। हाँ जी दिया अभी मेरे हाथ में था, किसी ने हाँ, कल मैंने दे दिया था तेरा को। मेरे पास नहीं है, छोड़ के रखो। कर दिया मैंने आपके ना। वही है ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਮ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਕਦੋਂ ਪਹੁੰਚਣਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਮੇਲ ਕਰੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭੇਜਿਆ ਪਹੁੰਚ मुझे मेल नहीं मिली कल, आपको व्हाट्सएप किया नहीं, उन्होंने बस इतना ही बताया, मुझे डिटेल्स उन्होंने भी नहीं दी, तो मैं कॉल कर ली तेरे को है नंबर उनका कितने भी भेज देंगे ना तो हम अपने फंड क्रेडिट IRCTC से कोई नहीं कहते मैं ले गई अप्रूवल आउट ऑफ इसमें ITR ना मुझे फोटो भेज दो, क्या चाहिए इसको सेंड करना वो बाकी ठीक है ना डॉक्टर वंदना वाली मेल अब इस पे कराना और फॉरनून पे बस आफ्टरनून में नहीं कोई करेगा हर लेक्चर में कर रहे हैं 2 लेक्चर है ना दूसरा में करा देंगे कर दे कर उनसे कराने सारे बाहर
with Clarity Medical Private Limited for 3 years as a marketing executive, and further to that he was at IIT Delhi as a technical associate with Bot Lab Dynamics, and he has also worked with DRDO DPAS for some time. So he will talk to us about valuation and pricing strategies for our technology. So this is something we've been, struggling with, that how to, price your technology. So he will tell us about that. Sir, I invite you to say a few words before we start. Very good morning, all of you. Over 50, 60 years back, I was also a young person like you people. So I'm a product of this university. I'm a microbiologist by profession. And incidentally, like when they were mentioning about Dr. Girish Sahni, I mean, I don't have anything to tell about myself, so I'll speak more about Dr. Girish Sahni. आपने CSIR की labs तो सुनी है ना बेटे, right? उनका एक director होता है. There are 40 labs which are set up by the government of India, right? So इन सब का जो एक head होता है उसे कहते हैं director general, right? So Girish Sahni was lucky enough, or he deserved also, to become the director general of CSIR. और उनके ऊपर सिर्फ प्राइम मिनिस्टर होता है. He reports only to prime minister. So वो पोजीशन है बेटा. सारे हिंदुस्तान की जो साइंस है, एक्चुअल साइंस. सो गिरीश साहनी को मैं इसलिए कह रहा हूँ कि वी वर क्लास फेलोज. We did BSc and MSc microbiology together. Then like चला गया वो बेंगलोर में PhD करने. I went to England for my PhD. फिर we were together in USA. We came back. He joined MTech. I joined Punjab University. Right? I don't know story which he was going to tell, but being a very good friend of mine, एकेडेमिया में लोग कहते हैं पैसा नहीं है ज़्यादा, तो हम तो इंडस्ट्री की जॉब करेंगे. बेटे बिलीव मी, मैं भी आप जैसा था कि मैं भाग रहा था कि मुझे एकेडेमिया में नहीं आना. ओके, बट दैट टाइम हम अपने फादर ने जो कह दिया वही होता था. तो आई हैड टू जॉइन द एकेडमिक्स. और आज मैं कहता हूँ कि भी दैट्स द बेस्ट थिंग माय फादर डिड टू मी. ये एक ऐसी चीज़ है बेटे, मैं आपको बता नहीं सकता हूँ. राइट? पैसा इतना है कि आप आराम से ज़िंदगी निकल जाती है. बट इफ़ यू वांट टू अर्न मनी, वो भी पैसा इसी में ही है बेटे. वी पीपल आर वेरी इंटेलिजेंट, ओनली यू गॉट टू यूज योर ब्रेन. हम पेटेंट्स की बात करते हैं कि हमारा पेटेंट हो बेटे, नॉट नेसेसरली. अगर किसी का पेटेंट भी है, ऑफ पेटेंट हो गया, you can exploit that. India, can I have 5 minutes? But just I want. Clot burst से जब वो हार्ट अटैक हो जाता है ना बेटे, हार्ट अटैक होता है, immediately rush to the hospital. हॉस्पिटल वाले आपके एक इंजेक्शन लगाते हैं, उसका नाम होता है TPA, प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर. तो वो जो है कि वो क्लॉट को इमीडिएट डिसॉल्व कर देता है. इट्स अ वंडरफुल थिंग. बट उसका ये एक डिस्टेंट सब्स्टिट्यूट है जिसे हम कहते हैं स्ट्रेप्टोकाइनेस. ये TPA जो है हमारी बॉडी में होता है. ओके, स्ट्रेप्टोकाइनेस इज प्रोड्यूस बाय बैक्टीरियम. ओके, अगर बैक्टीरिया से प्रोड्यूस हो रहा है तो वी कैन प्रोड्यूस एन अमाउंट ऑफ इट. बायोरिएक्टर्स में लगा जितना बना दिया. तो ये टेक्नोलॉजी 1970 के नज़दीक की होगी बेटे, मे बी अर्लियर देन दैट, पर 1990 में ये ऑफ पेटेंट हो गई. इंडिया के अंदर TPA इज़ वेरी एक्सपेंसिव, इट्स वेरी एक्सपेंसिव. तो इंडिया गवर्नमेंट ने कहा कि क्या हम स्ट्रेप्टोकाइनेस जो कि यही काम करता है बट इट्स गॉट सम साइड इफेक्ट्स, क्या हम उसको लार्ज स्केल पे यहाँ प्रोड्यूस कर सकते हैं. सो दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी इज गिवन टू डॉक्टर गिरीश साहनी समवेयर इन 1990. ओके, कि ऑफ पेटेंट है, हम इसे इंडिया में बनाते हैं. तो ही मैनेज दैट थिंग फॉर अबाउट 5 or 6 years के अंदर बना के उसको ये प्रोड्यूस इट, और उसको कैडिला को बेचा फॉर 1 करोड़, 1 करोड़ के अंदर. ओके, सो जब वो चीज़ सेल होती है उसमें से मेजॉरिटी ऑफ द अमाउंट कम्स बैक टू द लैब. कुछ इंस्टीट्यूट ले जाता है, कुछ लैब सिर्फ 50%, ये मैं एग्जैजरेट कर रहा हूँ, 50% दे दिया इंस्टीट्यूट.
50% जो है लैब में आया। उसने काम किया, उसके रिसर्च स्कॉलर्स थे, उसका टेक्निकल स्टाफ था, वो सब में डिस्ट्रीब्यूट होता है, उसकी डिस्क्रिप्शन पे किसने कितना काम किया देना है। इसके बड़े साइड इफ़ेक्ट्स हैं कि वो क्लॉट तो डिजोल्व करता है, बट हेमाटोमास हो जाते हैं बॉडी के अंदर ना, तो वो हमें नहीं चाहिए। तो गिरीश मेड अनदर प्रोडक्ट which was sold for 5 crores to another company which was known as Shasun Technologies. That was bought over by some other company, 5 crore के अंदर. Then he further refined it, third generation, which was sold for 25 crores. And an MOU had been signed for the fourth version, which was as good as TPA, for 125 CR. Right? So, एक ही आदमी पंजाब यूनिवर्सिटी के प्रोडक्ट डायरेक्टर जनरल तक चला गया। सो बेटे आप लोग भी वही पहुंच सकते हो कि आपको बाहर नहीं देखना कि भी मुझे बाहर के लोग जैसे कि इट इज़ ए होम ग्रोन प्रोडक्ट गिरिसानी। सो आपको मैं जो एग्जांपल दे रहा हूँ बेटे, वो सिर्फ इसलिए दे रहा हूँ कि भी यहीं से ही निकला था, और इसमें टीचिंग के अंदर आई मीन बहुत ही बढ़िया प्रोफेशन है। रिसर्च, यू आर ए फ्रीलांसर, कोई भी रिसर्च करनी है आपने, आप उस पर करिए, फॉर्जस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया देते हैं। सो उसके साथ रिसर्च में आपके पास ये मैंने मॉनेटरी साइड भी दिखाई है बेटे आपको, और उसका जो प्रोडक्ट था, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एस्टिमेट किया कि ऑन एनुअल बेसिस 35,000 करोड़ का फायदा होता है डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। जब उसको मार्केट में आया उसकी प्राइस से 1100 रुपये, और ये जो था TPA वगैरह था, ये 3-4 हज़ार रुपये था। प्राइसेस स्लैश हो गई सारी, और 1100 पे रिक्शा वाला भी अफोर्ड कर सकता। उसका एक सेंटेंस था कि रुपिंदर मैं रिक्शा वाले लिए बनानी, एंड नाउ द थिंग इज कि रिक्शा वाला भी अफोर्ड कर सकता है। सो आई मीन वी लॉस्ट हिम लास्ट ईयर बिकॉज ऑफ हार्ट अटैक, वो भी एक ट्रेजेडी कहानी है। बट प्रतीक उनका बेटा है, प्रतीक में भी वो स्पार्क्स हैं वो चीज़ के, मगर थोड़ा सा इसके कान खींचने वाले हैं जो मैं कर रहा हूँ आजकल इसके, ठीक है। आई एम जस्ट जोकिंग, आई मीन ओवर टू यू बेटे। Thank you, sir. Thank you so very much for your kind words. So, hi everyone. I am going to talk today about valuation and pricing strategies for technologies, specifically around the concept of technology transfer. I'll bring you through the basic concept of technology transfer, going to why valuation matters, how to actually do valuation, some process and some case examples before concluding. So first we have a small theoretical bit. You all know what technology transfer is, right? So how many of you are aware of the process involved in technology transfer? For example, once the technology is created to a certain level that an industry might want to acquire it, what is the process? Are any of you aware of that? We had a few lectures on the licensing agreements and how that goes about and things like that. जी. So they have had an exposure to it, but yes, you can. ठीक है. Thank you so much. All right, I'll just move forward with it. It involves first of all protecting your invention through IP protection, then going for understanding the market, how the market behaves, what your particular technology, when it's made into a product, how it will affect the market, how much earning potential there will be, how much social impact there can be from a particular invention. Taking that into consideration, you make a valuation of your technology. That valuation you present to a company, you go on to negotiations, and whatever is agreed, that will eventually begin the tech transfer process. Major key actors in this field are universities, of course, where the technologies are created a lot of the times on the academia side. Invariably,
tech transfer offices are also involved in this process, because a lot of times I have seen in my own in my own experience is that the inventor themselves or their team have somewhat limited exposure towards the industry, towards companies that are in need of the product. Of course, there are exceptions. There are quite a few exceptions, in fact, but the majority, I'd say that they are somewhat lacking in exposure to large scale industries. That's where tech transfer offices come into play. Tech transfer offices are constantly engaged with industry side as well as with academia side, and we bridge the gap between the two. Of course, industry partners are very much necessary for a tech transfer to take place, because without that, who else is going to take the technology, right? Moving on. Valuation of a patent or a technology is very key, not just for tech transfer but also for other factors. For example, it enables informed negotiations, right, and fair royalty rates. If you have a valuation, if you know for a fact what the valuation of your technology is, then you can make a fair assessment on what the royalty rate should be, as in the impact of the technology and how much remuneration the inventing institute and inventors themselves should be entitled to. Otherwise, it will be much more guesswork than what is ideal. Secondly, it helps attract investors and partners. This moves towards the company side. Company valuation, companies' technologies should be evaluated, their patents should be evaluated so that investments and stuff can happen. Mergers and acquisitions are require valuation of all assets on a very deep level. So from the technology side, technology valuation for tech transfer, it is generally going to help you in negotiations and having a strong negotiating position, so that a company might not be able to take advantage of you. You will have a strong negotiating position. There are multiple valuation approaches which I will go into in some amount of detail after this, but two broad categories of such are quantitative approaches and qualitative approaches. Quantitative approaches involve actually calculating various key factors that you use to actually value your technologies. These include the cost of development, the market scenario, as well as income based methods. I'll go into detail about these in a couple of minutes. Qualitative approaches involve looking at more subjective factors, such as the technology readiness level, technological feasibility and legal strength of your patent, as well as market potential. See, whenever we talk about potential, it is more about projections, and projections are essentially guesstimations based on some key variables that you know, but they are all estimations. So that is why this particular approach is put into the qualitative section and not quantitative section. So the cost approach, the value equals production or reproduction or replacement costs. That is to say, how much money or finances will be required to reproduce a technology from scratch by a third party. So that would be equivalent to the most basic form of valuation. Second one is market approach, where we compare it with similar transactions, similar technologies that are already in the market. However, since patents are all about uniqueness, any technology that is out there is not going to match exactly with a technology that is being developed in an institute. So what it means is that there is still some estimation required to evaluate the novelty of your incremental technology, incremental advancement in technology as well. And the third, of course, is income approach, which revolves around calculating discounted cash flows and royalties forecast. It's all about forecasting here. So the cost approach in more detail involves research and development costs, the direct expenses associated with creating an innovation. That involves the equipment, the personnel, manpower, the
indirect costs such as rents and utilities, all of the costs associated with your particular project go into that. This is the most basic way of valuing a technology. Patent filing and execution expenses, prosecution expenses, opportunity costs, and reproduction versus replacement costs. These are all required to do a cost approach valuation. Now, it has a main disadvantage that it fails to account for the future economic benefits the patent might generate. For example, a technology might be developed using, let's say, 10 lakh rupees, right? However, it might generate a revenue, a total revenue in the market of 10 crore rupees. So, a valuation from this particular method will be undervaluing your technology by a huge margin. So, that is one of the main disadvantages of this technique. However, this is a good starting point for any valuation process. Once you do this, then you add other factors such as markets. The second method is market cost approach. Here you look at recent licensing deals, examining royalty rates and other terms from comparable agreements. For example, if I have a technology that I am developing, any other technology that could be considered similar to it, right? I try to find information about what terms and conditions there were for the transfer of that technology, what sort of revenue that technology in the market has generated. So, I use that as a base and estimate my novelty in my own new technology and then add on to that. So, that is one of the approaches. Patent acquisitions, you can also possibly find out the prices, the licensing costs of patents that have been transferred in your particular field. And industry standards, generally we have studies that show typical valuation ranges for patents in specific technological fields, not for specific technologies but for fields in general, which can give you general trends in your particular field of research. Now, the challenge here is that finding truly comparable transactions are quite difficult, as patents by their very nature define uniqueness in any technology. So, that uniqueness is not going to be available anywhere in the world. So, there is still some estimation involved here. Also, secondly, generally speaking, all these agreements, tech transfers from that I told you about, that are comparable to your technology, they are generally very confidential. So, finding that information can be difficult unless you have a very large network of people that you talk to. So, networking is quite important in basically any field. So, build your networks. The last valuation methodology I am going to tell you about is income approach. Here you do some revenue forecasting, estimate the future sales or licensing income of a technology. When it comes to market, you imagine what that particular technology as a product might generate in revenue. Again, that will happen with products that are already there that your technology aims to replace, right? You can use that as a starting place and project and then project. Discount rate determination. Now, this segment of the approach relates to the falling value of your technology as time passes. So, for example, if my patent is worth X today, my technology is worth X amount of rupees today, every year that X value is going to go down based on the age of the technology, emergence of other technologies, redundancy of the the fact that my technology is becoming more and more redundant based on new technologies that are arriving. So, those take into account the discount rate determination. Also, any new product coming into the market inherently carries a risk for the companies that are going to market it, that are going to sell it, because a product is generally going to be untested because of its novelty, right? If you have a technology that is completely novel, that is just like disruptive technology, then there is a huge amount of risk for any company that wants to commercialize the technology. So, that risk also is able to reduce the current value of your technology, because the risk is not to be borne by the inventor, but the company that is putting in the investment
to commercialize the technology. So that is also an important part. Also, economic life assessment determines how long the patent will generate economic benefits. You might consider that a patent's life is 20 years, right? However, in a lot of cases, especially in electronics and these fields, the patent's life is not relevant because the technology is so fast moving. The advances in technologies are so fast moving that before the 20 years are up, a new generation of technologies will already replace it. So the active economic benefits that a patent might produce in those particular fields can be very less compared to a patent's life, right? So economic life assessment is also very important in this particular methodology. So there is a formula for this which is fairly complicated, and it has a lot of assumptions and technical aspects of that calculation is beyond the scope of this particular presentation. So if you have a curiosity for it, there are many resources online. Just straight up Google is going to be able to tell you a lot of information on how to calculate discounted cash flows, which is the income approach. Now this one is a client based market valuation, right? So here क्या होता है कि ये बोला जाता है कि आप जो आपको पे कर रहे हैं आप उनसे उतना ही पैसा ले सकते हैं जितना उनके पास है, राइट? जितना जेब में पैसा है उतना ही पैसा आप ले सकते हैं, कहीं और से मैजिकली आएगा नहीं पैसा. सो दिस टेक्स इनटू दिस पर्टिकुलर वैल्यूएशन टेक्स दैट इनटू अकाउंट. So if a company is unwilling to go to your asking price, they might be a small company, they might just not have a lot of confidence in your technology at the start, right? Then you might want to be able to be flexible enough to meet their demands or negotiate and reach a more agreeable settlement for the company, because at the end of the day, if a company does not choose to commercialize or transfer your technology, right, and you don't necessarily have other avenues at the time, then you have not generated any revenue as opposed to a smaller amount of revenue than you may have expected by negotiating and giving in to the demands of a company. This is not always the best approach, but in certain cases it may be. I'll give you an example later on about that. So this valuation methodology also explains how a certain technology can be priced differently for different companies, depending on their scale, depending on their scope, depending on their ability to pay your licensing fees. Qualitative factors that are somewhat more intangible are listed here. First is the technology strength and maturity level, which is generally accepted as the TRL level. You all know what TRL levels are, right? Technology readiness levels. So they range from 1 through 9, 1 being the basic conceptualization of a particular project, going up to the commercialization of their technology with various stages in between. That is one of the qualitative factors that affect the pricing of a technology. Generally speaking, low TRL levels are going to attract lower levels of licensing fees. Higher the TRL level, typically higher the licensing fees, right? Second is patent breadth, enforceability and remaining life. I think everyone is aware that what patent remaining life means. Patent's remaining life means a 20-year period for the patent. However much time has been done in development, after that you subtract that and whatever is left is the patent's remaining life. Enforceability. Now a patent which is extremely general in nature in its main claims can potentially be overturned, can potentially be challenged by a company that states that this patent is should be invalidated. They can go to the courts and get your patent invalidated. So if you have more specific claims, among many other strategies, your patent's enforceability becomes higher.
That is to say, if anyone tries to challenge your patent, or if anyone tries to violate your patent, then you have much greater legal protection by going through the courts. That also provides a confidence in the licensing companies that your patent can actually protect the technology in case someone steals it or tries to invalidate it. Patent breadth is again about the fact whether or not your patent or your technology is general, in protectability. Again, if your claims are very general, then its patent breadth is going to be large. Is going to be large. So there is a balancing act between enforceability and patent breadth. The more general your claims are, the more leeway you have with creating a technology that can be protected. However, the more general your claims are, the less enforceability it carries. So there is a balancing act that you have to make here, and there is no one who can say what exact tipping point, what exact fulcrum you should follow. It is up to each and every inventor on themselves. Third part is market size, growth potential, and competition. So now the market size can be calculated through TAM, SAM, and SOM methodology, where TAM is the total addressable market. Do any of you have an idea what TAM, SAM, and SOM is? Could you please? TAM is basically the total addressable market Ji. for the product, which includes the global market, is the total market for the product. SAM is the market that we are trying to conquer. Okay. And SOM is the market that will actually be able to conquer. So that is a very good summarization. Thank you so much for answering. That is very good summarization, but I'll give you a small bit more detail. TAM is the total addressable market. That is to say, your product or your technology, the entire market that can potentially use or buy your product, regardless of whether or not you as a company can reach them, regardless of that. So what my friend said, the global market, typically TAM refers to global market, right? Serviceable available market, which is SAM. Now this is the slice of the total market that you can theoretically reach. For example, I have, let's say, a drone, right? That technology might have that technology is globally, there are many buyers globally, right? But I, as a company here that's operating only in India, can only reach maybe people in India, right? So the global market is out of my hands for now. However, I can theoretically reach everyone in India, right? So the total available market that I can potentially reach is the SAM. Now serviceable obtainable market is the part of SAM that I can actually reach, given my resources, given my market penetration at the time. So that SOM is the most realistic value of the market that you can actually acquire. The rates of TAM versus SOM in percentage can vary wildly depending on the size of my technology and the sector of my technology, right? How barriers to entry across geographic planes can easily stop me from, let's say, operating just in India versus operating in multiple countries or globally. So these are some of the considerations that you might want to think about in the market domain. Now every market has a growth potential. If any one of you has ever read any market research reports, you'll see that many times there's written this market is growing at a CAGR of 5%, right? So that is the growth rate of a particular field. This also is applicable to stocks, bonds, securities as well. CAGR is basically a growth rate, right? It's agnostic of technologies and markets. It's the growth rate of any asset, right? However, in this case, the growth potential of a field of research of a market can easily affect the overall price of a particular technology, right? Large growth potential markets will tend to have
low saturation, right? So if the market is very saturated with products, then companies might say that this is already saturated. Why would I jump into this pool where I don't have much of a opportunity to actually make money from a product, because the market is saturated. With high growth potential, saturation of a market is somewhat low, can be considered to be somewhat low, right? So a company might say that there is huge growth potential here, I can still make money even if there are other players in the market that are my competitors. Bringing us to the last point, which is competition. One must always consider that what their competition is doing, what technologies are already out there, what sort of revenue they are generating, what are their drawbacks, what does that technology, what does that product not do well. If I can, as an inventor, create a technology that bridges the gap between what is available and what is needed, then that gives me a very good chance of making a technology that is transferable. So these are qualitative factors. As you might have noticed, these are factors that are quite subjective in nature. There is no simple number or a calculation that will give you the exact answer. There is a lot of estimation involved here. So that is why this is qualitative factors and not quantitative. Now coming to the main segment, I think, is pricing and licensing strategies. We are all aware of what exclusive versus non-exclusive licensing is, right? Okay, so exclusive licensing means that if I have a technology, I give it to a company and I do not give that technology, transfer that technology to any company enforceable by the law. Within the technology transfer agreement, technology licensing agreement, it is written that the technology that I have created will only remain with a particular chosen company. Non-exclusive licensing is exactly the opposite. I can license my technology to multiple companies. Straightforward enough, right? On the surface, yes, that is true. However, I can make a technology licensing agreement in such a way that I transfer my technology to only one company, but only within a specific area. For example, within India, I will only transfer my technology to company A. In, let's say, Germany, is going to be company B. Company A cannot operate in Germany, cannot compete with company B. So it's a mix of exclusive and non-exclusive, though technically it still comes in the non-exclusive category. That brings me to the next point, which is geographical limitations. Like I just mentioned, I can assign different companies. I can transfer my technology to companies operating only in specific geographical areas. They cannot operate outside of those geographical areas with my technology. That's what that means. Now, pricing and payment strategies. There could be upfront payments, which is a straight up lump sum amount, which is called a technology licensing amount, which is the upfront amount. We have multiple types of royalties. Two of them are running royalties and fixed royalties. So running royalties are, you might have heard that a technology was transferred for X amount with 5% royalty on X factory prices. So what that means is that the technology, whatever products are sold, let's say the company sells 100 products of that particular technology that they've taken from me, right? 5% of that price, selling price, will come to me, as in my institution, as royalty, which is calculated every half year or every full year, depending on the terms of the contract. That is very much sales dependent. So if there are low sales, then I get low royalty. If there are high sales, I get high royalty. Obvious enough? The next point is fixed royalties. Now, fixed royalties is somewhat interesting. Let us say I, as an inventor, don't want to take the risk of low sales from a company, because I cannot control the marketing and sales networks of the company itself. So I tell the company that I will sign the technology licensing agreement, but in this case, every year, regardless of sales, you will pay me X amount of money, right?
the risk here for me is, the good thing about this strategy for me is that if the company has very little sales or no sales, I will still be entitled to a specific amount. The risk here for me is that if the company skyrockets its sales, right, I am still entitled to only that amount. Any extra amount that I might have received is just not mine. So you have to think about your own technology's success rate in the market. If you are very confident of your technology's success in the market, then running royalties might be a good strategy. Question regarding like fluctuations in share market. Sorry? Suppose in case of my innovation is being acquired by one of the top brands Ji. and it's in the launching phase from that company and the share markets drop down suddenly. Then what will be the impact of like launching? It will be successful or will be either? That is an interesting question actually, because you are linking stock market with product sales, right? So there is indirect linkages at best between stock markets and product sales. Falling markets for securities may indicate a lessening of the spending potential of the populace, which might affect your product sales negatively. Might, I said, I am not saying that it definitely will. However, there is no direct linkage between stock drop and product sales, direct linkage. So in effect, if the stock market starts crashing, right, and your technology gives a product that is quite basic and necessary for life, like for example a new type of grain or atta, right, then it shouldn't affect your product. But if it's a lifestyle product which is not necessary for life, but it's a quality of life improvement for the upper echelon, for the middle class, then it might see a drop in sales. It very much depends on what kind of correlations you are able to build between stock market and the success of a particular product or product category. Fixed royalty and running royalty you mentioned. Can we write like that? Okay, I get a fixed royalty of so and so, but in case the sales are this, whichever is more. So Yeah, that is possible. I was going to make the next point. That is definitely possible. In fact, you can have a different variations of these royalties. You might say that for the first 5 years, I will be paid 25,000 rupees a year. I'm just taking a number out of a hat, right? Regardless of sales volume, you pay me 25,000 rupees a year. For year 3 and for year 4 and above, right, you pay me 10% of the sales or whatever number. That will allow me to gauge the success rate of the product for the first 3 years, and only then I will commit to the ups and downs of a market, right? So first fixed, then market. You can have it the opposite way as well. You can have a very small percentage based royalty for the first 3 years and have a large fixed amount based on the performance of the product in the first few years, all up to the contract, right? So there is no specific rule what terms you need to have in a contract other than a few basic necessities. You can have many terms as long as both parties agree to it, and then it will become a legally enforceable agreement, right? So it's all up to the creativity of the inventor, of their lawyers, of the company, because the company will also try to maximize its profits. So there's more of a clash of different interests than a collaboration, right? At least there is some amount of clashing involved. You can have both. Typically it's price based. Normally it's on the cost, right, or the Sales price. You can technically have both. Now here, if you have a profit based royalty, then there's no way for anyone to say whether or not they're actually giving you based on profits. A company might just say that my 90% of my product's price is basically the
manufacturing price or something, however they are able to justify it. So the royalty will only be on a very tiny percentage of the price. But if practically, I'm sure this industry also. Industries की problem नहीं है, which is a fact. अब net sale हो रहा है जो बातें कर रहे profits की, industry में मूल लिए होते हैं बेटे, thousands of crores. तो उसमें आप फंस जाते हो. अब तो लगता है आपको बड़ी चीज सेल हो रही है, वो कह रहे हैं पर मैंने तो बैक मेरा ये पड़ा, right? मैंने तो शेयर होल्डर्स को पैसे नहीं दिए, 10 साल से रेस नहीं किए. So this information which Pratik is giving you on this 7-day program, it's just to enlighten you, will make you aware. ये क्या चीज़ है? आप में ये एकदम प्रोफेशन नहीं है आपका बेटा, but you should be aware of चीज़ें क्या हैं. Thank you so much. Like Professor Tiwari just said, this is the starting point potentially. If you look into these things in more depth, you will get much more information. You can look into case studies of previous successful tech transfers, and you will be able to find a nearly unlimited number of variations on all of these strategies. You can have a mix and match, however, whatever suits you, right? But both parties have to agree, obviously. Last point here is milestone payments, wherein a company acquiring your technology will not simply pay the entire fee upfront, but they'll pay part of the fee at milestone number 1. Let's say in the pharmaceutical side, part of the fee is going to be, let's say, 20% when the know-how is transferred, 20% when let's say the clinical trial starts or the formulation is created, 20% when something else happens, based on milestones. That can also be mixed with royalty payments. When the total upfront cost based on milestones is done and the sales start happening, then royalty will kick in. That can be done as well. Now a few examples. I have 4 major examples showing many of the concepts that I have mentioned. The ideal scenario here. So recently I transferred a technology entitled IoT enabled ICU patient monitoring system from one of the CSIR labs, right, to an industry. We had multiple meetings. The technology was explained after due NDAs and everything. And the company side said that I am fine with this technology based on, dependent on the asking price. So separately I asked both parties what asking price you are comfortable with. Both of them were very close to their pricing thoughts. The inventor gave me a number like 10 lakh is good for me. This is what I'm thinking. The industry side told me that I'll be able to pay like 9 lakh rupees. So with a small amount of negotiation, we came to a very good conclusion. 10 lakh rupees was the amount, upfront amount, and 4% ex-factory price royalty. So this is basically the ideal scenario where all parties have very aligned interests. Now this here is a technology called the artificial breathing capability device. This was also transferred from our offices to 2 different companies, each for 4 lakh rupees. Ji sir. So this technology was created in part by Professor Manu Sharma of Punjab University Mechanical Department, as well as Professor Joseph Matthews of PGI and 2 other inventors, all from different organizations, right? This technology to each of the companies was transferred for 4 lakh rupees each. Now I delved into how they came up with the number of 4 lakh rupees, and I was also told to specifically tell you guys this, that we were 4 inventors. We thought 1 lakh rupees sabko mil jayega, and that was the theory behind, that was the reasoning behind the 4 lakh rupee amount, right? तो मैम कट लेने वाले तो बहुत है मैम, यूनिवर्सिटी भी है, गवर्नमेंट भी है. Let's keep that down low, ma'am. Let's let that be a surprise when they make the technology. But like, I think the
Gee, my last one is going to be that exactly. But yes, please continue. Sorry to interrupt you. I can let you finish and Ji. then we can have more questions from them. Gee, definitely. मैंने इसके बारे में बताऊँ ना कि मार्केट में जो अवेलेबल है दैट इज सो एक्सपेंसिव। जी। कोविड के टाइम की बात है ना, फिर तब बनाया गया था तो ताकि पीपल कैन अफोर्ड इट, उसके लिए बड़ा ही हमने सिंपल सा बनाया है। मनु इज इन फैक्ट द कोऑर्डिनेटर ऑफ टेक्नोलॉजी सेंटर। So the technology, I'll just give you a small brief. Ventilators are available in the market. COVID time में the requirement for ventilators, the demand was so insanely high that the market could not supply. Right? At the time, the simple thought came that why are ventilators so necessary? Higher order functions of a ventilator are not necessary for a COVID patient. You just need to force breathing at a certain rate, at a certain pressure. So they developed a machine. Have you ever heard of ambu bags? आपने कभी मूवीज टीवी शोज में कोई एम्बुलेंस देखी है जब एक बैग लगाते हैं मुंह पे और हाथ से प्रेस करते हैं बैग को? दैट्स कॉल्ड एन एम्बू बैग. दैट इज मैकेनिकली आप एयर फोर्स कर रहे हैं इनटू द सिस्टम ऑफ अ पेशेंट who cannot necessarily breathe themselves optimally. So this device, इसके अंदर एक एम्बू बैग लगा हुआ है. A tube goes into the patient's throat, or it can be a mask as well, and the machine automatically depresses an ambu bag to force breathing of a patient. It simulates the lower functions of a ventilator that is more than enough for most applications on a patient. So it's a simplified technology, it is a cheaper technology, and it is much more easily producible and marketable. So that was the theory behind this particular technology. Now then I asked regarding the pricing of the technology, what is the development cost of the technology? Was that taken into account when deciding the 4 lakh rupee amount? So I was told that it was given by the government of India. It was approximately 1 crore rupees of development cost. It was given by the government of India, not specifically to generate revenue for the government, but to enable a technology that is life saving. So that is one of the reasons why that 1 crore amount was not taken into consideration very thoughtfully to let the technology be transferred to multiple companies at a low rate, at an affordable rate. That was the theory here. Please. हम कहते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हमारी कुछ नहीं करती हमारे लिए. लुक एट द प्रोजेक्ट्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया गिव्स. 1 करोड़ रुपए देगी और गवर्नमेंट हमेशा ये कहती है कि हमें वापस कुछ नहीं चाहिए. साइंटिस्ट के पास भी पैसा तो है नहीं, गवर्नमेंट से आया, राइट? वो ये कह रही कि इससे वो कि यूनिवर्सिटी कैन अर्न, इन्वेंटर्स कैन अर्न, सो गवर्नमेंट डजंट वांट इट. तो ये जो चीज़ इसमें कहा है ना बेटे, लुक इट फ्रॉम ए पर्सपेक्टिव. मैं गवर्नमेंट का आदमी नहीं हूँ बेटे जी, ना ही किसी पॉलिटिक्स का आदमी, बट प्लीज थिंक अबाउट इट. आपको एम फार्मा के बाद जो स्कॉलरशिप मिलता है वेरी रिसेंट पोस्ट डॉक्टरेट मिलता है, कहाँ से आ रहा है पैसा? सो गवर्नमेंट और इन चीज़ों में काफ़ी इन्वेस्ट कर रही है. कभी ANRF के ऊपर उनका लेक्चर करवाई. तो जस्ट टू लेट यू नो कि बेटे हमें हर बार एक नेगेटिविटी से देखना ये गवर्नमेंट. सो इतना पैसा जो R&D पे आ रहा है बेटे सारा जो है उसको गवर्नमेंट कुछ वापस नहीं मांगेगा. दैट्स लाइक दिस. पेटेंट भी करना है उसके लिए गवर्नमेंट पैसे देगी. So I'll make one line out of this. Keep looking for grants. Keep looking for gaps in the market that will make actionable change, that will make significant change for the livelihoods of everyone. And keep looking at grants, because grants are essentially देन है आपके ऊपर. आप लीजिए ये पैसा, अगर आप गवर्नमेंट, अगर जो कमिटीज़ हैं वो आपके प्रोजेक्ट को अच्छा समझती हैं, आप लीजिए ये पैसा, उसका बनाइए कुछ, राइट? एंड डोंट थिंक अबाउट पेइंग इट बैक. यू विल पे द गवर्नमेंट बैक बाय सेविंग लाइव्स, you will pay the government back by enabling more research,
एंड अपने प्रोडक्ट्स के सेल्स के अपने टैक्सेस के थ्रू पेमेंट हो जाएगा जी 10 साल के अंदर अंदर. डोंट वरी अबाउट दैट, जस्ट डू गुड वर्क. जी मैम, जस्ट लास्ट बिट्स हैं. थर्ड एग्जाम्पल हेयर इज रिलेटिंग टू द क्लाइंट बेस्ड वैल्यूएशन. So this technology is a very basic technology. You may have seen cheek retractors that just open your mouth constantly, so a dentist can have access to your anterior and posterior mouth, right, cavity. So lighting systems are fairly inefficient when this thing is used. So the inventor just sort of attached a light to it. The ask for the technology was about 1 to 1.5 L. There was some variation there. The company came up and said that this technology does not seem to have much in the way of technological complexity, right? So I am unwilling to pay 1.5 lakh rupees asking price. I will pay 50,000 rupees and that's it. If you want to transfer it, go right ahead. I'll happy to do that. So I took that. This also was a technology, by the way, that I transferred. So I took that information, went to the institute, and they told me that what are the justifications for it. So I told them about the complexity as well, but I also raised the point that this was a 3-year-old technology, right? It had not been transferred and nobody seemed to have much of a interest in there. So I raised the point that a company is out there that's willing to take your technology. Your own efforts in the past have not been able to transfer the technology. So why not take this chance on a non-exclusive basis? If someone else shows up, please go right ahead and transfer it to whatever amount you want. But why not चक्का घुमाना क्यों ना शुरू करें? The institute, Sharda University actually, agreed to it. There you go. We have a very nice technology transfer for a small amount of money, understandably. But there is also a royalty being generated or will be generated within the next 6 months when the technology is scheduled to be launched. So royalties time bound कितने साल के लिए या like For the lifetime of the agreement, which is 5 years, and can be extended based on whatever. Now this here is a technology that's very close to my heart. तिवारी सर ने आपको सबको बताया है स्ट्रेप्टोकाइनेस के बारे में, which was developed. The PI was my father. Very capable team in his hands as well. तो इसके 3 generations अभी ट्रांसफर हुए हैं, ठीक है. Streptokinase as a technology has been available for a long time. The first generation that Dr. Sahani actually developed was a naturally synthesized streptokinase that was indigenous to India. First time streptokinase was actually made in India was through this. It was transferred to Cadila Pharma for an amount of 20 lakh rupees at 3.5% royalty. but कब way back 20 lakh Way back, that was in the 1990s. तब 20 lakh was a big amount. Mid-90s, yeah, before my time. Accounting for the rising inflation and everything, 20 lakh is not a small amount of money in today's terms. Anyway, so that was a fairly straightforward tech transfer. Next came the recombinant variant of the medication. That was the main medication that was able to reduce the cost of streptokinase significantly, so that रिक्शे वाला भी उसको afford कर सकता है, ठीक है, through recombinant techniques. That was transferred to Shasun Medical at 1 crore rupees at 5.5% royalty rates. This is all on formulation, right? इसके पीछे एक स्टोरी है. द पर्सन हु एक्चुअली वॉज इन द नेगोशिएशन, डॉक्टर नरेश कुमार, मैंने उनसे बात करी थी रिसेंटली इसके स्पेसिफिक्स के बारे में. तो द डायरेक्टर एट द टाइम ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ माइक्रोबियल टेक्नोलॉजी सेड, मेरे को 40 लाख रुपए में भी आप ये ट्रांसफर करा दो, मैं खुश हूँ. इंटरेस्टिंग, राइट? एंड देन आई वॉज टोल्ड कि द PI, डॉक्टर सानी, while these both people were going for negotiations, डॉक्टर सानी सेड 1.5 करोड़ पिच करना प्लीज. एंड इन्होंने कर दिया. नेगोशिएशन करने के बाद 1 करोड़ पे फिक्स हुआ. तो द ओरिजिनल आस्क वाज 40 लाख रुपीज एंड द टेक्नोलॉजी ट्रांसफर प्राइस वाज 1 करोड़ रुपीज.
उल्टा भी हो जाता है, डेयरिंग की जरूरत है थोड़ी सी, यू नो, एंड जस्टिफिकेशन की जरूरत है, बिकॉज एट द टाइम शासन मेडिकल के पर्सनल आस्क्ड फॉर ए जस्टिफिकेशन ऑफ दिस अमाउंट, एंड डॉक्टर नरेश ने मेरे को पर्सनली बोला कि चाहे दिन वहाँ पे अच्छा प्लेजेंट था, सब कुछ था, मेरे पसीने छूट गए कि अब मैं कैसे करूँगा, राइट. But he has been a veteran in this field and he understands market dynamics and these factors. So he took to a chalkboard and he showed them the break even point of their technology, जिसको बोलते हैं, I always screw that, payback period. So he showed the payback period on the board with relevant and reasonable assumptions to be 3.5 to 4 years, which is a very nice payback period for a technology in the pharma sector especially. कल में J दिखाया उन्होंने, तो they said कि normal J उतना है वो red वाला, और pharma में जो जाता है, Yeah, the curve is going to be huge, significant. Very long period before you break even and then start. Yeah, significant. तो उन्होंने ये दिखा दिया and the deal was struck. Third variant is the clot specific variant. जैसे तिवारी सर ने बताया था, it only targets the clot that is causing the issue, not generalized. That technology was transferred to Nostrum Medical, that's in the US, for $2 million USD at 5% royalty, right? So that tech transfer was milestone based. It was quite a few years ago, and yet the technology is not out even now, because like I said, like madam said, the J curve is going to be huge for pharma, right? It is still even now not in circulation in the market. However, that technology transfer was actually successful for $2 million. Now, these are the very basic steps for valuation and pricing, starting from invention disclosure and IP protection to market analysis, to selecting the correct valuation approach for you. However, the valuation approaches I described, you don't need to select one. It is much better to have a mix and match to get to the closest answer, because valuation is more of an art than a science. You will never get to a correct number, because it's all estimation, it is guesstimation, तुक्का मार रहे हैं, maybe अंधेरे में नहीं, but to some degree there is guesswork involved, right? So you want to be as close in your assumptions to the real world as possible. Then आप licensing model ढूंढिए, royalty, upfront payment, whatever you like, whatever you think is most beneficial to you and the company also agrees. And go right ahead, monitor performance and revise terms if needed. The challenges here, like I mentioned, is first is that forecasting the future in any capacity is quite difficult. You need to have long historical data, and when you have unique products involved, historical data is generally absent. So you have to make guesswork. Sometimes a lot of guesswork, sometimes some amount of guesswork. But it is still quite difficult, and even seasoned veterans are not able to necessarily do it correctly every time. Market comparables may be hard to find, as well as the fact that a lot of these terms and conditions are confidential in nature. Best practice is to use multiple methods, realistic assumptions and scenario planning. Key takeaways: valuation is a multi-dimensional field which combines various methods. You want to get to the closest as much as you can by combining everything you have at your disposal. Pricing should reflect risk, market size, tech maturity. We discussed all of these factors. And flexibility and periodic review are critical. Flexibility is one more point that I will again emphasize. Like I said, with the technology of cheek retractor with light, flexibility was necessary for this technology to be transferred. Here, with the recombinant streptokinase strain, flexibility on the part of the company was very necessary. And flexibility is essential here if the inventors, Professor Manu for example, were keen on just recovering the 1 crore amount that the government had provided, this technology would very much may not have been transferred,
let alone multiple times. So flexibility is a very, very necessary factor for each and every inventor as well as the company, as so long as you are able to convince them. I'll end on this particular note, flexibility. And questions, if you have any more, I'll be happy to take them. We can have one or two. Yes, please. I did cross the limit. Yeah. It's all right. Thank you. Any quick questions? You have the man in front of you. I think I was fortunate to have a good majority of questions during the session. So you could engage them. Yes, that was pretty nice. Thank you so much. Flexibility is been referring, so it would vary from organization to organization as well. So at Punjab University, we have been very fortunate. Sir was also director, Center for Industry Institute Partnership. So one, we have been at Punjab University. We have been like I would say unconventional. We started this cell way back in 1994. तब बहुत कम universities थी जिनके अपने rules and regulations in place. Then again we were very pro inventor. उसमें उस वक्त शुरू में we had a 50-50 partnership. Punjab University would get 50% of any consultancy or any tech transfer, and 50% would go to the inventor or the inventors depending upon the understanding. And then later on, I think of the 10-15 साल हो गए 70-30 we moved to the 70-30 where 70% comes back to the inventor of whatever is जो भी earnings होती हैं या royalty आती है या जो भी है उसमें I think royalties में it is 80-20 also. I also need to look at that. तो flexibility की जो बात है वो पंजाब यूनिवर्सिटी of course अभी टेक एनर्जी सेंटर हमारे पास आ गया but normally वो negotiations inventor ही करता है बड़ी बड़ी buyer के साथ. Inventor is not an expert. डर लगता है उसको अपने लिए मांगते हुए भी, लेकिन अभी आहिस्ता आहिस्ता अवेयरनेस हो रही है. बट यूनिवर्सिटी हैज बीन वेरी फ्लेक्सिबल. तुम जो भी मॉडल स्ट्राइक करो, वेदर इट इज टोटली one time payment or it is a milestone payment or it is a combination of milestones and royalties. So all those things can be looked at depending upon the status of the industry. So those things add to the chances of successful negotiation, but we all know in pharma it is another thing and you have other limitations to it. But at the same time, जैसे सर ने बोला इंडस्ट्री की अपनी लिमिटेशन होती हैं. हमारी जो वेयर वी आर प्लेस्ड टुडे इन चंडीगढ़, हमारे आसपास R&D बेस्ड इंडस्ट्रीज बहुत कम हैं. तो उसके लिए टू स्ट्राइक टेक ट्रांसफर्स और टू अप्रोच मल्टीनेशनल्स, वहाँ पे अलग तरह के इश्यूज हो जाते हैं. दे कैन इवन इफ यू साइन CDAs, they could still pick up your ideas because they have their well-developed R&Ds and their R&D can say हम बना लेंगे अपने आप. They also tend to have a large legal unit that can just hammer away at your patents. Their CDA is not very simple and you also have to read through the lines to sign that CDA, then any agreements which you do. And then उनके केस में R&D और somebody might feel, क्योंकि वो हमारी तरह सोचते हैं कि ये अच्छा प्रोडक्ट है, लेकिन उनका बिजनेस टीम क्या सोचता है, उनका मार्केटिंग टीम क्या सोचता है, वो एंटायरली एक डिफरेंट प्लान हो जाता है. तो तुम 6 महीने उनके साथ डिस्कशंस कर रहे हो एंड सडनली द बिजनेस रिव्यू टीम कम्स इनटू पिक्चर एंड इट सेज नो वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन दिस प्रोडक्ट. So there are so many things which are playing, but at the same time we have to make ourselves aware. We should be able to at least work out the cost of our technology, है ना. और उस केस में हिम्मत रख के प्रोजेक्ट तो करो, बट डू योर होमवर्क दैट यू कैन जस्टिफाई. अगर कोई तुमसे पूछेगा, लेकिन कोई जस्टिफिकेशन के लिए पूछ रहा है तो मतलब वो they are interested somewhere, है ना, half ways, 2/3 ways, 1/3 ways, but they would meet you that shoes. तो उस केस में then you should be able to at least tell them, justify why you did. Like there has to be mathematics how you reached at that cost. Not कि 1 लाख सबको मिल जाएगा. Don't do that. But at that time we were desperate कि चलो टेक्नोलॉजी जाए तो सही, लोगों तक पहुँचे तो सही. वो भी एक डेस्परेशन होती है साइंटिस्ट को, एक ड्रीम होता है कि मार्केट तक तो पहुँचे जो मैंने किया है. So that is another joy. So you can always strike balances depending on your callings. हर एक की अपनी अपनी कॉलिंग होती है और आहिस्ता आहिस्ता तुम लर्न भी करते हो. There should not be any regrets कि मैंने ऐसा क्यों कर दिया. You would get more chances.
but do start somewhere. So thank you so much, and it was a lovely session. और I'm sure हम सब ने बहुत कुछ सीखा इसमें से, and with the live examples definitely things get clearer. So we have a certificate. Sir, please do the honors. We have with us such a senior colleague and an expert. Well done. फोटो में पता नहीं रहता किसको मिल रहा है। So normally मैं इशारा करता हूँ इसको मिल रहा है। मैं एक मिनट दे दूँ सिर्फ इन पे। हाँ, Just a minute. बिल्कुल सर। बेटे आपने एक्सक्लूसिव नॉन एक्सक्लूसिव बात सुनी है ना आपने, राइट? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कहती है कि जी आपने नॉन एक्सक्लूसिव देना है, ये जस्टिफाइड। तो मैं अपने दोस्त को ना दे दूँ, एक को दिया क्यों दिया, राइट? इंडस्ट्री ऑन द अदर साइड कहती है कि हमें एक्सक्लूसिव चाहिए, वो कंपटीशन ही चाहते हैं। फार्मा में खास करके मैं दिस इज व्हाट आई वांटेड टू से। बस जाता है साइंटिस्ट। आई नो कि एक इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट में टेक्नोलॉजी दी गई, दिख भी रही थी, देती गई, और उनके अंदर राइवलरीज होती है। केस हो गया उस बेचारे के ऊपर, उसकी सारी जो टेंशन सारी रुक गई उसकी, अब कोई रिस्क नहीं लेता। सो कई बार चीजें, अब गवर्नमेंट अपनी जगह ठीक है, इंडस्ट्री अपनी जगह ठीक है, तो यही बताएंगे इंद्रजी करते कैसे। सो जैसे कल मैम बता रहे थे, हमें जोग्राफिकल एक्सक्लूजन भी कर सकते हैं हम, है ना, कि इंडिया के लिए है, या हम यू हैव अ पेटेंट विच इज़ अ वाइडर पेटेंट, सो यू कैन डू एक्सक्लूसिविटी कि डमा में मैं ये देती हूँ तुम्हें, बाकियों में नहीं होगा तुम्हारा, या एक्टिव स्पेसिफिक कर सकते हो, बिकॉज फार्मा में दे ऑलवेज वांट एक्सक्लूसिव। और अभी देयर इज अ नाउ इज आई थिंक अ वेरी राइट टाइम फॉर टेक्नोलॉजी ट्रांसफर्स, बिकॉज इवन द स्मॉल कंपनीज MSMEs दे वांट पेटेंट्स, उनको हाँ स्टार्टअप्स उनको पेटेंट्स चाहिए, IP चाहिए, IP प्रोटेक्टेड प्रोडक्ट चाहिए होता है, लेकिन उसमें वो तुम क्या कह रहे हो या तुम, इसीलिए उनको प्राइस नहीं तुम्हारी पता लगती, बिकॉज उनको नहीं पता लगता कितना उसमें इनपुट गया, है ना, चाहे सरकार का गया, लेकिन पैसे तो लगे हैं ना, तभी वो टेक्नोलॉजी रेडी हुई है। सो दे फील कि ले हमें तो ऐसे ही दे दो, पैसे क्यों मांग रहे हो इसके लिए, और एकेडमिशियन को तो बिल्कुल पैसे नहीं मांगने चाहिए। सो वो कहता है वो गवर्नमेंट ने पैसा दिया, पैसे भी आते हैं, तुम्हें गवर्नमेंट ने पैसा दिया है, तुम हमसे क्यों मांग रहे हो? और टीचिंग प्रोफेशन इज ऑलवेज कंसिडर्ड टू बी अ नोबल प्रोफेशन, सो वो कहते हैं पैसे नहीं लेने चाहिए, लेकिन सर कह रहे हैं बहुत पैसे हैं टीचिंग में, रिसर्च में, सो बिल्कुल है, अपॉर्चुनिटीज हैं बहुत सारी, यू नीड टू गो एंड ग्रैब देम। जो आपके पास टेक्नोलॉजीज हैं, मैम के पास हैं, सारी इंडस्ट्री नहीं ले रही बेटे, और मैम को मालूम है कि टेक्नोलॉजी में बहुत दम है, मैम तो ऑलरेडी प्रोफेसर है, तो बेटे टॉक टू मैम, मैम अगर मैं अपना स्टार्टअप लगा लूँ इसके ऊपर, दैट थॉट जो कि हम सेंटर जो है पेटेंट टेक्नोलॉजीज देके, IITs की बाकी सेंटर देके हम दे रहे हैं स्टूडेंट्स को, उनको टाइप करवा देते हैं कि बेटे अपना स्टार्टअप लगाइए, और 16 लोगों ने स्टार्टेड विद 116, 16 को हमने फंडिंग में दिलवाई। आप प्लीज इनको ना वो चीज़ जो आपके पास है, आपकी फैकल्टी है, टॉक टू द टीचर्स। So like there are so many opportunities, बस अपने कंफर्ट जोन में से बाहर निकलना है, बस that's it, डर के आगे जीत और अपनी कंफर्ट जोन से बाहर निकलना है। Thank you Prateek for That is all 2 hours, Sorry? 2 hours का थे ना? नहीं, 1 hour. So we have a session with Varinder and Manuji for 2 hours. अच्छा, that is what- That is from 2 to 4. हाँ जी, हाँ जी, that's a So tutorial. done, lunch हो गया इनका? नहीं सर, केक है अभी talk. We have another speaker with us, and Bhavish is here. So we are running late, Yeah, no and problem. I'll request him to also squeeze in 45 minutes, and we'll meet for lunch. So Bhavish ji is here with us, and Mr. Bhavish Sood, he's a
general partner at Modular Capital, which is a seed stage micro venture capitalist fund. So, and Yeah, he that's is good, ma'am. In the interest of time. नहीं बिल्कुल एंड लाइक ही इज अ IIM graduate St. John's के हैं मैं देख रही थी so he belongs to Chandigarh. Yeah, my both parents are also PU alums. Both scientists from PU. Right. So he'll be talking about Father is no more. Subhash Nagal. He was in geology. Mother is a microbiologist. She was in PGI. In experimental biotechnology. he is a microbiologist. Acha, and okay. microbial biotechnologist. So my both parents are scientists from Maybe PU. he would know more. So over to Bhavishji. Yeah, thank you. It's a pleasure to come to my parents' alma. I didn't go to PU. I went to Manipal for my undergrad, then was in Bangalore. So, how many of you know what a VC does? Does anybody know? VC is the one who writes the check. So, VC से पैसा लेना तो बहुत आसान है, but I give a practical example. When you take money from a VC, it's like having your mother-in-law come live with you permanently. So I tell all the founders ki is frame of mind ko socho, and then can you tolerate your mother-in-law? हफ्ते भर के लिए भी you can all tolerate, but after that it's problematic. So the point I want to emphasize is you should take money only when it is needed. And typically you will find, like Prateek said, he made a brilliant point. You'll be surprised the amount of grants that are available today for R&D under various schemes, right? If it is BIRAC, then there is SFS. There are at least 5 or 6 schemes. State governments now have venture capital funds, or they have fund of funds, which are basically funds which invest in funds like me, and then I can give it to people like you. So I predominantly invest in deep tech, but I invest in deep tech software. So at Modular we've done, by the way, it's the only fund in North India apart from Delhi. It's the only fund. Chandigarh mein to bhul jao, but North mein bhi pura, this is the only fund. And I think it's not Chandigarh, it's just that I like to live here, that's why the fund is here. So we have investments in a lot of very interesting software companies in geospatial analytics, in digital twins, in 3D, AR, VR. So you name the sector, we probably have an investment. So what I wanted to talk about today is, and we'll keep it very interactive. How many of you are startup founders here? Any startup founders or budding founders? Anybody playing with an idea? Or you are mostly students who potentially think they want to become entrepreneurs, right? So one of the things which as long as you don't graduate with student debt, you have plenty of opportunities, and I think there are 2 schools of thought. People say work for a few years, then become an entrepreneur. My view is slightly different, that when you graduate, your ability to take a risk is far higher. Responsibilities come in there, ability to take a risk is much higher, right? Now, when it comes to deep tech enterprises, what are some of the 2 or 3 things? For example, TRL, Prateek talked about TRLs. The classic problem we have in India is, if you look at in the US, now let's take space tech, which is the flavor of the season currently. You look at SpaceX. What comes to your mind when you look at SpaceX? I mean, you normally think of Elon Musk, but what comes to your mind when you think of something like SpaceX? What comes to your mind? Anyone? Come on, we'll have a more interactive session. ज्ञान तो तुम्हें अपनी क्लासेस में भी मिलता है. Astronauts, that comes to your mind. in the future. That's a great point. That's a very good memory recall. But when you look at the feasibility of how something like that has happened, and you take this to the Indian context, what comes to your mind? What are some of the challenges that you can potentially think of? कि वहाँ पे NASA did not send a rocket, SpaceX sent, but if you read Elon Musk's biography, you look at how he thought about building. He even went to Russia to buy rockets.
This is an American citizen, a naturalized American citizen going to Russia to find rockets. But eventually what happened? NASA started giving out grants as part of its own commercial endeavors, and that is how Blue Origin, SpaceX and some of the other companies, RocketX, which came out of New Zealand, now is in the US. That's how some of these companies started to progress. So what comes to your mind? That there is a commercial entity like NASA which is there. Now if you fast forward that scenario to India, ISRO does not have the commercial entity to build that. So what does that leave you with? You are at the mercy of people like me who will write you a check. Or you are at the mercy of a government grant to help you build. But commercialization of deep tech in India is very, very hard. Very, very hard. And it's across a range. So what happens in Indian context is, based on your TRLs, you do not get the funding. So typically you will have to commercialize immediately after prototyping. So you have to be very aware of the Indian context. Now deep tech compared to, let's say, I'll give you an interesting statistic. So we were doing some analysis. So I think this analysis is about 2 years old. So when you look at, you all order from Swiggy, or you probably use Paytm, right? So you know what are the top 5 consumer brands in India, right? You have Paytm, you have Swiggy, you have Zomato, right? So how much do you think in 2023 they have raised? Let's say the total raise environment that year in 2023 was $20 billion. It was actually $21 billion. So $21 billion roughly is about 1000 crore के आसपास, not 1000, 10,000 crore के आसपास, 20,000 crore के आसपास, roughly, ठीक है? So how much do you think these 5 companies have raised? 20,000 crore में से कितना raise किया होगा इन 5 कंपनियों ने? Just make a random guess, anyone. 50%. Who said that? You said that, okay. Anyone else? Anyone else? Ma'am, you wanted to give an answer? 15,000 crore. 75%, ठीक है. Anyone? तुक्के मार रहे हैं, random तुक्के हैं, किसी को क्या पता डेटा क्या है? Very good तुक्का, exactly that number. So 5 companies in the consumer tech have raised equivalent of what the entire deep tech and software sector has raised. So what does that tell you? Pareto का नाम सुना? Pareto सुना 80-20? That is what it is, power law. These 5 companies have taken 50% of the capital that is available. अब पूरे deep tech sector, पूरे sector के लिए बाकी सारा पैसा बचा हुआ है, उसी में आप सबने अपने वेंचर्स बनाने हैं. So very tough, very, very tough. The other thing you need to keep in mind is the third thing. So we talked about why based on the TRLs you might not get funding, you will get some grants. My observation of grants, and I sit on several of these grant committees, at least with a lot of universities, at least 5 or 6 of those. What I have observed is that the grants are also not adequate for the deep tech sector. That is one. The other thing which I want to tell a lot of founders who come from a scientific background, so one of my favorite areas which I've seen is some people like you, microbiologists, who come across, who build very interesting pharmaceutical products, and these are more dermatology oriented, and they have unique IP. But what is the mistake they want to do? They want to build an end-to-end brand. They want to build a brand, they want to do research, they want to do commercialization, and they want to do distribution. Not possible. The smarter thing to do is find somebody who is willing to license the IP, per tube pay, whatever is available, take it. So, ma'am kar rahi hai, okay, very good. So, why is that better? Why is that better? Ma'am has full professorship here. She is on a tenure track here. She has a nice bungalow. E or F series में in PU. No, it's G series. G series. Next vice chancellor. Next vice chancellor. Chalo, very good. Oh yeah, ma'am is dean. I forget. My mother also grew up on the campus, so I'm very familiar with the housing layouts. So I think it's a niche area which I have expertise in.
certainly. You can't venture into other areas. Yeah, but I have known of incidents where professors have also left. When you look at deep tech in the space tech, IIT Madras Research Park has professors who have maybe 2 or 3, I would say, nearing to be unicorn kind of companies, including Agnikul. So, I also want to emphasize that the professor-student collaboration from a commercialization perspective is also something very interesting. Because the students have the energy, the teachers have the expertise and the R&D know-how, which the deep tech expertise needs. और उसका ये नहीं मतलब कि प्रोफेसर को 80% दे दिया स्टेक और अपने लिए 20% रख लिया, वो भी नहीं करना. यू हैव टू नेगोशिएट हार्ड. ठीक है, प्रोफेसर होंगे आप सर, कॉलेज में बाहर मिलेंगे बरिस्टा में, अब आप बताओ व्हाट विल यू ब्रिंग टू द टेबल. हाँ, व्हाट यू विल ब्रिंग टू द टेबल. But I personally think that's a potent combination. Now let's say you had somebody in the School of Management here, and he has expertise working for Lakme or Imami, and he says, ma'am, I'll take your product and we'll do full service. We'll become full stack. That is a model. But I would say the licensing, and Pratik talked about the commercial models, he talked about licensing regimes and how you track that. That I think is a brilliant option for a lot of the science people. Especially those who are on the R&D track. I would also emphasize on that. The reason for that is, like I have mentioned in the deck, they require, typically deep tech ventures require 3 to 5 times more money than some of the other startups, because the commercialization also takes time. Now what typically happens is, a fund has a life cycle of 10 years. उस 10 year एक fund life cycle में पैसा raise करके deploy करके growth करनी है. Now that honestly is not possible in deep science. How many of your research projects, ma'am, have probably at TRL 3 from the last 5, 7, 10 years, right? Several years. So the fund, that's the other issue. The fund life cycle does not fit well with deep science. And the regulators at the funds, which is people like SEBI and all, they also have this challenge that they don't give fund extensions. So you have picked up money and you have to give a return in a certain period of time. So how do fund returns work? I think it's important for you to understand my side of the business model also, so that you understand how we give valuations, how we return the money and how we make money. A fund manager will make 20% of the return. आपने 100 रुपए की कंपनी बेची तो 20 रुपए मेरे को मिलेंगे. आपने 1 रुपए की बेची तो मुझे कुछ नहीं मिलेगा. So basically a fund has to return 3.2 times before I can make any money. अगर मैंने 1 का 3.25 नहीं किया, I will not make money. So by business model you need to understand why, because you will need to understand कि मैं आपको कब पैसे दे सकता हूँ, because you all think that you have a very innovative idea, but reality में it might not fit with my business model. अगर मुझे लगेगा ये commercialization 10 या 12 साल है, I cannot, मतलब even if I like the idea, I will not be able to do it, right? So what is the workaround to this? The workaround is obviously grants. The idea is to work with more R&D intensive, where you can leverage your professors. You can do all of that. So critical to do that. Important to understand that. Now, one of the things which you ask most of, when I go for these lectures, I get to ask is, अगर आप इसको deep tech के point of view से देखोगे, seed stage में typically you will get, India में अगर आप देखोगे anywhere between 1 to 5 crores, plus you can get some non-dilutive grants. Okay? और उसमें एक चीज़ याद रखना कि जो पैसा है, if you want to pick money, money is only given to a private limited. Neither partnership nor LLP, not a registered partnership. इन तीनों एंटिटीज में पैसा सिर्फ प्राइवेट लिमिटेड में मिलता है. अ वेंचर कैपिटल विल, अच्छा, ग्रांट्स यू कैन गेट इन एन LLP, but you can't get venture fund. So in lot of these schemes of the grants are getting more and more tough. So don't be very cagey about dilution in the initial stages, because if you don't have the money, your idea is in any case not going to fly. So you need the capital. So उसका ये नहीं मतलब कि आप you give away 50% of the company. At each of these stages, expect between 15 to 22 to 25% dilution in every round.
अगर आप IPO पे देखो या typically in an IPO stage you look at the founders, they will typically have about 15 to 20% in aggregate. मतलब अगर 2 या 3 founders हैं, they all at an IPO stage typically will have between 15 to 20%. There are some exceptions where founders have held more than 50%, but those are far, those are not very easy to come across. नॉर्मली एक फंडिंग के लिए कितना क्यों परसेंट के लिए नेगोशिएट करना चाहिए? 15 से 22. फंडर के लिए नहीं आप टोटल टोटल नंबर, राइट? total number for the round, for the round. Somebody yesterday we had somebody on strategizing and he mentioned that हाँ. you will have to raise funds very frequently हाँ. initially, शुरू में 3-4 बारी आपको फंड रेजिंग करनी पड़ेगी. तो typically मैम what I recommend people is कि आप you look at the whole plan, कि what is the amount you need for about 24 months, let's assume, और उस अमाउंट से आप 20% डाइल्यूशन कैलकुलेट कर लो. दैट इज द मोस्ट प्रैक्टिकल थिंग यू कैन थिंक ऑफ. और उसके अकॉर्डिंगली हाँ, क्योंकि आप वैल्यूएशन वरना आप see what happens is space tech में for example you need to have higher valuation. Why? Because your milestones require larger capex. So what will happen if you start diluting for very small amounts, then it's a bit of an issue. तो फिर उस केस में स्मॉलर अमाउंट्स के लिए डेट फंड्स लेने चाहिए. डेट फंड्स मैम कैश फ्लो पे मिलते हैं, वरना नहीं मिलते. वो डेट फंड्स वर्क फॉर कंज्यूमर. फंडिंग तो जब भी आएगी हाँ. कोई शेयर अगर आप डीप टेक फंड्स देखो इंडिया में, देयर इज अ सिवियर पॉसिटी ऑफ डीप टेक फंडिंग, सिवियर, बोथ फ्रॉम. हाँ जी, हाँ डीप टेक नाउ ऑफिस ऑफ द साइंटिफिक एडवाइजर हु इज आल्सो अ PU alum. हाँ, and Sood also. So I think he's a physicist, right? So they are, I think there is a 10,000 crore allocation, but अगर आप reality में देखोगे, these schemes take multi years to actually come down and percolate because they need cabinet approval, and then a bank is appointed as an entity. There's a nodal bank. Typically it is either SIDBI and Canara Bank has had a fund of fund. But allocation, when it starts to bubble out, typically between the announcement and this thing, you will see that there is a 12-month cap. And when you actually start doing a withdrawal of capital also, then you will also see that there is a bit of a challenge, right? So when you look at a deep tech venture, I've kind of mentioned it here, but what do they look for? They look for expertise. So proven expertise in the deep tech space. So I'll give you an example. We invested in a deep tech AI company. What did we see? One of the founders had a PhD from IIT Delhi and she had done her postdoc. And the other husband had a more technical background, but he had the ability to run, build. So what do we need? A balance of commercial and technical acumen. So commercial acumen ho jayega, but you don't have product and deep science background. What will happen? The product will not get rolled out, or you will be dependent on employees and you will get taken for a ride. If you have too much deep tech, then you have no ability to commercialize. So finding that balance, the VCs look for that. I go to several of these IITs, I go to triple ITs also, same problem. Very heavily leaning towards either AI or on the product. Just because you have built something, people will not come and see, buy it. अगर दिल्ली वालों को पता नहीं है ना कि आगरा में ताजमहल है, कोई नहीं आएगा देखने. No one will come. So it's very important to build the commercialization. Now product market fit in deep science na, that has a very different, in every deep science sphere it has a different connotation. अगर आप सॉफ्टवेयर डीप टेक में लो, PMFS typically means $1 million in revenue in one segment, and that you have a repeatable motion of being able to sell in that segment. अगर आप chatbot बना रहे हो and the chatbot is replacing call center workers, so इसका ये नहीं मतलब आपने कहीं और बेच दिया और you have another 500,000, that is product market fit. So the ability to replace a call center worker with that reaching a $1 million in revenue, that is what is called a product market fit. Now in deep science, those are biosystems and deep tech in let's say space tech have very different milestones,
And usually you will find in the first 7 to 8 years, those are very research oriented milestones. But they're all towards a focus on commercialization and launch. Those are important things to do. We talked about it. Deep tech ventures burn 2 to 3 times more money. Obviously, because वो R&D intensive है. And you know what? One of the things we also see with deep tech is they also need more money for experimentation. They also need more money for prototyping because things fall. Certain tests don't calibrate or work out the way they have to. I'll give you an example. Let's take the AI race. That AI race, India is not even in the running. Even in the US now, what happened there? US maybe they are using Chinese models in AI. Why do you think? Any AI person here? Anybody who's interested in AI? Anyone here? Or somebody who's keeping track? Yeah. Why do you think the Chinese models are working out well? Inferencing cost हो सकती है cheaper. But what else? But why are they being? What did China do as a geopolitical strategy which had a serious impact on the American AI strategy? What did they do? Government, but you know they released open source models. Now you would, DeepSeek and all. So you would argue that even the Meta models, the Facebook models are open source. But are they truly open source? They're not. Why? Because they don't publish weights. So what happened? It was actually a commercial hit on the US AI industry where the Chinese models started releasing the weights, which means you can calibrate the model based on your requirement. So if you want to analyze protein structures, you assign a different weight to it in your lab. Now with the American models, you couldn't do that. As a result, what has happened? A lot of the American software companies have started consuming Chinese models because they can calibrate it to their requirement. Now, given the kind of engineers we produce and the kind of R&D facilities we have, we should have been the third also ran in the whole capability set, but that has happened. So we are actually in a lot of the capabilities we are fairly behind. We talked about this that in India, in spite of a lot of the schemes, I think Piyush Goyal heavily jolted the industry in the right manner few months ago, where he said we need to stop building consumer apps and start going on the deep science. But reality is we have the R&D infrastructure, we have the educational institutes, we have institutes of eminence, but not easy to, we don't have commercialization capital available for either transfer of technology or even building venture scale companies out of that. That is not possible. And I give again the space tech example. There is a military industrial complex in the US who can buy space tech from space tech startups. There is NASA who has a commercialization angle, but we don't have the equivalent in India. So when you look at deep tech ventures, purely from VC's perspective, why they haven't been funding a lot of ventures in India, especially here, it's basically three things. One is the commercialization. We talked about it. Some of these things take 7 to 8 years even to see the light of the day and have the ability to reflect. That obviously is a problem. The second is exit track record. I have a 10-year fund life cycle. How do I find a way to how do I find a way to exit that? That's an issue. And obviously the technical risk assessment. So, when we look at, we invite scientists like you and, we read papers, but there is a serious gap in terms of trying to understand the commercialization possible. Now in deep science, the scientist has no idea because he's focused on the deep science solving the problem. The VCs have no idea because they cannot be experts in 10 fields also. So there are not experts available whether how this will plan out in the future. The pharmaceutical industry is a great example. They're also governed by power law. One molecule, $1 billion. But they do multiple experiments to reach that one molecule.
I've also briefly highlighted this, the missing business co-founder. So if you build a deep science venture, please find somebody you can help commercialize, and he should be able to articulate the value proposition of what you are doing. That is also very critical. So typically I've seen this with tech, they'll find a very salesy person, but he has no ability to understand what the value proposition of what the software is trying to do or the problem you're trying to solve. That also becomes an issue. So business co-founder, but with deep understanding of the domain. And this is a very major problem. The scientists talk in their language, the VCs don't understand that. Now if you come and tell me I have published a paper in Nature, it's all Greek to me. I do know that Nature is prestigious, I'll give you some credibility for that. And if you say I have published in these many peer level, but will that help me write a check for you? The answer is no. We talked about this. The basic idea is, if you can find grants to build your prototypes, that is the right thing to do. And there are enough number of grants available. The issue with grants is, I think grants are today restricted or available between 25 to 50 lakh kind of a range typically, and you can only get one grant from one of the schemes, you can't go for two. You can get in Crores also. Success rate is very low. Yeah. I know, for example, some of the IITs now, like IIT Ropar has a 200 crore fund, so now they can give a slightly 400 crores. one project is 400 crores, Haan. another is 120 Crores, yeah. So they have large. University, we don't get such funds. We are a state university. but we are doing very well. You are a state university or you have a central? No, we are We are state. something. हम ना धोबी का कुत्ता ना घर का ना घाट। Interstate university. So I thought the vice president was the visiting fellow here, right? Yes, the vice president is our chancellor. Chancellor. हाँ. प्रॉब्लम है कि भी हम है स्टेट यूनिवर्सिटी में, we are interstate university. Interstate. Okay. हाँ. They हाँ. university. Yeah. I call myself a they university. चलो. Seeking discounts, seeking funds. But yes, when you go to DST and other places, they think we are a separate university. So among the things which I'm going to just take another 5 minutes. Now, what are the things that need to do is basically speak human, not scientists. The articulation of what problem you are solving. Typically you will find that the people who are more successful are able to articulate in very simplistic terms. Because let's face it, the people who are writing you a check, the people who are trying to commercialize it, they will not understand that. The other thing I tell them is not relevant for, again, some of the fields in deep tech, but especially in the AI side of deep tech or the emerging tech, it's possible that you can convert your pilots into more paid customers. That should be a heavy emphasis, making sure that you first get pilots, you get paid pilots, and then you are able to convert them to customers. Very important to do that, because these are all confidence building schemes in the mind of the VC. When I see that you have pilots, then I see whether you have paid or unpaid pilots, and then they're converting it to customers, or the customers are saying, you get me this XYZ functionality, or show me as part of your roadmap, then I'll be willing to write you a check. Can you elaborate what is a paid pilot? Paid pilot is where so typically what happens is you build something and you say, I think this is the problem it can solve. Typically with startups, the buyers of technology who are using it, they will say, you can do a free pilot. In a paid pilot, you actually pay for the whole customization and contextualizing. That's the difference. So, अगर मैं pharma के context में सोचूं, हाँ. तो pilot is something I have It a could technology and I build a product. pilot in your case would be a clinical trial. Clinical trial or getting it हाँ. Manufactured, scale हाँ, up उसका मैं. scale, हाँ. You could do that. You can say कि I have brought out. हाँ. Skill से पहले तो हाँ. pilot skill study. Preclinical would not fall in paid pilot. In the US, you would get a grant. In the Indian context, you'll unfortunately few stages have to be integrated. Huh? Mashed into it. Yeah, I'm glad Pratik is agreeing with me. Yeah. वो इंडिया में ना सब धंधे वाले हैं, वो मतलब they need to see a return, which is good and bad both. The bad part is when you look at the AI race, we failed because of this attitude. Because we are all carpenters, ना, हमें architect बनना ही नहीं है. And the AI race was all about being an architect.
the numbers of the business development? Numbers in the sense कि हाँ इसकी इतनी market है इस product की, या do those numbers help? So I know Prateek talked about the TAM SOM SAM model. So the only thing I have to add to what Prateek said was, हम क्या करते हैं, we take the TAM and we say we'll be able to hit 1% of that, and that's then 10,000 crore. That's actually not going to be the reality. So the SAM model has to tie in with your go-to-market model. What that means is कि अगर मैं एक आपने let's say you brought out an ointment for certain skin problem, you have to say there are 10,000 chemists. Out of that, I'll be able to target 200 in the first year. So I'm talking of a geographical region. It could be as well as yeah. chemists. Basically, it depends on one, how many you are able to produce. Second, how many doctors are able to prescribe. Third, how many chemists are you able to reach from a supply chain perspective. That is SAM. Not the ability to say कि 10,000 की 1% में लेके तो 100 crore का business हो गया पहले साल में. That is not the case. That is what VCs catch on to. Yeah, these are basically we talked about. Now, the interesting part about deep tech ventures is when they scale far better than any of the other segments. Probably next to consumer tech. And there is another example. When you look at the consumer tech, there are typically you will find that there are duopolies being established. So you have a Swiggy and Zomato. There is no third also ran. Even at a city level, you will not find a third also ran. Deep tech में वो power law इतना extreme नहीं है. Consumer में there is an Uber and a Rapido, or typically you will find Uber and Ola. You will find there are duopolies in each of these sectors. Deep tech में you can get far better outcomes, and you can have multiple crores in niches, which is possible because there is enough commercialization available in very specific areas also. That is the thing. The other thing we've seen from data, and this data is all PitchBook data, which I'm talking about. There is a valuation premium also because of the R&D side. You will find that the valuation of deep tech ventures are 3 to 4 times of typically other companies, because they get why is that the case? Because VCs understand that there is defensibility and moat. It is a 10-year period that another company will take to catch up to that. So they are willing to pay that premium for that defensibility because they know other person will take few years to do that. So that's the other advantage with deep science, which is not easy to do. So with that, I'm right on time actually. We have time for questions. Yes. Yeah. Another 5 minutes. If anybody has any questions. Come on, ask. Future startups, और जैसे पहले प्रतीक ने बोला low risk and मतलब like high risk taking capacity. So what about the older generation? मेरे जैसे लोग जो retire होने वाले हैं. So you have to mentor the students on their R&Ds. दोनों हैं. I think age is not a defining criteria, but actually deep science startups cannot happen without scientists like you. It's just humanly not possible. Because you know instinctively what will work in a laboratory environment, which will not. That is the edge you bring. Plus, I was reading somewhere that the integrity to any deep tech startup and कोई जिसके लिए आएगा उसमें भी वो चाहिए थी. I told you the startup I invested in. It was only because the lady had a PhD and a postdoc in the AI field. So I knew, and that's exactly how it has turned out to be. That is now my fund returner. So, but you say that the team has to be a mix of a technical person. So they had that. They had that, and they had a paid pilot with a large automotive company. Yeah. Why doesn't one go for a bank loan instead of going to a VC? Bank loans you don't get in non-cash flow companies. So the only reason why because it's high risk capital. But banks have now started becoming limited partners. So limited partners are investors who invest in the fund. So some of the banks have started doing that now. But bank unless you have profitable for a year or two, you don't get bank money.
There are certain schemes where for unprofitable also you can get certain like CGT SME, which is half the government take the risk but half underwriting is done by the bank. उसमें भी it is very hard because government का underwriting तो आपको मिल जाता है because they want to promote employment and they want, see, the government is very astute. They understand this is the only place now which will raise employment. They understand that. That is why you see the Prime Minister so focused on the startup side, because this is the only sector which has ability to do mass employment. It's not manufacturing, it's not services anymore. Young graduating kids like this demographic dividend we have sitting right here, they are not going to work in conventional industries. Opportunities bhi nahi hai. That's why there is a lot of focus on startups. And you know, startups typically require risk capital. Skill India is more for junior, but yeah, it's important because you have to bring informal people also to the formal labor. See what happens is, sir, I'll come to you. What happens is as the country progresses, starts becoming wealthy, the lower end of the jobs nobody wants to do. That's why you also see this immigration from Nepal and Bangladesh happening. It's actually, I look at that in a positive sign. Ki my own workforce is getting trained for doing higher end jobs. मैं जो कह रहा था अभी, we are talking about deep tech नहीं है. In fact, even basic AI जो है, हाँ जी, वो भी बहुत ज़्यादा नहीं है sir. I'm in complete agreement with you. But the reason is कि I am one of the experts with STPI. हाँ जी, मौली में. Right. I'm a biotechnologist. हाँ जी. Not much knowledge, literally no knowledge about AI. Right. पर वहाँ भी just to let you know, फंड्स देने पड़ते हैं आपको 20 lakhs. हाँ. वो भी कई बार होता है कि यार दिस इज नॉट अप टू द मार्क, कुछ भी नहीं है इसमें. अगर वो फंड ना दे तो एसटीपीआई को पैसा गवर्नमेंट बंद कर देगी. वो स्कीम वो हाँ. बड़े सब स्टैंडर्ड प्रोग्राम्स इवन इन एआई आ रहे हैं यहाँ पे. पर्सन लाइक मी कैन मेक आउट हियर, इसमें कुछ नहीं है. बिल्कुल कुछ नहीं है. व्हाट टू टॉक ऑफ डीप टेक. Sir, I 100% agree with you. Now let's look at AI in your field. Biotechnologist, आजकल तो मैथ वाला person will be a better biotechnologist today. इंडिया में बायोटेक्नोलॉजी फार्मा जो है बहुत बढ़िया है. हाँ. But what I'm saying is the gap between these people and their exposure to the commercial end. हाँ. When we talk about US में क्या है कि भी वहाँ पर professor can have his industry also. हाँ. He can be director of 5 companies as well. बिल्कुल. तो यहाँ नहीं है. यहाँ पर प्रोफेसर की सैलरी फिक्स. वहाँ पर सैलरी फिक्स नहीं है बड़े उसकी. हाँ, for your own research projects. आपने कुछ कमाना है, प्रोजेक्ट्स लेकर आने हैं, उससे कुछ सैलरी इंस्टीट्यूट की देनी है, बाकी आपकी. मैंने 8 लेक्चर्स लेने हैं, 10 लेक्चर्स लेने हैं इन ए वीक. मेरी ड्यूटी खत्म यूनिवर्सिटी के साथ. मैं कुछ भी करूँ. And they only teach 12 credits per year. घोड़े एंड गधे, इट्स अ सोशल सिस्टम. पर हमें ये चीज जो आप कह रहे हैं, इंटेलिजेंस से कम नहीं है. हम ही लोग वहाँ जाके पढ़ाते हैं. राइट. सिलिकॉन वैली हमसे भरी हुई है. राइट. 12% डॉक्टर्स इंडियंस ही हैं वहाँ पर. कॉमन कुछ भी सब निकल आए तो क्रैश हो जाएगा सारा. बट वो चीज़ें हमारे यहाँ पर नहीं है. टीचर्स को भी ओपन करो ना. इसलिए वो सीखेगा कमर्शियल एंगल. जब उसकी तो सैलरी फिक्स कर दी, हाँ जितना ही आगे सर्टिफिकेट मिल जाएगा, हम ताड़ियाँ मार देंगे. इससे ज़्यादा कुछ नहीं बनता. So that is behind that, but you people are very intelligent. You are in this university, maybe from some other universities also. पर बेटे आप में बहुत टैलेंट है. So look into the startup aspect. Look at the startup aspect. अगर परमिट करें क्या एक अलग सेशन लगा देंगे कि what is involved in becoming a startup. आपको जो है ना आइडिया नहीं है. So हम प्रोग्राम्स करते हैं. 6 month program में start. We are doing that. We are starting one from August 1. Okay? Just October 1. To give you an idea कि बेटे startup क्या है. We'll handhold you till you are up there. आप इन्वेस्टर से मिला दिया, पैसे मिल गए, जहाँ भी आपको जरूरत होगी. So he is a part of that. Pratik is part of that. और भविष्य का तो मुझे भी पता लगा है. So we'll talk to you. हाँ जी. So look into this aspect. जो सर ने कहा ना कि अगर आप बीटेक या एमएससी या एमफार्मा के बाद आपके पास रिस्क का चांस है बड़े 1-2 साल. Going for a startup, experience लो उसके अंदर,
अच्छा चल गया तो गुड इनफ, नहीं है तो यू कैन कम बैक। और अगर आप इंडस्ट्री में चले गए कुछ और जॉब के लिए, देन यू आर कमिंग बैक, वो शायद मुश्किल हो जाएगा। नौकरी लगी हुई छोड़नी मुश्किल हो जाती है. हाँ. So, what is the difference between a startup and a spin-off? I don't know, it may sound a stupid question, हाँ. but Spin-off, what happens is spin-off is from an existing company. Let's say they found something more interesting and they have the ability to raise money in that, or they think that entity will, as a commercial entity, will do better than the combined entity, then a spin-off happens. and क्या एक startup केवल licensing भी कर सकती है? बहुत होती है एक्चुअली, यूएस इज फुल ऑफ, बट हाँ उसके लिए फिर वो यू ऑल्सो नीड टू हैव पेटेंट प्रोटेक्शन मसल. IPO and वो I have a startup in the geospatial analytics space that GIAN went down. से लेके 7-8 तक आपके पास हाँ, technologies हाँ. हो. So you just pitch your, but वहाँ पे भी तुम्हें टीम चाहिए finance वाली और वो सब. वो मार्केट में there is enough. That ecosystem now in the Indian market is well established. So you hire a strategist and a हाँ, but there are plenty of people to advise. हाँ. टेक के पास अपना अपनी टीम बना ली है, एंजल इन्वेस्टर्स की टीम है, और जो इन्वेस्टर्स हैं, वेंचर कैपिटलिस्ट हैं, वो सारा नहीं, वो प्रॉब्लम है. You don't worry about that. ठीक है. So वेंचर कैपिटल पैसा देखना होता है कि हाउ टू कन्विंस दैट. बाकी अलग डोमेन से होता है कि उन्होंने किसी में लगाना. वेंचर कैपिटलिस्ट की भी तो होता है ना कि मैंने इसी फील्ड में लगाना. अगर सिर्फ लाइसेंसिंग की करनी है तो ज़्यादा पैसे भी नहीं चाहिए, फिर उसके इसमें क्या क्या पैसे. And that you always focus on the R&D, na? You just graduate to doing something else. Licensing, I mean, you want to sell off your startup, की बात कर रहे हो? स्टार्टअप के अंदर अगर मैं अपनी टेक्नोलॉजीज में यूनिवर्सिटी itself. नहीं, जब आपका स्टार्टअप हो गया है तो यूनिवर्सिटी ने परमिट कर दिया है कि यू कैन हैव योर स्टार्टअप. सब चलते हैं. हाँ, बस वो जो पॉइंट में रह जाएगा ना कि जो स्टार्टअप बेस्ड इन पंजाब यूनिवर्सिटी है उससे सब टर्म करके we can look into that, but एक भी स्टार्टअप यहाँ बैठा है, आपने पैसे दिए हैं उसके लिए, तो that chamber nothing beyond, सारा कुछ स्टार्टअप है. Any quick questions? You have people right here वो कभी नहीं. Yes, Okay. I think there's somebody at the back. Right. Great question. So, when a fund manager invests ना, एक टेक्निकल टर्म हम यूज़ करते हैं, व्हाट इज़ कॉल्ड अ रिटर्न द फंड कैलकुलेशन. ठीक है, तो यू आर ऑल फेमिलियर विद द 80-20 रूल, पैरेटो रूल होता है. तो उस पैरेटो रूल में क्या होता है कि इफ़ आई इन्वेस्ट इन 10 कंपनीज, उसमें टिपिकली 2 चलेंगी, 6 एवरेज होंगी और 2-4 बंद हो जाएंगी. ठीक है, तो इसमें हम 2 चीज़ें करते हैं. व्हाट वी डू इज़ वी मेंटेन अ मिनिमम. सो अगर मैं 1 करोड़ दे रहा हूँ, टिपिकली आई विल टेक अ 10% स्टेक. उसमें ये है कि ये 10% की वैल्यूएशन 2 कंपनियों में इतनी बढ़ जाएगी कि इट कैन रिटर्न माई एंटायर फंड. ओके, सो लाइक आई सेड, अगर मैंने 1 रुपया लगाया तो आई हैव टू रिटर्न दैट एज 3.25 रुपये. ओनली देन आई विल मेक मनी. सो दिस इज वन कैलकुलेशन विच आई विल लुक एट इट फ्रॉम अ वैल्यूएशन ओनरशिप परस्पेक्टिव. तो मैं कंपनी को कभी भी वैल्यूएट करूँगा कि यार इसमें कितना ले सकता हूँ, इसका क्या सिनारियो होगा, कैसे ग्रो करेगी. दैट इज़ वन कैलकुलेशन. Then there are the only metrics, because I invest in the early stage pre-seed and seed investment, तो उसमें founder is about 50% of the qualifying criteria, and another I would say about 25 is the market. आप क्या बना, अगर आप मेरे पास अभी आओ और मेरे को बोलो यार I want to build a Swiggy just for Chandigarh, you will not get money, क्योंकि the market has already voted for the winner there. So 50% criteria on the founder, 25% on the market, and 25% is on ability to build a business, how attractive is that sector, उस सेक्टर में आगे लेट स्टेज डील्स हो रही हैं कि नहीं हो रही, प्राइवेट इक्विटी का पैसा आ रहा है, बिकॉज मेरे को भी किसी को एग्जिट करना है लेटर ऑन. सो दीज आर द सेट ऑफ फैक्टर्स विच वी टिपिकली ऑब्जर्व. Any other questions? Come on. You may not get such experts फिर से. कुछ भी क्वेश्चन जो मन में है. You want to ask something? नहीं? You want to go for lunch? So thank you everyone. Thank you so much.
Thank you so much, Bhavesh ji, and I'm grateful to Guru to have suggested you. And मैंने जब बुलाया था तो मुझे नहीं पता था ऐसे वाले experts मेरे पास आ रहे हैं. So I'm really, pleased and delighted to have people like you. Thank you so much, and we will stay in touch. और आप सब लोग को भी मैं भावेश जी की तरफ से अपनी तरफ से बोल रही हूँ कि even if subsequently you have questions, maybe we can connect with him and talk to him specifically. Yeah, so thank you so much, everyone. And now we can quickly go for lunch and get back at 2. And we have a certificate, sir. Give me a big hand, boss. Yeah. Thank you. Thank you. We'll move for lunch हाँ जी, to the हाँ. university guest house. Across the road, na? Guest हाँ house? जी, across the road.
हैं डॉक्टर मनु के दोनों तो ਉਹੀ इकट्ठे ही कर ਕੁਛ दिंदे अनाउंस है ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਬਸ ਐਂ ਰੱਖਾਂ हाँ ठीक है तो सो गुड आफ्टरनून एवरीवन। आई थिंक आज हम आगे चले उससे, जब हमारे पास टेक्नोलॉजी है उससे आगे क्या करना है हमें, हाउ टू रेज फंड्स, हाउ टू थिंक अबाउट अदर थिंग्स जो डायरेक्टली हमारे डोमेन में नहीं है, जो हमें स्किल सेट एक्वायर करना है. सो कंटिन्यूइंग इन दैट, सो वी हैव दिस tutorial designed for you where we'll be talking, we have two resource persons who will be talking about assessing the market readiness and the commercialization potential. So we are very fortunate to have with us Professor Manu Sharma, who is a senior faculty at University Institute of Engineering and Technology. Some of you might already know him. He is a professor of mechanical engineer, but more than that, he is heading the Technology Enabling Center. We had a talk earlier by Mr. Prateek, and now we will have two presentations, and the other person along with him is Dr. Virender, and he is also a manager at Technology Enabling Center. And Dr. Manu is also heading the Center for Industry Institute Partnership Program at Punjab University. And he has worked relentlessly to bring the startup culture to Punjab University, not only for the students, but for the faculty as well. And he brought in new rules and regulations to how to, formalize that the faculty can also have startups of their own. Again, that is a very unconventional step which Punjab University has taken, and Punjab University has always been the, I would say, the torchbearer for new things. And I feel very fortunate to belong to Punjab University as a faculty, जहाँ पे कि if you want to do anything, nobody stops you. किसी भी एरिया में कुछ भी काम करना चाहते हो तुम्हें, तो कोई रोकता नहीं है और फैसिलिटेट भी किया जाता है. सो दैट इज़ ऑल्सो अ ग्रेट थिंग अबाउट एनी ऑर्गेनाइजेशन. सो गिवन एन ऑप्शन टू गो समवेयर एल्स, आई स्टिल प्रेफर टू स्टे बैक एट पंजाब यूनिवर्सिटी एंड बी अ फैकल्टी हियर. Of course, her organization ki, like, if nobody is working, then also they don't force you to work, but काम करने से तुम्हें कोई ना रोके, एंड किसी भी एरिया में तुम काम कर सको किसी से परमिशंस लिए बिना, कोई ऐसी बात नहीं है. मोस्ट ऑफ द रिसर्च ऑर्गेनाइजेशंस, दे हैव देयर मैंडेट्स, दे हैव टू गेट अप्रूवल्स फ्रॉम देयर डायरेक्टर एंड थिंग्स लाइक दैट. सो नथिंग लाइक दैट एग्जिस्ट्स एट पंजाब यूनिवर्सिटी, एंड यू हैव द ऑटोनॉमी if you want to work. So that's the greatest thing about Punjab University. And Professor Manu is one of those persons who is setting up that ecosystem, that culture at Punjab University. So beyond that, he is a strong advocate of innovation-led academia, and he has been the one to bridge the gap between intellectual property and technology transfers. The Tech Enabling Center is regularly holding conferences, workshops, where they educate, they train, they motivate, and they introduce the faculty as well as the young students to, do various different things beyond research, beyond publications, and also beyond patents. So he has been the developer of the armor wire tester, which has been transferred to Oceaneering International Services Limited. So बाकियों को भी grow करा रहे हैं और खुद भी, he is doing his bit as well, and he has facilitated several successful technology transfers. He has leadership. He is providing leadership in innovation and entrepreneurship, and under his leadership, Tech has created 16 startups in the past 8 months. So churning out 2 startups every month, that's a big thing, and which some of them are really deep tech ventures, and he has organized 3 tech transfer conferences. I have also been part of a few of them, and they are starting, as Professor Rupinder Tiwari mentioned, they are starting a new workshop which is in a hybrid mode
which would start 1st of October till sometime in February, where you have different lectures, which online as well as offline, which you have to attend. And he has led 200 industry shop floor visits, systematically assessing the needs of the industry and how we can, bridge that gap. And as I said, he's been working for the policies for industrial consultancy ratios that have also been improved from 50-50 to 70-30, as I said, and then 80-20 for the tech transfers and royalties. So he has strong research and academic credentials, and he did his PhD from IIT Delhi in active vibration control, authored several papers, book chapters, and he has 3 patents to his credit, and successfully executed multiple DST and AICT and industry funded projects. And the second resource person for today's tutorial is Dr. Virender Singh, who is currently working as the manager at DST Tech, as I said, and he previous to this, he worked as research associate at Amrita School of Business, Bangalore, and also served as an assistant professor in several reputed institutions. He has contributed significantly as a project scientist in 2 major government-led projects, and has successfully transferred PET recycling, PET recycling technology to industry, and over the past year has been actively working with DST Tech, and I also had the honor of meeting him several times to, build up decks for my technologies and things like that, and he's been working in the domains of industry academia linkages, organizing national level conferences and consultancy projects. So over to you both, Hansu. Thank you so much, ma'am. No, I don't think so that it isn't required. Yes. So, good afternoon, all. So, for this session, the topic is assessing market readiness and commercial potential. So, you have already covered the topic which is related to the technology readiness. I hope you are quite aware about the different levels of the technology transfer, yes or no? So right now, I hope you are quite mature to understand and to know about and to match make the technology at which level presently lies. So from 1 to 9, there are 9 basic levels. So I hope you can now available to assess the right maturity of the technology. Yes or no? Okay. So before moving forward, the topic is the market readiness. Many scientists are aware about the technology development from the research point of view to the development level, and it goes to the towards the deployment level, right? So the main problem basically lies to the or the challenges that the industry the scientists face that after the TRL4, which is when the prototype is developed at the TRL4 stage, and then the value of death comes. And what do you mean by the value of death? So I think this is a tutorial, so we must have a very interactive session, so that I also request you to please do participate, whatever the queries I would like to ask, and whatever from your end you want to ask, then it will be happy to schedule this session in a very effective way. So anyone of you who would like to say about that, what is the value of death? Yes, please. Yes. Any other? So at the ideation stage, when the scientist got the idea about developing the technology, right? So he has well-established fund from the various government agencies, right? And they can develop the product at the TRL4 stage, right? At a prototype that we can develop, right?
But after that, the industry the scientist needs the industry for collaboration, right? And that there comes the valley of death, right? So they do not find the right industry so that they can provide the hand-holding support to take that technology further towards the development and the deployment stage. Deployment means, anyone? Commercialization of the technology, towards the commercialization, right? And development, that means the mature product should be developed from the TRL4 to the TRL5 to the TRL6, right? Or 7, right? Then at the 7, we see that the pilot scale plant can be developed, could be developed. So I hope you are aware about these, the levels of the technology readiness. So what is market readiness? Anyone? Anyone who would like to say a few words about the what is the market readiness? Ready to enter into the market? Yes. Anybody else? Mm-hmm. Anyone else? To prepare the product for the market fit, right? So what is market fit? Yes. Mm-hmm. Mm-hmm. Basically to fulfill the need and requirement of the market, right? And what is our objective here? Objective is to successful commercialization of the product that has been developed by the scientist in the laboratory. Yes or no? I am right or wrong? Right? So this is the market readiness. Yes, last. No answer? Okay. So as I already told that many scientists are aware about the technology, but they are not quite aware about the what is the market and how it behaves, right? So many technologies fail because of the poor market sense, right? And many technologies will remain in the vault that they could not get into the scientists could not get it into the market, right? So due to the poor sense of the market. So today in this topic, we are going to cover what is the market readiness level, what is the commercialization readiness level, what are the market size, how to calculate the market size. Then we have the SWOT analysis, strength, weakness, opportunity, and challenges that we are facing. Then next we have is the, there is a success story that in past few months back, we have transferred the PET recycling technology to the industry, right? So I will completely share the details about what basic process that I have followed for the transfer of the technology. And there are some few exercises that we are also going to cover, right? Regarding the experimental or the mathematical calculation, how we can find the TAM, SAM, SOM, and the other things, right? So before moving forward, we have three things to cover. One is the TRL. That is the technology readiness level, which is given by the NASA. Yes or no? What is NASA? National? International. What is NASA? Any full form of NASA? Aeronautical? Space? Okay. Administration, right? So NASA have given the level of the TRL to assess the technology, right? So let us understand what is the why this TRL level has been given, right? TRL measures the maturity of your technology, right? How mature your technology is. कितनी mature है आपकी technology, right? Market में आने के लिए. Then we have the are you in the early ideas and research stages. So basically there are three stages. One is the research stage, second is the development stage, and third is the
deployment stage, right? When the product is ready to commercialize into the market. So three things have been covered in that. So research stages, and has your technology been validated and a prototype has been made, or once your technology has been tested and validated with the customer, it is ready for the commercial production, right? So TRL समझ आ गया सभी को? Okay. Then commercialization readiness level. Two things has been introduced by the Niti Aayog in new draft policy, which suggests that two things must be taken into account similar to the TRL. And what are those? One is the commercialization readiness level, and second is the market readiness level. So commercialization readiness level is approach designed to give a framework for assessing a technology commercially ready, primarily for the goal of bringing it into the market. Understood? समझ आ गया ये? This encompasses market analysis. क्या क्या चीजें रहती हैं इसमें? Market analysis, cost effectiveness, scalability, regulatory compliance, which are often not addressed by the TRL system. That means what is the basic difference between the TRL and CRL is that these things are not being covered in the TRL. Similarly, the market readiness level is refer to how ready your product or service is to come into the market. The MRL scale is intended to supplement the TRL and CRL. Both the TRL and CRL are complementary to each other. That means both having the same objective to successfully commercialization of the technology. That means what is our goal? To successful commercialization of technology. Got it? So these are the basic three things which are must be taken into account before moving forward. So this is the basic technology readiness level, which having the 9 basic principles, right? So first is the principle, very quick recall, right? Basic principle, observe and report it. That means the idea came into scientist's mind and that he started preparing whatever the documentation he has. Second is the technology concept. That means design phase. That means by using the softwares like CAD. Is there anybody here from the engineering background? Okay, no? Okay. Third we have is the proof of concept. Then the fourth stage we have is the prototype validated in the laboratory. Then at the fifth stage we have the industry relevant environment. Then uske baad hai demonstration of that topic, that product. And then at the 7, pilot scale plant should be developed. And then after that at the TRL 8, the complete testing has been done. Then at the TRL 9, it is ready for the production. Got it? So this is the basic TRL. Now next we have is the CRL. Now this part is very important. Commercial readiness level. Commercial readiness level का first part क्या है? Basic value proposition of technology identified and reported. For example, suppose I recently have transferred the PET recycling technology. So what purpose PET recycling technology or the what value it is providing to the commercialization? PET क्या है? Anybody are you from the chemistry background? What is PET? PET is polythene terephthalate, right? Which is a polymer, right? So क्या पर्पस सॉल्व कर रहा है वो? फर्स्ट फेज में CRL 1 में क्या होगा? What value that is providing? ये अंडरस्टैंड करना बहुत जरूरी है. इस लेक्चर के बाद आपको ये असेसमेंट हो जाए कि आप असेस कैसे करोगे कमर्शियली स्केल पे क्या टेक्नोलॉजी है इस लेवल के ऊपर या नहीं है. टीआरएल को तो जज कर लोगे, राइट? क्या आप कमर्शियली जो है वो मार्केट के लिए रेडी है प्रोडक्ट या नहीं है, आप समझ पाओगे, उस चीज को मैच कर पाओगे. सो ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट व्हाट इज द वैल्यू प्रोपोजिशन दैट पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी इज प्रोवाइडिंग. तो जैसे प्लास्टिक का क्या है, प्लास्टिक को दोबारा रिसाइकिल करके कोई प्रोडक्ट बना रहे हैं तो क्या है, दैट मीन्स इको फ्रेंडली, यस और नो? सो दैट मीन्स दैट इज द वैल्यू दैट टेक्नोलॉजी इज प्रोवाइडिंग. क्लियर? Second, we have business concept formulated with potential application.
सो फॉर एग्जाम्पल पेट हैज अ मल्टीपल, प्लास्टिक को कन्वर्ट जो डीपॉलीमराइज करके उसको क्या है, देर आर सर्टेन अदर थिंग्स दैट वी कैन फॉर्म, लेकिन बहुत सारे अदर प्रोडक्ट्स हम बना सकते हैं, लाइक फॉर एग्जाम्पल DMT, डाई मिथाइल टेरिफ्लेट, विच इज कन्वर्टेड व्हेन पेट इज कन्वर्टेड इनटू मोनोमर, प्योर मोनोमर, डिग्रेडेशन जब करते हैं देन क्या बनता है, देन 2 मोनोमर्स आर फॉर्म्ड, राइट, एक तो DMT बनता है, दूसरा MST बनता है, मोनोहाइड्रोक्सी इथाइल टेरिफ्लेट। हैव यू हेard अबाउट दोज वर्ड्स? क्या है ये मोनोमर? ओके, सो दैट मीन्स DMT जो है वो DMT कहां यूज होता है, सो वी हैव टू फाइंड आउट व्हाट आर द वेरियस पोटेंशियल एप्लीकेशंस ऑफ द टेक्नोलॉजी। तो जब डिग्रेडेशन करते हैं पेट को तो उसके बाद जो है DMT निकलता है, MST निकलता है, राइट, इथाइलिन ग्लाइकोल निकलता है, राइट, तो वो कहां कहां जो व्हाट आर द वेरियस एप्लीकेशंस, राइट, सो दैट इज बेसिकली यू हैव टू एड्रेस इन द CRL2। ठीक है, जितना ज्यादा हाई CRL2 होगा उतने ज्यादा चांसेस हैं आपके मार्केट में प्रोडक्ट के आने के या टेक्नोलॉजी के एक्सेप्टेंस के। गेटिंग माई पॉइंट, समझ आ रहा है? यस, जी 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 हाँ, प्लास्टिक का जो ट्रांसपोर्टेशन के काम में भी आता है, एंड देन उसमें भी बहुत सारे हैं, जैसे कंस्ट्रक्शन के काम में भी यूज़ किया जा रहा है, या यस यस यस, राइट। सिमिलरली CRL3 प्रूफ ऑफ बिजनेस केस क्या रहेगा, बिजनेस प्लान वैलिडेटेड, उसको सेल आउट कहां करना है, DMT कैन बी सोल्ड टू दी टेक्सटाइल फर्म्स, आपकी जीन्स बनती हैं, आपके जो भी जैकेट्स बनते हैं, राइट, तो क्या है उसका एक प्रूफ ऑफ कंसेप्ट है कि आपने क्या है एक बिजनेस तैयार किया है, राइट, वो कहां है, बिजनेस होगा कहां पे, वो एक क्लियर रोड मैप। गेटिंग माई पॉइंट, यस और नो? सो दैट मीन्स वो कहां कहां सोल्ड आउट हो सकता है, जैसे मान लो मैंने DMT का एग्जांपल दिया, MST कैन बी फर्दर यूटिलाइज टू कन्वर्ट इट इनटू दी, अगेन पेट बोटल्स द्वारा बन सकती हैं, जो बिस्लरी की पानी की बोतल आती है वो पेट है, क्लियर है सर सभी को, राइट। सो वी हैव द सम काइंड ऑफ द प्रूफ ऑफ कंसेप्ट, देन मिनिमल वायबल प्रोडक्ट कंप्लीटेड एंड पायलट इनिशिएटेड। व्हाट डज इट मीन? मिनिमल वायबल प्रोडक्ट मीन prototype as per the need only, right, any product which is developed for the fulfilling the need only. Getting my point? Similar, and then minimal marketable product, because at TRL3 or TRL4 when you ask about the minimal viable product and sell it to the market, right, और किसी को भी आप एक सैंपल के तौर पे भेजोगे तो बहुत सारे कमेंट्स आएंगे, यू हैव टू एड्रेस दैट फॉर मोर मैच्योरिटी ऑफ योर CRL। देन उसके बाद मिनिमम मार्केटेबल प्रोडक्ट आ गया कि जो मिनिमम क्या है वो मार्केटेबल कर सकते हैं हम प्रोडक्ट को। गेटिंग माई पॉइंट? देन नेक्स्ट है मिनिमम मार्केटेबल प्रोडक्ट डिप्लॉयड इन द मार्केट, डेवलप कर लिया, देन क्या है डिप्लॉय। अगेन वो सेम फिनोमिना चल रहा है जैसे TRL में है, राइट। फर्स्ट में क्या किया आपने, एक बिजनेस फॉर्मुलेशन करनी है, देन उसके बाद क्या है मार्केटेबल प्रोडक्ट, डिप्लॉयमेंट, ऑपरेशन। गेटिंग माय पॉइंट? देन लास्ट वी हैव द मैच्योर प्रोडक्ट डिजाइन। अब मैच्योर प्रोडक्ट कैसे बनेगा, जैसे मान लो एट TRL6 के ऊपर जो है वो 20 to 30 आपने जो है वो सैंपल जो है वो मार्केट में उतारे, राइट। फ्रॉम देयर यू हैव गेट द सेंस ऑफ द मार्केट, दैट मार्केट क्या चाहता है, राइट। एंड उसके बाद आपने जो है वो दोबारा फिर से जो है वो मैच्योर प्रोडक्ट निकाला, राइट। देन उसके बाद जो है वो टारगेट अचीव्ड, टारगेट भी सेट करने हैं, सप्लाई चेन मैनेजमेंट का भी पार्ट लेना है, राइट, सो दैट आप क्या है सक्सेसफुल कमर्शियलाइजेशन ऑफ टेक्नोलॉजी की तरफ जाओ। समझ आ रहा है बात? क्लियर है ये CRL? किसी को कोई प्रॉब्लम है इसमें या कोई इशू है या कुछ पूछना चाहता है, देन मोस्ट वेलकम। Next we have is the market readiness level. Similarly we have the market readiness level. हम डिफरेंस थोड़ा नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं कि क्या बेसिक डिफरेंस है ताकि आपको इजीली समझ आ जाए। अगेन बेसिक मार्केट नीड परसीव्ड, राइट। तो मार्केट की नीड क्या है, सपोज
अभी रिसाइकलिंग जो हो रही है वो मैकेनिकल रिसाइकलिंग हो रही है जिसमें मैन पावर बहुत यूटिलाइज हो रहा है, राइट. सो व्हाट वी वांट, और गवर्नमेंट वांट्स, दे वांट टू कन्वर्ट द एंटायर फ्लीट इनटू द टुवर्ड्स द केमिकल रिसाइकलिंग, राइट. सो दैट मीन्स हमें क्या है, नीड पता लग गई है. गेटिंग माई पॉइंट. अगेन पोटेंशियल बिजनेस मॉडल फॉर्मुलेटेड एंड वैल्यू प्रोपोजिशन सेम. मैं फिर से कह रहा हूं कि बोथ आर सीआरएल एंड एमआरएल बोथ आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर एंड सॉल्विंग द सेम पर्पस. क्या है वो? सक्सेसफुल कमर्शियलाइजेशन ऑफ द टेक्नोलॉजी. बट एमआरएल क्या है? एमआरएल जाता किस तरफ है? कंज्यूमर्स, स्टेक होल्डर्स की तरफ. वेयर एज सीआरएल किस तरफ जाता है? बताओ. यस, राइट. सक्सेसफुल कमर्शियलाइजेशन कब होगी? व्हेन यू हैव सम काइंड ऑफ द रिवेन्यू. आपने मार्केट में प्रोडक्ट उतारा, दैट डजंट मीन्स कि हाँ कि वो जो है वो सक्सेसफुल है अनटिल जब तक आप उसमें क्या है कि रिवेन्यू ना जनरेट कर लो. गेटिंग माई पॉइंट. सो सिमिलरली दीज आर दी मार्केट रेडनेस लेवल. ओके, सो आई विल शेयर दी स्लाइड्स टू यू एंड पीपीटी जो है वो बाद में शेयर कर दी जाएगी, राइट. सो यू कैन असेस इजिली एंड वट एवर द योर प्रॉब्लम या क्वेश्चन होंगे वो मैं एड्रेस कर दूंगा, राइट. So let's talk about the basic difference between CRL and MRL. दोनों बड़े सेम से दिखते हैं लेकिन क्या बेसिक डिफरेंस है? तो कमर्शियलाइजेशन रेडनेस लेवल क्या है कि जो कि फोकस करता है किसके ऊपर? बिजनेस एंड कमर्शियलाइजेशन साइड के ऊपर. रिवेन्यू कितना आएगा हमें सिर्फ उससे मतलब है. Whether the technology has moved from a concept to a validated business model, operation process, sustained revenue. Got it? एग्जाम्पल के तौर पे देखते हैं. इज द टेक्नोलॉजी रेडी टू बी अ सक्सेसफुल बिजनेस? क्लियर है चीज? क्या वो टेक्नोलॉजी एक सक्सेसफुल बिजनेस खड़ा कर सकती है या नहीं कर सकती है खड़ा? क्या उसमें आगे जाने की नीड है या नहीं है? और मैक्सिमम 90 से 80 से 90% टेक्नोलॉजीज जो हैं वो मार्केट अभी तक उनकी सेट नहीं है. कारण क्या है? इसीलिए जो है वो नए कंसेप्ट इंट्रोड्यूस किए गए हैं कि ताकि साइंटिस्ट साइड बाय साइड जो है वो कमर्शियल रेडनेस लेवल को भी असेस करे और साथ में मार्केट रेडनेस लेवल को भी असेस करे. गॉट इट? सिमिलरली एक और एग्जांपल है कि आर वी द कंपनी रेडी टू स्केल एंड रन अ बिजनेस ऑन पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी, वेयर एज द मार्केट रेडनेस लेवल फोकसेस ऑन मार्केट डिमांड को फुलफिल करने के लिए और फिट साइड के लिए. गेटिंग माई पॉइंट? दूसरी चीज है कि कंज्यूमर सेंस, इंटेंशन टू अडॉप्ट द प्रोडक्ट. एक सर्वे करना बहुत नीडेड है, मच नीडेड है मार्केट को एनालाइज करने के लिए, जो आपको बताता है कि क्या वाकई में कस्टमर जो है वो उस प्रोडक्ट को सिर्फ परचेज ही करना चाहता है, उसको अडॉप्ट भी करना चाहता है. मैं प्लास्टिक की बोतल के साथ में अभी पानी पी लूंगा लेकिन मेरा मतलब ये नहीं है कि मैं उसको घर लेके जाऊंगा. गेटिंग माई पॉइंट? आंसर मेरा क्लियर है कि हाँ कि मैं यहां पानी पी के इसको जो है वो थ्रो कर दूंगा, मैं उसको घर नहीं लेके जाऊंगा. क्लियर है? सिमिलरली जो है वो मेरा इंटेंशन क्या है? सपोज आई एम गोइंग टू परचेज सम प्रोडक्ट फ्रॉम द मार्केट, राइट. मेरा इंटेंशन सिर्फ ये है कि मैं उसको परचेज करके रख लूंगा. बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं, अमीर लोग क्या करते हैं, 3-3 गाड़ियां रख लेते हैं. गेटिंग माई पॉइंट? लेकिन एक्चुअल में क्या है, वो क्या वाकई उनकी इंटेंशन थी खरीदने की, अडॉप्ट करने की थी? उन्हें सिर्फ परचेज मॉडल फॉलो किया है कि हम परचेज करेंगे, बट एक्चुअली दे आर नॉट फोकस्ड टुवर्ड्स द एडॉप्शन. क्लियर है चीजें? समझ आ रहा है या नहीं? ओके. So the basic difference between these two are the one behaves according to the business and commercialization side and the other behaves towards the market demand, जो कि सिर्फ कंज्यूमर को देखता है, सेल्स को, then after that the stakeholder and overall market को. Got it? Again मैंने नोट स्पेशली दिया है इसलिए कि think of CRL as business maturity, ताकि आपको याद रहे. Whereas MRL कैसे देखना है आपने? मार्केट मैच्योरिटी के लिए. आपके स्टेप्स उसी तरफ होने चाहिए. गॉट इट? क्लियर है चीज ये? अब ये शायद लास्ट में ना दिखाई दे, दिख रहा है या नहीं दिख रहा है?
थोड़ा सा आगे आ जाओ तो। क्या CRL MRL समझ आ गया है या मैं इसको स्किप कर दूं? मैंने एक एग्जाम्पल के तौर के ऊपर मैंने CRL और MRL को जो है वो डिस्प्ले किया है, जिसमें क्या है कि बेसिक वैल्यू प्रोपोजिशन क्या है। सपोज मैंने पेट रिसाइकलिंग टेक्नोलॉजी का एक CRL निकालना था, राइट। मैंने क्या देखा कि पेट रिसाइकलिंग टेक्नोलॉजी कैन रिड्यूस वेस्ट, प्रोवाइड सस्टेनेबल रॉ मटेरियल। वैल्यू प्रोपोजिशन क्या था? इको फ्रेंडली प्लस कॉस्ट सेविंग प्लस कैटलिस्ट रिसाइकलिंग। दैट मीन्स साइंटिस्ट हैव क्लेम्ड दैट this catalyst can be utilized or used multiple times, means 300 times, and without affecting the environmental conditions. ठीक है, मतलब कि साइंटिस्ट ने क्या क्लेम कर दिया कि उसने टेक्नोलॉजी बनाई है, ठीक है, उसके पास क्या है, उसका कैटलिस्ट बार बार यूज हो सकता है, 300 टाइम्स यूज कर लिया उसने, और उसका कोई भी हार्मफुल इफेक्ट नहीं है। बिकॉज रेगुलेशंस क्या है, क्या बोलती है रेगुलेशंस की? हाँ, कि आपको जो है वो एनवायरमेंट दूषित नहीं करना है विद योर टेक्नोलॉजी। So that means केमिकल रिसाइकलिंग, पहले तो मेन पर्पस था कि मैकेनिकल से जो है वो प्लेयर्स को कैसे जो है वो केमिकल रिसाइकलिंग की तरफ लाया जाए ताकि मैन पावर रिड्यूस हो जाए। क्लियर आ गई चीज, सबको समझ आ गया? देन सेकंड में बिजनेस कंसेप्ट फॉर्मुलेटेड। मैंने पहले भी इसका एग्जांपल दिया कि बिजनेस कंसेप्ट कैसे फॉर्म होगा। दैट मींस द सेटअप ऑफ पेट रिसाइकलिंग प्लांट एंड सेल DMT, MHT, EG टू टेक्सटाइल एंड पैकेजिंग फर्म्स, राइट। सो मैंने क्या किया कि एप्लीकेशन फाइंड आउट करनी शुरू की उसकी, कि ये जो टेक्नोलॉजी है इसके अगेंस्ट क्या क्या एप्लीकेशन हो सकती हैं, राइट। एप्लीकेशन फाइंड आउट करना इतना मच नीडेड है कि जो डायरेक्टली आपकी जो है वो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर में हेल्प करेगा। अगर आपके पास मल्टीपल रिवेन्यू के मॉडल्स नहीं होंगे, दैट मीन्स इट विल कंप्लीटली बी ए डिजास्टर टेक्नोलॉजी। सिर्फ एक पर्पज सॉल्व कर रही है जो उसका कोई फायदा नहीं है। गेटिंग माई पॉइंट? Whereas the business plan validated with proof of concept, that means how drafting करना, documents का, business plan तैयार करना, so all these things will be covered up to 1 to 3 level of the CRL. Whereas minimal viable product का example देखना है तो pilot plant developed with capacity of 100 kg. Got it? Then larger bio plant की तरफ जाना है. Then MMP deployed, first sale achieved हुई या नहीं हुई है, right? ऑर्डर्स रिसीव हुआ है या नहीं हुआ है। देन टेक्नोलॉजी स्केल अप, मार्केट स्ट्रेटजी टेस्टेड है या नहीं है, किस तरीके से जो है वो आपने, मान लो फूड प्रोडक्ट है, कोई लॉन्च करना चाह रहा है तो क्या ट्रांसपोर्टेशन लॉजिस्टिक्स सारी क्लियर है या नहीं है, राइट। वेयर टू सेल। सिमिलरली द MRL, बेसिक मार्केट एंड असेसमेंट। अब बेसिक मार्केट असेसमेंट क्या होगी? दैट मीन्स इंडस्ट्रीज एंड गवर्नमेंट पॉलिसी डिमांड अल्टरनेटिव टू मैकेनिकल रिसाइकलिंग विद हाई क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट। जो मैंने टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की, इंडस्ट्री की क्या रिक्वायरमेंट थी? इंडस्ट्री चाहती थी कि हम यूरोप में सेल आउट करेंगे विद द 99% प्योर हाई क्वालिटी ऑफ द मोनोमर। मेरे अकॉर्डिंग सिर्फ दो चीजें अगर बिजनेस चलाना है तो दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंस रखती हैं। वन इज द, या तो क्वालिटी हाई कर दो या तो फिर कॉस्ट को रिड्यूस कर दो। आई एम राइट और रॉन्ग? अगर आप क्वालिटी हाई कर दोगे दैट मीन्स आपका कंपटीटर क्या है, वैसे ही डाउन चला जाएगा। या तो फिर अगर क्वालिटी नहीं दे सकते हो देन अल्टीमेटली क्या है, आपको कॉस्ट को डाउन पे लाना पड़ेगा। अगर ये दोनों चीजें हो जाती हैं देन, या इसे तीसरी कोई चीज है, मैं आज बात इंडियन सिनेरियो की बात कर रहा हूं, जो मार्केट इंडियन मार्केट है कैसे बिहेव करती है। दे ओनली थिंक अबाउट द क्वालिटी एंड द कॉस्ट। ये कर लोगे? नेक्स्ट आगे अगर मैं आपको पीपीटी शेयर कर दूं, यस और नो, या एक्सप्लेन करना है इसका, तो कितने लोग, प्लीज रेज योर हैंड, कितने लोगों को जो है वो CRL MRL समझ आ गया है? ओके, सो ऑलमोस्ट एवरीवन ना। ओके, देन हाउ टू कैलकुलेट द मार्केट साइज। अब मार्केट साइज कैलकुलेट कैसे करना है? सबसे बड़ी चीज, सबसे बड़ी दुविधा साइंटिस्ट के लिए क्या आती है कि मार्केट साइज को कैलकुलेट कैसे करें, कितना बड़ा मार्केट है। So one of the best technique we have is the TAM, SAM, SOM, and I have also introduced the one more part, that is the EVG. And what is EVG? Early evangelist. कितने भूखे बैठे हुए हैं जो आपकी टेक्नोलॉजी के प्रोडक्ट को खरीदने के लिए तैयार हैं? Getting my point? बड़ी सिंपल भाषा में, देसी भाषा में यूज कर रहा हूं मैं कि कितने लोग जो है वो, जैसे मान लो आपका प्रोडक्ट मार्केट में उतर रहा है,
कितने लोग ऐसे हैं कि जो चाहते हैं कि हम जैसे मार्केट में प्रोडक्ट आया और हम परचेज कर लेंगे? दैट मीन्स दी अर्लियर अडॉप्टर्स। मान लो मैं इलेक्ट्रिक व्हीकल का जो है वो एक मॉडल तैयार किया मैंने, उसको जो है वो मार्केट में उतारना है प्रोडक्ट, राइट? तो वो जो प्रोडक्ट है वो मुझे सोचना पड़ेगा कि हाँ कि खरीदना है या नहीं खरीदना है, यस और नो? तो अगर मुझे खरीदना है तो दैट मीन्स अगर मेरा पहले से 10 साल का प्लान है तो वो मैं किस कैटेगरी में आ गया? ईवीजी कैटेगरी में। दैट मीन्स मैं सिर्फ भूखा बन के बैठा हूं, ठीक है, और मैं चाहता हूं कि हाँ कि जब ये प्रोडक्ट आएगा मार्केट में मैं उसको परचेज करूंगा। कई बार ऐसा होता है ना कि हम फोन देखते हैं, नया फोन परचेज करते हैं, राइट? तो इंतजार करते हैं यार वो अगले मंथ आएगी उसकी सेल। तो दैट मीन्स वी आर दी अर्ली अडॉप्टर्स, राइट? कार लॉन्च होती है कि नहीं? सबसे पहले बड़ी बेस्ट स्ट्रेटजी जो है वो इंडस्ट्री जो है वो फॉलो करती है सेल करने के लिए। 10-20 या 4-5 महीने पहले क्या है वो बुकिंग करना शुरू कर देती है। इससे उनको जो है वो इन्वेंट्री का भी खतरा नहीं रहता कि ज्यादा स्टॉक इकट्ठा हो गया है, और पता भी लग जाता है कि प्रोडक्ट जो है मार्केट में चलने वाला है या नहीं है, मार्केट में उतर सकता है या नहीं उतर सकता है। ऐसा ना हो कि, क्योंकि बहुत सारे आज की डेट में देखो मैक्सिमम इंडस्ट्रीज और स्टार्टअप्स भी हैं जो भी हैं, तो जो भी हैं इन्वेस्टर्स वो पर्टिकुलरली क्या सोचते हैं कि क्या प्रोडक्ट मार्केट में चलेगा, हमें धंधा कितना होगा उससे। सिंपल बात करते हैं कि हाँ कि धंधा कितना होगा। वो थोड़ा सा सुनेंगे कि हाँ कि टेक्नोलॉजी आपकी है क्या, लेकिन फिर घूम फिर के कहां पे आएंगे कि ऑपरेशन कॉस्ट क्या है। ऑपरेशन कॉस्ट के बाद जो है वो अल्टीमेटली मुझे कितना मुनाफा होगा। समझ रहे हैं बात को? तो अगर एक सिंपल तौर के ऊपर एक एग्जांपल के तौर पर पहले इसको समझ लेते हैं, या फिर अंडरस्टूड है ये टैम सैमसोम अंडरस्टूड है, बताया है ना? हाँ, तो फिर मैं इसको स्किप कर रहा हूं। ऐसे समझ लेना, अगर आपने याद रखना होगा मैं बड़ा सिंपल सा एक तरीका बताता हूं। टैम इज द वर्ल्ड, राइट? सैम इज द इंडिया, राइट? सोम क्या है? स्टेट्स, एंड ईवीजी आर दी डिस्ट्रिक्ट्स, ठीक है? इस तरीके से याद रखना है। क्लियर है? अब अगर एग्जाम्पल के तौर पे देखते हैं इसको, सपोज एक टेक्नोलॉजी है विच इज अ न्यू डायबिटिक्स ड्रग इन इंडिया, ठीक है? इसका टोटल एड्रेसेबल मार्केट निकालना है। इंडिया हैज 7.7 करोड़ डायबिटीज। एज्यूम एवरेज एनुअल कॉस्ट ऑफ डायबिटीज मेडिसिन। मान लो किसी पर्सन का जो है वो एनुअल खर्चा कितना आ रहा है मेडिसिन के ऊपर? 10,000 रुपीज। हाउ यू विल कैलकुलेट द टैम? एनीबडी? मल्टीप्लाई, सिंपल मल्टीप्लीकेशन। आज इस लेक्चर के बाद आप ऐसे नहीं घर जाने चाहिए कि हाँ कि आप सोचें कि हमें टाइम भी निकालना नहीं आता है राइट? तो अल्टीमेटली ऐसा नहीं सोचना कि हाँ कि ये इंडस्ट्री में यूज होगा समझ रहे हैं बात को? आप स्टार्टअप करने जा रहे हैं, ठीक है? चंडीगढ़ इकोसिस्टम आपको जो है वो अडॉप्ट कर रहा है कि पॉलिसी डिजाइन कर रहा है, स्टार्टअप के लिए आपको फंड दे रहा है। गेटिंग माय पॉइंट? सो दैट मीन्स ये बेसिक चीजें हैं जो कि इन्वेस्टर भी आपसे पूछेगा एट द लास्ट ऑफ द स्लाइड्स। जब आप पिच करोगे ना 7 मिनट के लिए, ठीक है, वो ये पूछेगा कि हाँ कि व्हाट इज टाइम सैमसंग, कहां है आपका टोटल एड्रेसेबल मार्केट कितनी है? क्योंकि नया प्रोडक्ट है, मार्केट में उतारना है, कि चलेगा नहीं चलेगा, बहुत सारी चीजें देखनी पड़ती हैं। सो सिंपल मल्टीप्लीकेशन। क्लियर है? अब सैम क्या है? छोटा सा पोर्शन किसका? टैम का। सिमिलरली सोम का। सोम भी किसका? छोटा सा पोर्शन किसका आ गया? ठीक है। अगेन ईवीजी कौन से हैं? पोटेंशियल कस्टमर्स, ठीक है? पोटेंशियल कस्टमर्स क्या है कि टू सो एज्यूम 10% ऑफ द सोम इनिशियली। क्लियर है? आ जाएगा निकालने? मैं एक्सरसाइज करवाऊं या फिर मैं स्किप कर दूं? होगी सर ठीक है। देन देयर आर वेरियस फैक्टर्स विच आर एनालाइजिंग द मार्केट रेडीनेस। ठीक है। सबसे पहला फैक्टर क्या है? एनालाइजिंग मार्केट डायनेमिक्स। मान लो मैं कोई प्रोडक्ट मार्केट में उतार रहा हूं और मुझे कल्चर की सेंस नहीं है। साउथ में कल्चर बिहेव कर, साउथ में क्या है, फैक्टर्स कैसे इन्फ्लुएंस करते हैं? मोर टेक्नोलॉजिकली साइड। उनको फर्क नहीं पड़ता कि यहाँ की चटक मटक है या दिखावा है क्या है, उनको नहीं फर्क पड़ता सिंपल सी बात है। उनको टेक्नोलॉजी से मतलब है कि उनका पर्पस सॉल्व हो रहा है नहीं हो रहा है, एज पर उनकी जो रिक्वायरमेंट फुलफिल हो रही है नहीं हो रही है। गेटिंग माई पॉइंट? नॉर्थ में सर मसालेदार चीजें
टेक्नोलॉजी तो चलेगी चलेगी सर, टेक्नोलॉजी के बिना तो कुछ नहीं बनेगा ना। क्लियर है चीजें। देन सेकंड वी हैव इज द मार्केट रिसर्च एंड एनालिसिस। तो स्वोट भी है, बहुत सारे एनालिसिस टूल भी हैं, ठीक है। मार्केट का आप सर्वे करवा सकते हैं, राइट। सर्वे के लिए जो है वो उसके बाद उसको डाटा को आप एनालाइज कर सकते हैं। एनालाइज करने के लिए आर फॉर द क्वालिटेटिव एनालिसिस है, राइट। और जो क्वांटिटेटिव एनालिसिस के लिए आपके पास एसपीएसएस है, राइट। तो आप डेमोग्राफिक भी निकाल सकते हैं, ठीक है। फैमिली इनकम निकाल सकते हैं, वो सारे डेमोग्राफिक के वेरिएबल्स आते हैं, राइट। और आप जो है वो क्वेश्चनरी भी सेट कर सकते हैं, तो उनको देन फर्दर एसपीएसएस लगा के जो है देन एमएस में जो है वो आप उनका इंपैक्ट ऑन ईच अदर फैक्टर जो है वो आप निकाल सकते हैं, राइट। वो भी एक बड़ी अच्छी, लेकिन वो एडवांस लेवल के जो जिनके पास जो है वो काफी मैच्योर फंड होता है, देन दे अडॉप्ट दोज टेक्नोलॉजीज। देन थर्ड भी है असेसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड लॉजिस्टिक्स, ठीक है। मान लो कि आपका एक एग्जांपल के तौर पे देखते हैं, अ फूड डिलीवरी स्टार्टअप कंसीडरिंग एक्सपेंशन टू चंडीगढ़ मोहाली रीजन मस्ट असेस द रिलायबिलिटी ऑफ डिलीवरी नेटवर्क्स एंड एड्रेसिंग एनी गैप्स। क्लियर है, ठीक है। देन रिस्क असेसमेंट, रिस्क किसी भी तरह का हो सकता है, राइट। देन टेस्टिंग द वाटर, व्हाट इज द टेस्टिंग द वाटर? एनीबॉडी ऑफ यू? लेट्स सी एज जो एग्जांपल दिया है, कंपनी टाई अप विद गवर्नमेंट एंड इंट्रोड्यूस 50 इलेक्ट्रिक व्हीकल बसेस इन शिमला हिली टेरेन एरियाज, राइट, ऑन द ट्रायल बेसिस के ऊपर कि सबसे पहले टेस्ट करना है। सिमिलरली टेस्ला ने क्या किया, चाइना में जो है वो अपना 50 व्हीकल जो है वो इलेक्ट्रिक व्हीकल जो है वो जो ट्रक है उनका, ठीक है, वो उन्होंने मार्केट में उतारा जस्ट टू असेस द मार्केट रिक्वायरमेंट, राइट। सो ये भी जरूरी है कंसेप्ट, प्रमोटिंग अवेयरनेस एक तो, देन दूसरा क्या है एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एंड अंडरस्टैंड डिमांड एंड चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर। तो ये बेसिक चीजें हैं कि जो कि आपके एग्जाम्पल के हिसाब से वेरी करती हैं, राइट। एंड आल्सो आई वुड लाइक टू सजेस्ट कि बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो ये एनर्जी एनवायरमेंट फेज के अकॉर्डिंगली हैं। तो अगर कोई फार्मास्यूटिकल से है तो देयर आर सम डिफरेंट थिंग्स, राइट। ज़्यादा नहीं लेकिन मिलती जुलती ही रहेंगी। देन स्वोक एनालिसिस। अब आपने पहले स्वोट सुना होगा, ये स्वोक क्या है? टाइम तो नहीं हो रहा है, ज़्यादा हो गया, आधे घंटे हुआ ना। स्वोट तो सुना था, स्ट्रेंथ, वीकनेसेस, अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट। अब स्वोक क्या है? ये मैंने गलत तो नहीं लिख दिया है? टी होना था यहां पे, ठीक है। बेसिकली जो थ्रेट्स है वो पार्ट चलता है किस वाली साइड, जैसे मिलिट्री ऑपरेशंस है, राइट, और हो सकता है कि फार्मास्यूटिकल में भी चले, राइट, ह्यूमन राइट्स का, राइट। तो थोड़ा सा मैंने जो है वो इसको चेंज किया, मैं किस तरफ ले गया इसको, चैलेंजेस वाली साइड को, राइट। तो मैंने क्या किया, एक जो मैंने ये जो एग्जांपल दे रहा हूं मैं पेट के अकॉर्डिंग दे रहा हूं कि जैसे कैसे मैंने जो है वो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के केसेस में इन चीजों को ऐड ऑन किया था, राइट। तो मेरे स्ट्रेंथ क्या थी मेरी, वो मैंने जब फाइंड आउट की तो साइंटिस्ट ने 99% प्योरिटी का जो है वो मोनोमर तैयार किया था। प्योरिटी का जो है वो मोनोमर तैयार किया था, ठीक है, जिसकी मार्केट में, फॉरेन मार्केट में जो है वो डिमांड बहुत है, राइट। उसके बाद जो है वो टेस्टेड, एनएबीएल टेस्टेड था। देन सेकंड इज कि ग्रांटेड पेटेंट थे कितने, 2। वो वेटेज डालता है, कोई इंडस्ट्री है चीज को खरीदेगी तो सबसे पहले देखेगा कि वाकई में ये चीज वैलिड है या नहीं, कैसे वैलिड होगी, पेटेंट्स। देन थर्ड मल्टीपल रिवेन्यू स्ट्रीम, कितने तरह के एप्लीकेशंस नजर आ रहे हैं, डीएमटी, एमएचटी, ईजी, दैट मीन मल्टीपल मार्केट पोटेंशियल, ह्यूज कैन बी सेड। उसी तरह से जो है वो अपॉर्चुनिटी, क्या अपॉर्चुनिटी थी कि हाई ग्लोबल डिमांड ऑफ पेट और क्वालिटी का प्रोडक्ट चाहिए है मार्केट में। देन सेकंड वी हैव सर्कुलर इकोनॉमी पुश फ्रॉम द गवर्नमेंट साइड, पंजाब भी ऐसा ही कर रहा है कि कैसे जो है वो रिसाइकलिंग की जाए प्रोडक्ट्स की, देन कन्वर्टेड इनटू द वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स। देन चैलेंजेस, वीकनेस, चैलेंजेस आप समझ जाएंगे, ओके। नाउ ये जर्नी है
3 months बैक मैंने एक पेट रिसाइकलिंग की जो टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र की थी उसकी ये मैंने थोड़ा सा एक फ्लो चार्ट के माध्यम से मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ. तो सबसे पहले जो है वो हम हर साल जो है वो टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र कॉन्फ्रेंसेस करते हैं, एंड इन दैट कॉन्फ्रेंस साइंटिस्ट आर अलाउड टू सेंड द टेक्नोलॉजी इन द एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट. तो एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट में क्या क्या रहता है? एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट में आ गया आपका एप्लीकेशंस ऑफ द टेक्नोलॉजी, इंट्रोडक्शन या प्रॉब्लम, देन उसमें आपका आ गया स्पेसिफिकेशन ऑफ द टेक्नोलॉजी, देन व्हाट इज द नोबिलिटी बिहाइंड द प्रॉब्लम, टेक्नोलॉजी में नोबिलिटी क्या है, देन लास्ट वी यूज टू डू मार्केट एप्लीकेशंस, राइट. तो हर साल हम ये कॉन्फ्रेंसेस करते हैं. तो 2024 में हमारे पास जो है वो तकरीबन जो है 78 टेक्नोलॉजीज आफ्टर सॉर्टिंग रही थी, जो कि आईआईटीज, एनआईटीज और टॉप यूनिवर्सिटीज की थी. अब उसके बाद क्या किया हमने, और इस कॉन्फ्रेंस में हमने सैप CIL है यहाँ पे, काफ़ी अच्छा इंस्ट्रूमेंटेशन सेंटर है, तो वहाँ पे हमने ऑर्गेनाइज किया था इवेंट. आप विजिट भी कर सकते हैं वहाँ, और वहाँ की जो न्यू टेक्नोलॉजीज़ हैं आप उनको भी टेक्नोलॉजी क्या जो मशीनरी सेटअप है उनको आप देख सकते हैं, राइट. तो वहाँ पे 7 मिनट के लिए जो है वो साइंटिस्ट ने अपनी टेक्नोलॉजीज को पिच किया. कितने सेक्टर थे? 4. फार्मास्यूटिकल, मेडिकल डिवाइसेस, देन एनर्जी एनवायरनमेंट, एंड लास्ट में था हमारा इंजीनियरिंग, जो कि IoT, रोबोटिक्स और ML को कवर करता था. देन उसके बाद हमने क्या किया, वी आर 4-5 मैनेजर्स, तो हमने उन 78 टेक्नोलॉजीज को जो सेक्टर वाइज बांट लिया. मेरा मोस्ट प्रोमिसिंग सेक्टर था एनर्जी एंड एनवायरनमेंट. तो मैंने एनर्जी एंड एनवायरनमेंट में से 5 मोस्ट प्रोमिसिंग टेक्नोलॉजी सेलेक्ट की. किस बेसिस के ऊपर? मुझे लगा कि पेट की तो डिमांड है ही है, राइट. प्लास्टिक की डिमांड है, तो ऑब्वियसली बात है कि ये टेक्नोलॉजी कुड बी हैव अ ह्यूज मार्केट पोटेंशियल. तो मैंने वो टेक्नोलॉजी सेलेक्ट की, देन उसका जो है वो बिजनेस सेंस निकाला, CRL, MRL सारी चीज़ें निकाली. देन उसके बाद जो है वो मैंने थोड़ा सा सॉर्टिंग करना शुरू की कि हाँ कि किन किन इंडस्ट्रीज में जो है वो ये टेक्नोलॉजी फिट बैठेगी. दैट मीन्स द मैक्सिमम प्लेयर्स, दैट मैक्सिमम एड्रेसेबल मार्केट इन इंडिया दैट आई कैन कैप्चर, राइट. तो सबसे पहले तो मैंने 50 इंडस्ट्रीज का डाटा इकट्ठा किया, और उनको मैंने एक बड़ी सॉफ्ट ईमेल, बड़े क्रिस्प जैसे कि यहाँ की पेट रिसाइकलिंग टेक्नोलॉजीज अवेलेबल फॉर सेल इन पंजाब यूनिवर्सिटी. देन मुझे 2 का रिस्पॉन्स आया. फिर मुझे लगा कि हाँ कि ये जो सैंपल है ये बड़ा लिमिटेड सा है, 50 से कुछ नहीं बनेगा. देन आई डिसाइडेड टू कवर दी 100, देन 200, एंड अगेन द सेम रिस्पॉन्स, 2, 3, 4 का रिस्पॉन्स जो है मुझे आया. देन एट लास्ट मैंने डिसाइड कर लिया कि हाँ कि अगर टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करनी है ये, तो एटलीस्ट जो है वो 1000 का फिगर चाहिए. बट टास्क कितना लेंथी था क्योंकि मैनुअली करना पड़ा, राइट. एक एक इंडस्ट्री को सर्च करना, और उसमें हाई एक्यूरेसी भी होनी चाहिए, राइट. अच्छा, ये सर वो निकल गया एक्चुअली. अच्छा, कोई इशू. अभी ठीक है साउंड? अच्छा, ठीक है. तो मुझे लगा कि 1000 का फिगर चाहिए इसके लिए, तो सैंपल N क्या था मेरा? 1000. मैंने पेट रिसाइकलिंग के जो काम करते थे मैंने 1000 इंडस्ट्री सर्च की, उसमें टेक्सटाइल भी थी मिक्स थोड़ी सी, और बाकी जो रिसाइकलर के जो प्लेयर्स थे बेसिकली, जो कि जैसे बड़े नाम लेना चाहता हूं मैं, जैसे बिरला टेक्सटाइल हो गया, शक्ति प्लास्टिक्स हो गया, गणेशा इकोस्पेयर हो गया, जिनका बहुत बड़ा बड़ा बिजनेस है, राइट. बहुत मिलियन टन्स में जो है वो काम कर रहे हैं वो प्लास्टिक को रिसाइकलिंग करने में. अब 1000 को, जब मैंने 1000 को पिच किया, वो वहां से मुझे 25 का रिस्पॉन्स आया. अब 25 का रिस्पॉन्स आना एक वाकई बहुत बड़ी बात थी कि हाँ कि 25, उनका इंटेंशन वो नहीं था कि दैट दे आर गोइंग टू परचेज इट या लाइसेंस करना चाहते हैं, या फिर देन अल्टीमेटली दे वांट टू अडॉप्ट दैट टेक्नोलॉजी, राइट. दे आर जस्ट वांट टू नो अबाउट दी व्हाट इज द नो हाउ बिहाइंड द टेक्नोलॉजी. अभी उसका पता नहीं है कि हाँ कि वो बाकी रियल परचेजर होंगे या नहीं होंगे. देन उन
देन दो 25 जो मेरे पास इंटरेस्ट आए थे, मैंने उन 25 की मीटिंग स्टार्ट कर दी वन बाय वन। साइंटिस्ट जो है वो तकरीबन 5 to 10 मिनट्स के लिए अपनी टेक्नोलॉजी को पिच करता था, एंड देन वी एक्चुअली हमारा ये मैंडेट भी है कि दैट वी ब्रिज द गैप बिटवीन इंडस्ट्री एंड एकेडमिया, राइट। तो हम एक जो है वो उनको हैंड होल्ड भी प्रोवाइड करते हैं कि किस तरीके से जो है वो ट्रेनिंग दी जाए, जो ताकि जो है वो एक परफेक्ट पिच तैयार हो सके, राइट। तो साइंटिस्ट ने मुझे काफ़ी सपोर्ट किया। तो साइंटिस्ट का भी रोल बहुत अहम रहता है कि हाँ कि वो वाकई में टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करना चाहता है या नहीं करना चाहता है। बहुत सारे पीछे हट जाते हैं, कह रहे कौन करेगा, मेरे पास टाइम ही नहीं है। बहुत सारे नखरे मारते हैं कि हाँ कि मेरा लेक्चर है, ये है, वो है, बट एक्चुअली दे डोंट वांट टू कमर्शलाइज, क्योंकि उनका पर्पस जो है वो कमर्शलाइजेशन नहीं है, वो टेक्नोलॉजी बनाना चाहते हैं और छोड़ना चाहते हैं बस कि हाँ ठीक है हो गया। ज़्यादा ट्रुथ तो नहीं बोल गया सर मैं। जी हाँ जी जी जी। मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैंने सिर्फ एक ही टेक्नोलॉजी के रिगार्डिंग मीटिंग नहीं अरेंज करी, मैंने बहुत सारी के रिगार्डिंग करी है। तो मुझे लगा कि जब मैं आईआईटी रुड़की की मैं टेक्नोलॉजी, हमारा एवर की एमओए भी साइन है, मैंने उनके साथ जब काम करना शुरू किया तो टेक्नोलॉजी के रिगार्डिंग तो एक महीना फोन नहीं उठाते हैं। अब एक महीना फोन नहीं उठाओगे तो टेक्नोलॉजी तो वो सो ही रह जाएगी ना। गेटिंग माई पॉइंट। अब वो 2 साल तक वो टेक्नोलॉजी अगर पड़ी रही तो ना तो वो लैब के काम की, ना इंस्टीट्यूशन के काम की, और ना ही वो मार्केट के काम की। अब वो वैल्यू ऑफ डेथ तो वहीं, वो टेक्नोलॉजी वहीं खत्म होगी। ये मैं बिल्कुल रियलिटी बता रहा हूं कि जो मैंने एक्सपीरियंस के हिसाब से, जो कि ये वो रिसेंट बात है, कोई 2 महीने पहले की। ठीक है। देन उसके बाद जो है वो अल्टीमेटली जो बहुत सारी क्वेरीज भी अरेंज होती आती थी इंडस्ट्रीज की ड्यूरिंग द मीटिंग। देन उसको फिर दोबारा फिर से जो है वो एड्रेस किया साइंटिस्ट ने, और देन अल्टीमेटली जो है वो 5 एनडीए नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट जो है वो साइन हुए। वहां से हमें पता लगा कि दे आर एक्चुअली क्या है, वो उनकी इंटेंशन है कि हाँ कि वो टेक्नोलॉजी को ट्रांसफर करेंगे, राइट। तो 25,000 से शुरू हुआ, 25 ने जो है वो इंटरेस्ट शो किया, एंड देन अल्टीमेटली क्या है 5 एनडीए साइन हुए। अब 5 का भी वैसे पक्का पता नहीं है कि हाँ कि वो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करेंगे या नहीं करेंगे। और इसमें जो है वो तकरीबन इसी पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी के ऊपर 42+ मीटिंग्स ऑर्गेनाइज हुई थी। 3 महीने लगे। प्रोफेसर साहब बैठे होते थे कि हाँ कि कर रहा है कुछ और न्यू एक्सपेरिमेंट है, बट अल्टीमेटली रिजल्ट तब तक नहीं। फिर थोड़े टाइम के बाद अपने को ही ऐसा हो जाता है कि नहीं वाकई में इतना, अब मान लो 42 मीटिंग्स ऑर्गेनाइज कर दी, रिजल्ट क्या निकला, कुछ भी नहीं। सो हाउ डिफिकल्ट द प्रोसेस ऑफ टेक्नोलॉजी ट्रांसफर इज, एंड दिस इज द मैनुअल प्रोसेस। अब खैर हमारे पास सॉफ्टवेयर भी हम काम कर रहे हैं उसके ऊपर कि ताकि हम स्क्रैपिंग कर सकें, ताकि जो है वो सिर्फ कीवर्ड्स डाले टेक्नोलॉजीज का, और उसके बाद जो है वो ऑटोमेटिकली जो है वो लिस्ट ऑफ इंडस्ट्रीज आ जाए मैचिंग जो उसके रिलेवेंट बिजनेस कर रही हैं, राइट। तो वी आर वर्किंग ऑन दैट। कुछ हद तक काम कर भी लिया है हमने, लेकिन उसमें काफ़ी चेंजेस हैं जो कि हम एड्रेस कर रहे हैं। देन फाइनली उन 5 जो एनडीए साइन हुए थे, उन 5 में से जो है वो 2 ने जिक्र किया कि हाँ कि हम आपका जो है वो पायलट स्केल प्लांट जो है वो देखना चाहते हैं, एंड टेक्नोलॉजी जो डेवलप की है उसको वैलिडेट करना चाहते हैं। देन दे विजिटेड देयर लैब्स, साइंटिस्ट ने जिसने बनाई थी टेक्नोलॉजी, एंड देन फाइनली जो है वो ये टेक्नोलॉजी जो है वो महाराष्ट्र के एक इंडस्ट्री को जो है वो ट्रांसफर हुई, एंड तकरीबन 15 लाख रुपीस जो है वो अमाउंट सेट हुआ बाय लुकिंग टुवर्ड्स द पोटेंशियल्स। सो वेरी डिफिकल्ट प्रोसेस, लेकिन फिर भी हमारा प्रोसेस बेसिकली इंडस्ट्री को जो लाने का है ना वो डिफिकल्ट रहता है बहुत। तो इंडस्ट्री अगर आ जाती है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं आए तो फिर दिक्कत है। वो वही बात है कि टेक्नोलॉजी के लिए जो है वो सपोर्ट तो चाहिए डेवलप करने के लिए, ठीक है। टीआरएल 4 के बाद का ही कंसेप्ट जो है वो बहुत डिफिकल्ट रहता है, ठीक है। सो दिस इज द स्टोरी बिहाइंड द रिसेंट टेक ट्रांसफर दैट वी हैव डन एंड द एक्सपेरिमेंट दैट वी गॉट सम आउटकम्स फ्रॉम दैट एक्सपेरिमेंट एंड एफर्ट्स। सो दिस इज द रिवेन्यू बेस्ड मॉडल। यू कैन आल्सो, ये टेक्नोलॉजी थी जो कि इस तरीके का था उनका प्रोसीजर, एंड देन रिवेन्यू मॉडल भी था, उन्होंने 1000 स्केल के ऊपर भी डेवलप किया था, एंड 100 स्केल के ऊपर डिफरेंट रहता है, 1000 के ऊपर अलग रहता है,
राइट, तो कॉस्ट ऑफ डीएमटी कितना है, राइट, तो इस तरीके का जो है वो एक रिवेन्यू मॉडल जो है वो जरूर होना चाहिए। ये मैं इसलिए शो किया है क्योंकि बहुत सारे साइंटिस्ट इंडस्ट्रीज जो हैं वो ये पूछती हैं कि हाँ कि आपका जो पायलट स्केल प्लांट है वो 100 kg के ऊपर है, तो व्हाट इज एट दी 1000 स्केल, 1000 स्केल के ऊपर बताओ, क्योंकि इंडस्ट्री 1000 स्केल से नीचे बात ही नहीं करती है। और उतना बड़ा पायलट स्केल, इतना बड़ा रिएक्टर लगाने का पैसा ही नहीं है साइंटिस्ट के पास। तो वो दोनों के बीच में जो है वो एक मीडिएटर रोल जो प्ले करना पड़ता है, फिर वो हमें करना पड़ता है। ठीक है, रिक्वेस्टें भी करनी पड़ती हैं, ऐसी बात नहीं है। बट आई फील सो कि आपको इतनी मेहनत करनी पड़ती है, तो मुझे कई बार लगता होता है कि कितने लोगों से मिल रहे हैं, कितने लोगों को पिच कर रहे हैं, कुछ होता नहीं है। जी। तो नाउ आई थिंक लाइक दिस इज द अदर साइड, इट इज नॉट ऑल रोजी, एक टेक्नोलॉजी होने से आगे नहीं होता, जी। तो वहाँ से जर्नी शुरू होती है एक्चुअली में, जी। है ना, टू एक्चुअली हेल्प। मैम की भी मैंने एक मीटिंग करवाई थी, एक दो करवाई थी, बट अल्टीमेटली अल्टीमेटली मैं ट्रांसफर नहीं करवा पाया ड्यू टू सम अदर फैक्टर्स। तो The industry never came back to us. इसमें ये गजब लकी था ना, आपके दो रह गए। जी सर। अगर वो करते तो आपकी कितनी मतलब एनर्जी निकली उसके अंदर। जी। एंड थैंक गॉड कि एक सक्सेसफुल स्टोरी आ गई, राइट तो सर। कई हो गई हैं आपके पास। जी And सर। like you are focused only on this, तब भी इतना रहता है। एंड एक साइंटिस्ट या जिसकी टेक्नोलॉजी है वो और कितने काम कर रहा होता है, रिसर्च भी कर रहा है ना, टेक्नोलॉजी डेवलप भी कर रहा है, और देन pitching out is difficult. So we need people like Virender and these centers like tech to do that part. उसमें इम्पोर्टेंट चीज़ है कि जो इस सेंटर तो है, जो टीचर है, जिसने जो इन्वेंटर है, उसकी भी डीप डिजायर होनी चाहिए कि मैंने टेक्नोलॉजी लेकर आना है। That's what he is बट saying. उसको भी टाइम निकालना पड़ता है। 25 बार इसने मीटिंग्स करवाई हैं, और 42 कि 42 टाइम्स तो 5-10 मिनट के लिए इन्वेंटर आया है। आई वाज थिंकिंग कि आप इन्वेंटर को कोई 5 मिनट की अपनी ना पीपीटी प्रेजेंटेशन या वीडियो बना दें, ताकि उसका इतना टाइम ना लगे। तो शी शुड बी अराउंड कि अगर उसके बाद उसने कोई क्वेश्चन वगैरह कुछ हो। एक तो ये डेक बन जाए फिर तो इजी हो जाता है, जी। तो डेक बनानी मुश्किल होती है। मोर लाइक दिस इज लाइक आई थिंक दिस कर्व जी। हैपेंस। ये तो एक एक्सपेरिमेंट है जो हमने किया है, बहुत सारे अदर एक्सपेरिमेंट्स अभी पेंडिंग है, तो प्रोफेसर मनु जी की गाइडेंस से जो है वो हम वो भी करेंगे। जी। सॉरी फॉर इंटरप्शन, नहीं नहीं नहीं, आप फॉलो बेटे करिए। बट फॉर साइंटिस्ट जो टीचर्स यहाँ बैठते हैं, आप अपने डोमेन में ही रहिए। इस जो गैदरिंग का मैंने पहले कहा था कि सिर्फ आपको नॉलेज हो जानी चाहिए कि ये सिस्टम है क्या। ऑप्शंस अवेलेबल है ना। टेक्नोलॉजी ये है, एक सेंटर है जो सारा काम करेगा। अब आपको सेंटर की इंपॉर्टेंस समझ आ रही है, इसके बिना मुश्किल। ये नहीं कई बार डायरेक्ट बात कर रहे थे, इंडस्ट्री ले जाती है, पर एक सेंटर है जो कि फैसिलिटेट कर सकता है उस चीज़ को। और हर एक साइंटिस्ट के लिए मुश्किल है कोई इंडस्ट्री को पूरा करना। तो बस एक ही भी वो थोड़ा सा बस साइंटिस्ट होगी डिजायरेबल होगी, मैंने इंडस्ट्री बात ही ना कर साइंटिस्ट छोड़ यार, मैंने टेक्नोलॉजी बना ली, फिर टेक्नोलॉजी commercialized। So this is all about from my side, and so thank you so much मैम का बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने We are हमें, honored नहीं नहीं to have आपका, you people, and नहीं नहीं, like so you can see how much effort goes into one tech transfer, and a person who is trained, equipped, and solely working in the area. So you could see the challenges that person is facing. So you can very well imagine, अगर हम खुद ही सब कुछ करने निकलेंगे तो और कितना मुश्किल हो जाता है. So that's where partnership. So this is also a partnership, which we need to be open about such partnerships, है ना. So वो 100% नहीं होता मेरा. मैं हमेशा ये एग्जांपल देती हूँ कि मैं चाहे 99% कर लूँ, लेकिन अगर 1% भी कोई और कर रहा है तो मेरा 100% तो उस 1% से बनता है ना. So I do need partners, and I do need to partner out with people. Only then is it possible. And there are so many misses, तब एक सक्सेस मिलती है. So discourage नहीं होना misses के साथ. Wait for that success to come. So that can be your tipping point, है ना. So everyone have their own
हिम्मत नहीं हारनी है और वीरेंद्र जी को बोलते रहना है बोलते रहना है मोटिवेट होते नहीं रहना है आशीर्वाद तो इन गुरुओं का ही है जो हाँ जी we have जी people like Professor Rashida Tiwari and Professor Manu who are really passionately working on in this area and trying to improve these things. So there is a gap between the lip and the cup, है ना? So कई बार ऐसा लगता है हो ही गई बस अभी इसी महीने में हो जाएगी and then suddenly वो खड्डे में चला जाता है. जी Either the person at the helm of the affairs changes या उनको कोई और टेक्नोलॉजी मिल जाती है या कुछ और हो जाता है ना. So हाँ जी many things happen. जी मैं कई बार अपना लैपटॉप देखती हूँ तो 20-20 साल पुरानी कम्युनिकेशंस की ओके दैट टाइम आई स्टार्टेड विद दिस कई बार बड़ी हैरानी होती है कि अच्छा तब से कर रहे हैं जी बट यस यू हैव टू कीप डूइंग. जी मैंने और प्रतीक ने डिसाइड भी किया है कि हम आपकी टेक्नोलॉजी सारी लेंगे तो हम उनके ऊपर काम करेंगे और ज़रूर मुझे थोड़ा सा दिक्कत रहती है कि आप फार्मास्यूटिकल थोड़ा मुझे हाँ जी जी सर जी सर कोशिश करेंगे हम इसको सुपर टर्म्स में जी बनाने की. और मैं बाकी सभी से भी रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि सिर्फ एक चीज़ नहीं छोड़नी है वो है रिसर्च चाहे किसी भी चीज़ में है रिसर्च करना कभी मत छोड़ो चाहे वो छोटे से पार्ट के ऊपर ही है अगर रिसर्च छोड़ दोगे तो आपका दिमाग भी बिल्कुल ख़त्म है समझो सीरियसली बोल रहा हूँ मैं हाँ ठीक है छोटी छोटी चीज़ों को समझो उसमें क्या क्या आप छोटी छोटी इंप्रूवमेंट ला सकते हैं राइट तो इस तरीके की एक्टिविटीज़ को डेली रूटीन में शामिल करो सो थैंक यू सो मच थैंक यू प्रोफेसर साहब थैंक यू प्रोफेसर जी He explained it very well, but maybe if you have any questions, maybe we start with Professor Manu. चाय अंदर ही सर्व करवाती हूँ मैं साथ साथ. चाय ठीक है मैंने देख ली अभी वीरेंद्र जी ने आपके सामने डिस्कस किया कि कैसे उन्होंने एक जो पेट की टेक्नोलॉजी है उसको ट्रांसफ़र किया और उस टेक्नोलॉजी को ट्रांसफ़र करने के लिए वीरेंद्र जी ने 1000 इंडस्ट्री को कांटेक्ट किया। जाहिर सी बात है कि 1000 इंडस्ट्री का डेटा पहले तैयार किया और उसमें 1000 इंडस्ट्री का डाटा तैयार करने में इनको आराम से मेरे को लगता है कोई 1 महीना तो लग ही गया होगा है ना तकरीबन 1 महीना लग गया इनको। फिर उसके बाद बताया इन्होंने कि किस तरह 42 मीटिंग्स हुई। दुनिया को जो दिखता है दुनिया को तो दिखता है वो फाइनल रिजल्ट कि एक टेक ट्रांसफ़र हुआ और उस टेक ट्रांसफ़र के पीछे बहुत पसीना बहाना पड़ता है बहुत मेहनत भी लगती है। तो 15 लाख रुपए में टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र हुई और जिसमें से कि कितने परसेंट हमें मिला 10% जो है हमने अपना उसमें कमीशन लिया। तो हम एक तरह से प्रॉपर्टी डीलर की तरह काम करते हैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डीलर तो प्लॉट बेचता है ना हम पेटेंट्स को बेचते हैं और उसमें जब बिकता है पेटेंट तो उसका फिर 10वां हिस्सा हम ले लेते हैं। तो इसी प्रकार से हमारा MOA साइन हुआ है IIT रुड़की के साथ। उनकी टेक्नोलॉजीज़ को आगे ट्रांसफ़र करने का हमने जिम्मा लिया है और अगर कोई टेक्नोलॉजी सक्सेसफुली ट्रांसफ़र होगी तो उसका 10वां हिस्सा दसवंध हमें मिल जाएगा। तो अब मैं हाँ जी बेटे सॉरी मैं बीच में बोलता हूँ बीइंग ए टीचर मैं थोड़ा सा डिफरेंट बताऊँ। पंजाब यूनिवर्सिटी एक स्टेट यूनिवर्सिटी है बेटे। IIT रुड़की बहुत पुरानी यूनिवर्सिटी है और इंस्टीट्यूट IIT जिनके अपने सेल्स हैं बड़े टेक ट्रांसफर्स के। सो हम एक स्टेट यूनिवर्सिटी में बैठकर उनकी टेक्नोलॉजीज बेचेंगे। सो लुक एट दैट IIT कानपुर की भी ये सारा काम वनु एंड हिज टीम फिर मैं तो ऊपर वैसे बैठा हूँ बट ये लोग इतना काम कर रहे हैं कि भी हम वहाँ पहुँचे। वी फील वेरी प्राउड कि हम IIT की टेक्नोलॉजीज बेचें। CSIR की भी हमने टेक्नोलॉजीज
गवर्नमेंट का स्टार्टअप्स के लिए, हमें कोई नॉलेज नहीं। और ये जो बच्चे हैं वरिंदर वगैरह है ना बेटे, ये एक्सपर्ट नहीं थे, ये भी आप जैसे साइंटिस्ट हैं, ये भी आप जैसे साइंटिस्ट थे। और यही बदतमीजी भी थप्पड़ मार मार के खा के ना तब ऐसे हुए, मतलब खाए नहीं इन्होंने, मतलब इतनी मेहनत की है। सो आई एम सॉरी फॉर दिस वर्ड्स, इन्होंने अपनी मेहनत कर करके यहाँ तक पहुँचे, बहुत अच्छी यहाँ तक पहुँचे। ओके, कोर्स वर्क कोई नहीं है इसके लिए। सो सीखना और फिर उसका रिजल्ट्स अब आने शुरू हैं हमारे। हाँ जी, तो ये जो टेक्नोलॉजी इनेबलिंग सेंटर है उसके डीएसटी द्वारा अपॉइंटेड मेंटर हैं प्रोफेसर रुपिंदर तिवारी जी, और उनकी मेंटरशिप में ही हम सारा काम करते हैं। तो अब मैं आपके साथ कुछ अपनी एग्जांपल्स शेयर करूंगा कि हमने कैसे मार्केट को थोड़ा असेस किया। वीरेंद्र जी ने तो बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया कि कैसे मार्केट को असेस करना चाहिए और कैसे कमर्शलाइजेशन पोटेंशियल देखना चाहिए, पर एक्चुअल में हमने अपने लाइफ में कैसे किया वो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। कुछ साल पहले हमने एक डिवाइस तैयार किया जिसका नाम है आर्टिफिशियल ब्रीदिंग कैपेबिलिटी डिवाइस। ये डिवाइस एक वेंटिलेटर की तरह है। वेंटिलेटर का मतलब थोड़ा लोअर वेंटिलेटर, आप में से कुछ जानते होंगे, अम्बू बैग होता है ना, एक गुब्बारा होता है, उसको ऑटोमेट किया है। तो उसको ऑटोमेट करने का डिवाइस में पंजाब यूनिवर्सिटी के 2 साइंटिस्ट, एक साइंटिस्ट पीजीआई का और एक साइंटिस्ट आईआईटी रोपड़ का, तो 4 साल काम किया। तो फिर आर्टिफिशियल ब्रीदिंग कैपेबिलिटी डिवाइस बना। उसमें कोई 1 करोड़ रुपए तक का खर्च हो गया, डीएसटी ने पैसा दिया था, और पेटेंट अप्लाई किया, पेटेंट मिल भी गया। फिर उसके बाद इस डिवाइस को 33 पेशेंट्स के ऊपर सक्सेसफुली ट्राई किया। अब ये सक्सेसफुली ट्राई भी हो गया। अब उसके बाद आप थोड़ा सा कल्पना करके देखें कि जो पीजीआई का डॉक्टर है वो तो अपनी डॉक्टरी करेगा, और जो पंजाब यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर है वो अपना क्लासेस लेता रहेगा, उसी प्रकार आईआईटी रोपड़ का भी। तो फिर अब ये सोचा गया कि कैसे इसको आगे ट्रांसफ़र किया जाए। तो हमने अपने लोकल इकोसिस्टम में रीच आउट किया थ्रू फ़ोन, थ्रू ईमेल, और लोकल 2 इंडस्ट्रीज़ ने इंटरेस्ट शो किया कि हम इस टेक्नोलॉजी को एब्जॉर्ब करते हैं, और 4-4 लाख रुपए में हमने ये टेक्नोलॉजी 2 इंडस्ट्रीज़ को दे दी, लाइसेंस दे दिया 4-4 लाख रुपए में। अब उन्होंने लाइसेंस तो ले लिया, पर अब 4 साल हो गए, उन्होंने आगे स्केल अप नहीं किया। तो टेक्नोलॉजी तो चली गई, ट्रांसफ़र भी होगी, पर उसके बाद भी वो स्केल अप नहीं हुई। अब इसमें एक पॉइंट आता है कि हमने वो 4-4 लाख रुपया कैसे सोचा कि किस तरह से लेना है, 4 लाख ही क्यों लेना है। तो उसका तो जो हमने किया, हमने तो ये सोचा कि 4 हम साइंटिस्ट हैं, सबके हिस्से 1-1 लाख रुपया आ जाएगा, तो हमने 4 लाख उस तरह से डिसाइड किया। अब पॉइंट ये आता है कि इतनी मेहनत के बाद इतने रिसोर्सेज भी लग गए, तो पर टेक्नोलॉजी तो आगे बढ़ी नहीं। सो उसका आंसर है जो वीरेंद्र जी ने अपनी सारी प्रेजेंटेशन में दिया कि हमें इसका एनालाइज करना चाहिए कि टोटल एड्रेसेबल मार्केट है कितनी, सैम कितना है, सॉम कितना है। उससे क्लैरिटी आती है कि इसमें बिजनेस है कितना, धंधा कितना है इसमें। तो उस प्रकार से हमने इसमें अभी तक स्टडी की नहीं है, बट आई थिंक अब आने वाले टाइम में हमें उस तरह से उसकी स्टडी करके राइट पार्टनर को भी टेक्नोलॉजी देना बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर हमने टेक्नोलॉजी किसी ऐसे व्यक्ति को दे दी, ऐसी छोटी कंपनी को दे दी जो उसको अंडरस्टैंड ही नहीं कर पा रही है, टेक्नोलॉजी को अप्रिशिएट नहीं कर पा रही है, और आगे उसके अराउंड बिजनेस नहीं बिल्ड कर पा रही है, तो टेक्नोलॉजी किल भी हो जाएगी। तो अब ये दूसरी टेक्नोलॉजी है सीएनसी मिलिंग मशीन। तो ये सीएनसी मिलिंग मशीन जो है, ये वुड एनग्रेविंग मशीन है। तो इस पे मेरा जो पीएचडी स्टूडेंट है वो काम कर रहा था। तो उसने अपने पीएचडी
टॉपिक के तौर पे इस मशीन को डेवलप किया। और ये मशीन इस प्रकार की है कि उसके इस मशीन की गैंट्री के ऊपर अगर हम अपना चाय का कप रखेंगे ना तो वो बिल्कुल स्टेबल रहती है मशीन। तो दैट वाज द यूएसपी ऑफ दिस मशीन। फिर इस मशीन को यूआईटी के ही एक स्टूडेंट ने इसके अराउंड स्टार्टअप क्रिएट किया और फिर उस स्टार्टअप को, वो जो मशीन है वो राजपुरा में उन्होंने अपनी कंपनी भी लगा ली और एक क्लाइंट को बेच भी दी मशीन। पहली मशीन 3 लाख रुपए में बिकी। इन द मीन टाइम जब उसके जो स्टूडेंट था जिसने वो कंपनी बनाई थी, उसके जब मम्मी पापा आए, खास करके जब उसके मामा आए और उन्होंने देखा कि कैसे उनका जो बच्चा है वो वेल्डिंग भी कर रहा है, कैसे उसका वेट लॉस हो गया है, कमज़ोर हो गया है, कैसे उसके हाथों में ग्रीस लगी है, तो उनकी तरफ से एक बड़ा प्रेशर आया कि भाई अब आप इसको बंद करो और आप अपना आगे पढ़ाई की तरफ ध्यान दें। तो वो जो कंपनी थी फाइनेमिक्स, फिर वो बंद हो गई। गिवन द फैक्ट कि वो 6 महीने के अंदर अंदर ही अपनी जो टेक्नोलॉजी है उसको वो कमर्शलाइज कर पाए थे। सो ये भी एक बहुत बड़ी बात है कि भाई जब हम किसी टेक्नोलॉजी को आगे उसका कमर्शलाइजेशन पोटेंशियल उसका असेस करते हैं और उसको कमर्शलाइजेशन पर लेकर जाते हैं तो हमारे पास एक बड़ा स्ट्रॉन्ग डॉक्यूमेंट होना चाहिए, क्योंकि मौका आने पे कागज बोलेगा। तो जब उस बच्चे ने एक दिन आके मेरे को बोला कि सर मामा मेरा मना कर रहे हैं और मैं छोड़ रहा हूँ, तो मैंने कहा यार ये कोई प्रोफेशनल आंसर है? कोई मामा मना कर रहे हैं, ऐसी थोड़ी कोई बात बनती है। ये कोई, अगर आप ये बोलते कि सर प्रोडक्ट नहीं अच्छा ये, या ये बोलते कि मार्केट नहीं है इस प्रोडक्ट की, या ये बोलते कि ऑर्डर्स नहीं मिल रहे, या ये बोलते कि ये मेरे से बन नहीं रहा, तो ये तो कुछ इनमें कुछ वैल्यू भी तो होती, कुछ आंसर में कुछ दम तो होता। अब आप तो कह रहे हो मामा नहीं मान रहे, ये तो कोई अच्छा आंसर नहीं है। अब उस मौके पे हमने फिर अपना वो जो एग्रीमेंट था उसको खोला, बट एग्रीमेंट इस मामले में बड़ा शांत था, उसने कुछ नहीं लिखा हुआ था उसमें। तो मौका आने पे कागज नहीं बोलना होता है। तो इसलिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि जब हम इस प्रकार का काम आगे बढ़ाते हैं तो अच्छे डॉक्यूमेंट्स तैयार करें एंड वी शुड बी एबल टू इमेजिन एंड विजुलाइज ऑल पॉसिबिलिटीज़ और उन सारी पॉसिबिलिटीज़ को डॉक्यूमेंट कर दें। तो ये वही CNC मशीन है, उसके डिफरेंट पार्ट्स नज़र आ रहे हैं। और एक हमने प्रोजेक्ट किया था ओशनरिंग कंपनी के साथ। इस ओशनरिंग कंपनी में आप देख रहे हैं कि ये आपको तारें नज़र आ रही हैं और ये जो तारें हैं ये अम्बिलिकल कॉर्ड्स की तरह होती हैं और कंपनी समुद्र के नीचे 12 किलोमीटर 13 किलोमीटर नीचे जाके ऑयल को एक्सप्लोर करती है, जिस कंपनी के लिए हमने काम किया ओशनरिंग। तो जिस तार से उनका रिमोटली ऑपरेटेड व्हीकल, जिसको बोलते हैं ROV, जिससे वो बंधा होता है तार से, उस तार को रेगुलरली उसकी हेल्थ चेकअप करना ज़रूरी होता है। तो उसके लिए फिर कंपनी से हमने बातचीत की तो उन्होंने हमें एंगेज किया फॉर डेवलपिंग अ आर्मर वायर टेस्टर, जो कि पीरियडिकली उस वायर की हेल्थ बताता रहे कि कहीं से वो टूट तो नहीं रही, कहीं से कमज़ोर तो नहीं हो रही। तो इसमें भी जब हमने इसको नेगोशिएट किया इस प्रोजेक्ट को, तो सही सिचुएशन तो वही होती कि हम इसका पहले पूरी टाइम निकालते कि है कितनी मार्केट, कितनी कंपनियां हैं जो कि समुद्र के नीचे से ऑयल एक्सप्लोर कर रही हैं। ठीक है, फिर उसके बाद जो वीरेंद्र जी ने बताया सैमसॉम, वो सारी चीज़ें निकाल के फिर हमारे पास कुछ डाटा होता कि भाई इतना है। उस तरीके से तो हम नहीं गए, प्रैक्टिकली जिस तरीके से गए वो मैं आपसे शेयर कर देता हूँ। तो हमसे कंपनी ने पूछा कि भाई कितने में आप ये हमारे लिए डिवाइस बना दोगे।
तो अब कोई फिक्र ध्यान में उस तरह से कोई कैलकुलेशन नहीं थी, तो बोला कि 1 लाख रुपए में बना देंगे। 1 लाख रुपए में बना दिए। वो कंपनी बड़ी खुश थी, उन्होंने जो है स्टैम्प पेपर पे हमसे लिखवा लिया कि 1 लाख रुपए में बना के देंगे। बोलते कितने टाइम में बना के दोगे? हमने कहा 12 महीने में बनाएंगे। चलो वो भी लिखवा लिया। अब जब ये सारा रिटर्न में आ गया, अब फिर 1 महीने बाद वो उनके रिमाइंडर्स आने लग गए कि भाई बताओ आपने ये बना के देना है और ये माइलस्टोन्स हैं, इसको कंप्लीट करो। तो अब फिर हमने दिन रात उसमें मेहनत की, काम किया, आर्मर वायर टेस्टर बनाया, डिप्लॉय किया, अच्छी तरह से सब कुछ चल गया। फिर बीच में अच्छा और उन्होंने ये भी बात की थी बीच में कि भी आपकी ये इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है, इसका पेटेंट फाइल होगा और हम आपसे पेटेंट के राइट्स पहले से ही ले लेंगे, आपको 50,000 रुपये देंगे पेटेंट के। हमने कहा ठीक है 50,000 रुपये, उस वक्त इतनी अवेयरनेस भी नहीं थी। 50,000 रुपये पेटेंट के दे देंगे। मैंने कहा चलो ठीक है यार, 1 लाख वो 1.5 लाख की कमाई होगी। तो 50,000 में वो सारा पेटेंट भी दे दिया। 1 महीने 1 साल पूरा काम किया। तो बाद में हम ये सोच रहे थे कि भी इतना सारा हमने काम किया, हमारे हाथ तो कुछ लगा नहीं इतना खास। फिर वही कंपनी दोबारा से हमारे को अप्रोच किया उस कंपनी ने, तो वो कहते कि भाई हम ना आपको अब अपना CSR मनी देना चाह रहे हैं। और उन्होंने फिर हमें 1 करोड़ रुपए का CSR दिया। और उस 1 करोड़ के CSR से अब हमने एक बैटरी टेस्टिंग फैसिलिटी डेवलप कर रहे हैं, जो कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है ना यहाँ पर टाउन सेक्टर में, उसके साथ ही बैटरी टेस्टिंग फैसिलिटी है। उसमें इन दैट फैसिलिटी बैटरी ऑफ अननोन केमिस्ट्री कैन बी टेस्टेड। अननोन केमिस्ट्री की बैटरी को टेस्ट कर सकते हैं -40 डिग्री से लेके 140 डिग्री तक और 98% ह्यूमिडिटी तक। तो अब मैं बिगर पिक्चर देखता हूँ तो मेरे को बड़ी सेटिस्फेक्शन होती है कि हाँ ठीक है, हमें तो अच्छा ही पड़ गया, इतनी अच्छी लैब भी डेवलप हो रही है। और अब उस लैब में एक जो रिसेंट हम काम कर रहे हैं दैट इज़ ऑन लेड एसिड बैटरी। पंजाब में ही 70 ऐसे यूनिट्स हैं जो लेड एसिड बैटरी बनाते हैं। और वो सारे जो लेड एसिड बैटरी बनाते हैं उनके 4 मेन इश्यूज़ हैं कि भी बैटरी की कैपेसिटी बढ़ जाए, बैटरी की लाइफ बढ़ जाए और फास्ट चार्जिंग हो जाए। और उनके पास बड़ी हैरानी की बात है, सबके पास सेम रेसिपी है केमिस्ट्री की कि कैसे उस बैटरी को तैयार करना है। फिर उसके बाद हमने क्या किया कि भाई उस मार्केट, अब हमने कुछ लिटरेचर सर्वे किया तो ध्यान में आया कि भाई जर्नल्स में तो कितनी ही रेसिपीज छपी पड़ी हैं। पंजाब में जो ये 2-3 रेसिपीज ही चल रही हैं, पर जर्नल्स में तो कितनी ही 25, 30, 35, 40 रेसिपीज हैं जो जर्नल्स में रिपोर्टेड है। कोई कह रहा है कि CNT से कर लो, कोई कह रहा है कि एक्टिव कार्बन से कर लो, कोई कार्बन ब्लैक से कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है। फिर अब मार्केट रेडीनेस को कैसे देखें कि यार ये चीज़ जो हम बोल रहे हैं जो मार्केट में है, इसके लिए मार्केट रेडी भी है कि नहीं। तो फिर हमने वो सारा डाटा जो इंटरनेशनल जर्नल्स में था उसकी एक PPT तैयार कर ली कि भाई रेसिपी नंबर 1, रेसिपी नंबर 2, रेसिपी नंबर 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 रेसिपीज तैयार कर ली। और फिर हम लुधियाना गए और सारे जो बैटरी वाले हैं उनको बुला लिया कि आ जाओ, हम आपको नई रेसिपी बताएंगे कैसे बैटरी नई बनती है। तो लुधियाना में जाके सारी बैटरी वालों को बुला लिया। और जो अब इमेजिन आई एम फ्रॉम मैकेनिकल बैकग्राउंड और मैकेनिकल बैकग्राउंड में हूँ और उनको मैं केमिस्ट्री की रेसिपीज उनको एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि ये केमिस्ट्री की आप रेसिपी इस्तेमाल करो, आपकी बैटरी की लाइफ बढ़ेगी, कैपेसिटी बढ़ेगी और फास्ट चार्जिंग। तो वर्सेटिलिटी मैम वो हर एक को एक्सप्लॉइट कर सकता है, कॉपी पेस्ट है, इंटरनेशनल जर्नल्स में ऑलरेडी पब्लिश्ड है डाटा सारा। तो उसमें फिर हमने अब उसकी रेडीनेस, फिर हमें समझ एक कॉन्फिडेंस आया कि यस मार्केट इज एज अ मैटर ऑफ फैक्ट इन रियलिटी लुकिंग फॉर सच बेटर रेसिपीज। तो हमने कहा कि अब बताओ जो हमारे साथ कोलैबोरेट होना चाहते हैं तो बताओ, हम आपके साथ मिलके इन रेसिपीज को टेस्ट करना चाहते हैं।
इनके साथ आपके ये रेसिपीज आपके टेस्ट करना चाहते हैं। तो कुछ जो बैटरी मैन्युफैक्चरर्स हैं वो सामने आए। अब आप कल्पना करके देखें, इसके माध्यम से हमने जो बैटरी मैन्युफैक्चरर है उसके शॉप फ्लोर को ही अपनी लैब बना दिया, क्योंकि हमने तो अपनी तरफ से क्या लिया, हमने यहाँ से, हमारे नैनो साइंस में है डॉक्टर रिचा, तो उनसे हमने कुछ नैनो ट्यूब्स ली, उन्होंने हमें CNT डिस्पर्शन बना के दी। फिर वो CNT डिस्पर्शन, सिर्फ CNT डिस्पर्शन और कुछ नहीं, और कोई इक्विपमेंट नहीं ऐसा, CNT डिस्पर्शन फिर हमने बैटरी मैन्युफैक्चरर को दी कि भाई अब आप जब आप अपनी बैटरी बना रहे हो तो एक पेस्ट होता है जो इलेक्ट्रोड्स पे लगता है, उस पेस्ट में इसको डाल दो, मिक्स कर दो। मिक्स कर दिया उन्होंने उस पर, और जो बैटरी बन गई उसको हमने कह दिया ये तो नई हमारी बैटरी है। फिर वो बैटरी उसने हमें दी, एक पुरानी दी, और दोनों को फिर हमने अपनी बैटरी लैब में टेस्ट किया, और हैरान हो गए देख के कि जब हमने बैटरी लैब में उसको टेस्ट किया, हमें 1.5 से 2 गुना ज़्यादा कैपेसिटी बैटरी की मिली। और 1.5 से 2 गुना बैटरी की ज़्यादा, फिर हमें और कॉन्फिडेंस आ गया कि हाँ हमारा ये सारा जो तरीका है ये शायद ठीक ही है। तो फिर एक वो जो स्टूडेंट इस पे काम कर रहा था उसने अपनी स्टार्टअप उस पर खोल दिया, उसको बोलना नहीं पड़ा। स्टार्टअप एक बड़ी नेचुरल चीज़ है, इसको कोशिश करने की ज़रूरत नहीं है। अगर हम उस मोड में हैं, उस तरह से हैं, तो अपने आप ही हम देखेंगे अपने आप ही स्टार्टअप निकल गया। क्योंकि वो स्टार्टअप में क्या चीज़ें होती हैं, स्टार्टअप में 4 चीज़ें चाहिए होती हैं, टेक्नोलॉजी, टीम, बिजनेस प्लान, फंड। ये 4 चीज़ें मिक्स कर दो, स्टार्टअप बन गया। टेक्नोलॉजी, टीम, बिजनेस प्लान, फंड। अब उस बच्चे ने देखा कि भाई मैंने अपना एमटेक का थीसिस किया, टेक्नोलॉजी तो बन गई, और इस टेक्नोलॉजी की मार्केट रेडीनेस नज़र आ रही है, मार्केट रेडी लग रही है, वो जो CRL, MRL जो कुछ बताया उसमें उन पैरामीटर्स पे खड़ी उतर रही है। टीम उसने देखा कि हाँ भाई मेरे साथ टेक्नोलॉजी इनेबलिंग सेंटर है, उसके मैनेजर्स हैं। बिजनेस प्लान भी बनाना शुरू किया। हमारे जो एक स्टार्टअप प्रोग्राम चलता है क्रिएटिव स्टार्टअप, उसमें उसने एनरोल किया, तो बिजनेस प्लान भी बनाने शुरू कर दिया। तो अब वो अपनी स्टार्टअप कंपनी को चला रहा है। अब उसको, उसी कंपनी को, अब एक और कंपनी है तलवाड़ा में, दीपक इंटरनेशनल, अब उनके साथ वो नेगोशिएट कर रहा है फॉर इम्प्रूविंग देयर बैटरीज। तो ये वो जो आर्मर वायर टेस्टर है उसके कुछ फोटोग्राफ्स हैं ये। सो मेरे ख्याल से आई थिंक अब कुछ और ओपन हाउस डिस्कशंस हो जाएं। हमारे साथ प्रोफेसर उपेंद्र तिवारी जी भी हैं, जो हमारे गुरु हैं, हमारे मेंटर हैं टेक्नोलॉजी इनेबलिंग सेंटर के, और कुछ आपके डिस्कशन। प्रोफेसर इंदुपाल कौर जो कि नहीं सर, प्रैक्टिकली एंड थियोरिकल। और हमारे साथ पेटेंट क्वीन ऑफ इंडिया प्रोफेसर इंदुपाल कौर भी हैं। तो अब आप तो बड़े फॉर्चुनेट हो बेटे जो ऐसे लोगों के पास, और क्या इंस्पिरेशन चाहिए क्वेश्चंस की बौछार करो सर पे, और शो क्या कर सकते हैं, ये कैसे तुम्हारी हेल्प कर सकते हैं, तुम्हें क्या करना चाहिए, है ना? एक क्वेश्चन आया नीचे से, हाँ प्लीज। सर आपने 10 रेसिपीज शॉर्टलिस्ट करी बेटे केवल क्लाउड थी, आपने 10 रेसिपीज शॉर्टलिस्ट करी थी बैटरी मैन्युफैक्चरिंग के लिए, तो आपने 10 की 10 ट्राई की, वो 10 की 10 सारी फुलफिल हुई, या उसमें से आपकी कोई एक सेलेक्ट हुई? हाँ, हमने देखा कि इनफैक्ट 10 से भी ज़्यादा थी रेसिपीज़ जो हमें निकली, और हमें लगा अच्छी है, प्रॉमिसिंग है। अब उस रेसिपीज़ को उनको बनाने के लिए कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर भी चाहिए, है ना, लैब्स भी चाहिए, नो हाउ भी चाहिए। तो जैसे फॉर एग्जांपल एक बड़ी प्रॉमिसिंग रेसिपी निकल कर आ रही थी कार्बन फोम की।
पर वो कार्बन फोम को बनाने के लिए जो इक्विपमेंट चाहिए था उसमें 1000 डिग्री टेम्परेचर का कुछ वो ओवन भी चाहिए था और बीच में और प्रोसेसेस थे, थोड़े कॉम्प्लिकेटेड नज़र आ रहे थे। यहाँ केमिस्ट्री के जो प्रोफेसर्स हैं उनसे भी बातचीत की तो वो चीज़ बनती हुई नज़र नहीं आ रही थी। फिर हमने कोई ऐसी एक प्रॉमिसिंग रेसिपी हमें नज़र आई CNT बेस्ड, जो कि लो हैंगिंग फ्रूट हमें लगा और उसके नो हाउ भी नज़र आ गई। रिचा मैम मिल गए जो कहते हैं हाँ मैं डिस्पर्शन तैयार कर सकती हूँ। फिर हमने उसको शॉर्टलिस्ट कर लिया। तो एक ही टेस्ट किया अभी तक। सर आप कुछ कहना चाहेंगे? मेरे दो अच्छे लेक्चर्स हुए, तो एक अंदर से आवाज होती है ना कि बच्चे जरूर इसमें इंटरेस्टेड होंगे। आई एम प्रीटी श्योर कि आपको ये अच्छे लगे हैं, बट एक तो झिझक सी होती है ना कि यार मैंने सवाल पूछना है, बेटा वो सब इंडियंस में होती है, सब में होती है, पर हमें उसमें से निकलना है। यू पीपल यंग ब्लड, बेटे आप में तो ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए, है ना? सो प्लीज कम आउट ऑफ दैट। जैसा भी सवाल हो बेटे, जैसा भी सवाल हो आपका, तो पर एटलीस्ट इंजीनियरिंग वालों को हेल्प करता रहा है, तो अब इतने टेक्नोलॉजीज ले आओ कि सब लोग लग जाए हमारे। आज मुझे लगा कि भी थोड़ा सा बायोलॉजी वालों को है कि इंजीनियरिंग की तरफ जा रहे हैं, सो विल टेक केयर ऑफ दैट, विल टेक केयर ऑफ दैट। ज्ञान का क्वेश्चन है। फॉर श्योर, प्लीज। Sir, how can we make a balance between these three CRL, MRL? Suppose अगर सर CRL में हमारा स्केल है, लेवल है 4 और कोई अनदर CRL या MRL में हमारा लेवल कम है, तो हम एक बैलेंस कैसे बना सकते हैं कि हमारा प्रोडक्ट मतलब ऑन द स्पॉट और टॉप नॉच है? टॉप नॉच ऐसा है ना कि आपका टीआरएल तो हाई है, राइट, लेकिन एमआरएल और सीआरएल ये अगर मान लो कि कम है, ठीक, ऐसा नहीं है कि हाँ कि तब टेक्नोलॉजी ट्रांसफर नहीं होगा। टेक्नोलॉजी ट्रांसफर तब भी केस वैलिड है, लेकिन हमारा ऑब्जेक्टिव क्या हमेशा ध्यान में रखना है कि सक्सेसफुल कमर्शलाइजेशन ऑफ द टेक्नोलॉजी। अब सक्सेसफुल कमर्शलाइजेशन तब तक नहीं होगी जब तक कि उसमें रिवेन्यू जनरेट ना हुआ, राइट। ट्रांसफर इज अ डिफरेंट केस, लेकिन हमारा जो है वो टारगेट क्या है, दैट मीन्स सक्सेसफुल रिवेन्यू, वहाँ से कुछ आ रहा हो तब हमारा जो है वो अल्टीमेटली जो है वो मतलब ऐसा कुछ वैल्यू। नहीं है कि तीनों में एक पर्टिकुलर स्कोर होना चाहिए तब हमारा ऐसा स्कोर, ऐसे काफ़ी ज़्यादा मॉडल्स भी हैं, मैट्रिक्स डेवलप होती है, इनको तीनों को जो है वो कैटेगरीज के अकॉर्डिंगली अलाइन किया जाता है। मैंने वो डिस्प्ले नहीं किया था, लेकिन वी आर वर्किंग ऑन दैट एंड डेफिनेटली गेट बैक टू यू अगर आपको उस तरीके का चाहिए। I think I can also answer a part of this question for all of you. तो मुझे लगता है कि कोई भी काम शुरू करने से पहले हमें टैम सोम देखना चाहिए। हमें यू स्टार्ट विद, यूजुअली हम क्या करते हैं, हम एक पब्लिकेशन सर्च करते हैं। सो सबसे पहले तो हमें पेटेंट सर्च करनी है, ठीक है। उसके बाद फिर हमें ये देखना है कि मार्केट पोटेंशियल है कि नहीं इस प्रोडक्ट का, और उससे भी ज़्यादा जो मैं टेक्नोलॉजी डेवलप कर रही हूँ क्या वो स्केलेबल है, क्या वो कमर्शलाइज हो सकती है। सो कीप इट सिंपल, थिंक, आज ही ये सोचना शुरू करो कि अगर इस प्रोडक्ट को स्केल अप होना है तो इंडस्ट्री के पास क्या ऐसा वाला इक्विपमेंट है। मैं तो अल्ट्रासोनिकेटर से बनाई जा रही हूँ, है ना, और वहाँ कैसे होगा, ठीक है। या मैं इतना कोई हाई फाई इक्विपमेंट ले रही हूँ। अब लाइपोसोम्स में क्या है, लाइपोसोम वाज अ वेरी ब्यूटीफुल टेक्नोलॉजी, लेकिन एंड कितने साल पहले लॉन्च हुई, लेकिन क्या हुआ, 2 या 3 प्रोडक्ट्स ही आ पाए। क्यों? क्योंकि उसको मैन्युफैक्चर करने का जो तरीका है वो बैच रिएक्शन है और उसमें फिल्म हाइड्रेशन मैक्सिमम हो जाएगी। तो यू कैन अंडरस्टैंड द लिमिटेशन एट वन। क्या हो गया था जब अपने पास कोविड के साथ साथ जो आपकी फंगल इन्फेक्शन शुरू हो गई, तो सडनली हम हैंडल ही नहीं कर पाए, बिकॉज एट अ सिंगल टाइम एक बैच ही लिमिटेड बन पाता है एम्फोटेरेसिन बी का। तो वो क्यों है? क्योंकि टेक्नोलॉजी ऐसी थी। सो ये सब चीज़ें हमें पहले से सोचनी है बिफोर वी स्टार्ट वेंचरिंग और डेवलपिंग अ टेक्नोलॉजी और अ प्रोडक्ट। रिसर्च गैप आइडेंटिफाई करते हैं ना, तो उसी तरह से मार्केट गैप भी आइडेंटिफाई करना ज़रूरी है, तभी हम उसको आगे लेके जा पाएंगे, तभी वो कमर्शलाइजेबल बनेगी। सो ये सब दूरअंदेशी से सोच के तब करना है। आई हैव सो मेनी ऑफ माई PhD स्टूडेंट्स, तो जब ये कोई मेरे पास लेके आते हैं ना, तो मैं कहती हूँ ये बनेगा कैसे, वहाँ कैसे जाएगा, इंडस्ट्री में कौन बनाएगा इसको।
सो डू नॉट कॉम्प्लिकेट थिंग्स. नेचर जो है ना वो सिंपल है, ऑर्गेनाइज्ड है, सिस्टमेटिक है. तो जवाब भी सिस्टमेटिक हैं, ऑर्गेनाइज्ड हैं और सिंपल हैं. सिर्फ हमें ढूंढना है सही जगह पे, राइट. when he spoke about this ना foam जो सर ने बताया, तो टू ऐड टू व्हाट यू सेड ना, इंडस्ट्री क्या होता, जैसे पहले इफ़ यू रिमेंबर शुगर कोटिंग, जेम्स भी खाते थे, शुगर कोटेड टैबलेट्स बहुत पॉपुलर थी. ब्रूफेन इफ़ यू सी अर्लियर इट वाज शुगर कोटेड, but it was so time consuming, you know, it takes like full shift of the operator. तो gradually they moved to film coating. फिल्म कोटिंग भी कैसे नॉन एक्वेस होती थी पहले, यू नो, नॉन एक्वेस. हैजार्डस कितने होते हैं आप सोचो. आप अगर सॉल्वेंट, दैट्स व्हाई आई सेड राइट इन द बिगनिंग, सॉल्वेंट है ना, हैजार्डस, सेफ्टी, फ्लेमेबल, जितना कम यू कैन यूज इट, बिकॉज अदरवाइज वी हैव टू इन द प्लांट क्या करना पड़ता है, सब फ्लेम प्रूफ फिटिंग्स. We have to have a flame proof lab, you know, I mean every single switch and some flame proof होना पड़ता है. So we do have products like that. I'm not saying we cannot, you know, we can't do everything aqueous, but we have separate rooms for flame proof. पूरा industry तो नहीं कर सकते हैं. One more example I want to give, one hyoscine hydrobromide, one tablet was there, small tablet, and we got this project. हमको बोला गया R&D में आप बनाओ. फाइन, वी सॉ फर्स्ट थिंग वी रीड इज़ द MSDS, मटीरियल सेफ्टी डेटा शीट, विच वी ओवरलुक मेनी टाइम्स. उसमें हमने पढ़ा कि वो API को, यू नो, यू हैव टू फ्लोर को, इट इज़ वेरी, यू नो, इन कंडक्शन, सम सर को पता होगा, लाइक मैकेनिकल, आई एम नॉट एन इंजीनियर, बट it gets, you know, electricity, some conduction takes place and dust explosion. मैंने जो बताया स्लाइड में MCC, microcrystalline cellulose. So that when we saw, we said okay, हम हमारे लैब का R&D का तो करा देंगे, conduction whatever something we had to put under the floor. What about the plant? Can the commercially you can do production unit में कितना खर्चा आएगा? You know, right from blending to this, we cancelled. It got killed. तो वो जो J or whatever it is, you know, value of death आ गया उसी टाइम में. But do the, it's okay to kill a product right in the beginning, you know. But आगे जाके अगर करें, your resources, time, money, everything is wasted. TRL 8 तो बना लिया, लेकिन वो है ही नहीं, उसकी CRL नहीं है, MRL नहीं है. So identify in the beginning. It's okay to kill the project, but and in the very beginning. थोड़ा सा मैं 2 मिनट लूँगा. टेक्नोलॉजी इनेबलिंग सेंटर एक बहुत एंथुजियास्टिक प्रोग्राम एक लेकर आ रहा है, क्रिएट योर स्टार्टअप. इसकी रजिस्ट्रेशंस इस महीने के 30 तारीख तक हैं और इसमें हमने चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन के साथ पार्टनर किया है. सो दिस इज़ इन पार्टनरशिप विद चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन. और इसमें अगले 6 महीने में सिर्फ 12 सेशंस होने हैं और हर एक सेशन 2-2 घंटे का होगा और हर एक सेशन हाइब्रिड मोड में, ऑनलाइन भी आ सकते हैं आप या ऑफलाइन भी आ सकते हैं. 6 महीने में सिर्फ 12 बार सेशंस होंगे और बीच में असाइनमेंट्स दी जाएंगी. और इसके 3 मॉड्यूल्स हैं, मॉड्यूल 1, मॉड्यूल 2, मॉड्यूल 3. जो असाइनमेंट सक्सेसफुली करेगा वो फिर मॉड्यूल 2 में जा पाएगा और जो मॉड्यूल 2 की असाइनमेंट करेगा वो मॉड्यूल 3 में जाएगा. फिर मॉड्यूल 3 की असाइनमेंट कंप्लीट करके फिर जो रियल इन्वेस्टर है उसके सामने आपको मौका दिया जाएगा फॉर पिचिंग योर स्टार्टअप अगेंस्ट रियल इन्वेस्टर्स फॉर फंडिंग अगेंस्ट प्राइवेट इक्विटी. ये वाला सेकंड सीजन चल रहा है. फर्स्ट सीजन कंप्लीट हो चुका है. फर्स्ट सीजन में जैसे कि प्रोफेसर इंदुपाल कौर ने बताया, हमने 16 स्टार्टअप्स क्रिएट किए और आई एम सो हैप्पी टू शेयर विद ऑल ऑफ यू कि उन 16 स्टार्टअप्स में से 2 स्टार्टअप्स को हमने 3-3 लाख रुपया पंजाब स्टेट काउंसिल फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी से दिलवाया है, 2 को फ्रॉम पंजाब यूनिवर्सिटी से दिलवाया है और 1 को प्राइवेट इक्विटी फंडिंग से दिलवाया है. तो वी आर एबल टू रेज फंड्स ऑल्सो फॉर द स्टार्टअप्स. तो आप सबसे भी आग्रह है कि आप भी इस क्रिएट योर स्टार्टअप प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करें और इसके लिए अगर आपने कांटेक्ट करना है आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं, प्रोफेसर तिवारी से कांटेक्ट कर सकते हैं, डॉक्टर वीरेंद्र से कर सकते हैं, डॉक्टर अजय शर्मा जी बैठे हैं
अजय शर्मा जी, अजय शर्मा जी बैठे हैं, आप उनसे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। और इंजीनियर प्रतीक साहनी जी, वो भी यहीं पर हैं, आप इनसे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। तो ये बड़ा एंथुजियास्टिक बहुत अच्छा प्रोग्राम हम लेकर आए हैं आप सबके लिए। जो मॉड्यूल 1 की जो फीस है, रजिस्ट्रेशन फीस है, वो 1000 रुपीज़ प्लस GST है। और ये पूरे इकोसिस्टम में आप देखेंगे सबसे सस्ता प्रोग्राम है। चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन इसके साथ बहुत अच्छे से लगा हुआ है। और आई कैन नॉट लाइक दैट डिस्क्लोज पब्लिकली, बट मुझे पूरा विश्वास है कि इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन की बहुत अच्छी जो स्कीम्स हैं इस स्टार्टअप क्रिएट योर स्टार्टअप प्रोग्राम के माध्यम से आप सबको उपलब्ध भी होंगी, वो उसका आप लाभान्वित होंगे, उससे लाभप्रद होगा आपके लिए। और प्रोफेसर तिवारी, आप कहना चाहते हैं कुछ? बेटे आपने सब बता दिया। आई जस्ट वांट टू ऐड, इसकी जो टोटल चार्जेस हैं बेटे, देयर विल बी अराउंड 5000 रुपीज़, विच इज़ द चीपेस्ट इन इंडिया, क्योंकि हमें गवर्नमेंट सपोर्ट कर रही है, कुछ गवर्नमेंट भी हमें फंड्स दे रही है। 5000 भी जो आपसे ले रहे हैं बेटे, वो 3 स्टेजेस में हैं। जैसे मॉड्यूल 1 करेंगे उसके लिए क्लोज टू 1100 है। अगर आपको नहीं पसंद आता तो मॉड्यूल 1 के बाद आप एग्जिट कर सकते हैं। और ये हमारे पास भी है कि वी डोंट वांट कि भी हम जितने हमारे पास बच्चे हैं हमने सबको ऊपर लेके जाना है। हमारा मकसद पैसे लेना नहीं है बेटे। तो हम आपको भी इवेल्यूट करेंगे, जिनमें हमें लगेगा कि भी इनका ज़रा मुश्किल लग रहा है तो हम उनको विल से थैंक यू, आगे नहीं जा सकते आप, राइट। फिर जो मॉड्यूल 2 में आएंगे इट्स अबाउट 2000 रुपीज़। उसके बाद भी उनकी असेसमेंट होगी। सम ऑफ देम विल गो टू मॉड्यूल 3। ओके, सो पढ़ाने वाले जो लोग जो हैं बेटे, कुछ टॉपिक्स ये लेंगे, मगर IIM से लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो IIT वाले लोग हैं रिलेटेड टू दीज टेक्नोलॉजी बिजनेस इंक्यूबेटर्स के, जो मिशन पंजाब के जो चेयरमैन हैं, पहला लेक्चर वो डिलीवर करेंगे। सो वी हैव वेरी एक्सपीरियंस पीपल जो स्टार्टअप्स हैं जिनके सक्सेसफुल, जो उनके CEOs हैं, वो लेक्चर देंगे बेटे आपको। और ये लेक्चर्स का जो टाइम है आपसे क्लैश बिल्कुल नहीं करेगा। दे विल बी इधर ऑन वीकेंड्स और ऑन हॉलीडेज, और आफ्टर दी जो हमने रखा नहीं है अभी तक कि वीकडेज में आफ्टर 5 o'clock। सो वी वुड रिक्वेस्ट कि अगर आप ये कोर्स कर लेते हैं, ये एक तो आपके CV के लिए अच्छा होगा बेटे। मे नॉट बी आपके पास अभी कोई टेक्नोलॉजी दिमाग में कुछ हो, बट इट विल गिव यू अ बर्ड्स आई व्यू कि भाई ये चीज़ क्या है, स्टार्टअप चीज़ क्या है। नाउ जस्ट शिफ्टिंग टू अनदर एस्पेक्ट, आप लोगों ने अगर M फार्मा भी करनी है या मास्टर्स में अपनी रिसर्च करनी है बेटे, गिव इट ए थॉट, जो आपका आइडिया है, टॉक टू इंडस्ट्री, उनको क्या चाहिए, ब्रिंग दैट प्रॉब्लम टू योर मेंटोर्स, टू प्रोफेसर्स, उसके ऊपर काम कीजिए बेटे। तो इसकी सक्सेस रेट ज़्यादा होगी, क्योंकि इंडस्ट्री से प्रॉब्लम आती है तो इंडस्ट्री ने अब्जॉर्व करनी है, आपको ये सारा कुछ करने की कोई ज़रूरत नहीं। ऑल दे वांट इज ए आपकी R&D, आपका उन्होंने आइडिया दे दिया, यू विल डू इट। फिर उसमें भी टर्म्स एंड कंडीशंस हो सकती हैं कि IP उनको नहीं देना, पहले बात कर सकते हो कि हमारा आइडिया लग रहा है, सो हम भी इसमें आपके जो होंगे कि विल बी वन ऑफ द इन्वेंटर्स। ओके, सो ये बातें हो सकती हैं। उसके लिए टेक्नोलॉजी इनेबलिंग सेंटर बैठा, ये सब हम आपको बता रहे हैं कि कैसे टेक्नोलॉजी फ्रॉम लैब टू मार्केट जाती है। आपने नहीं करना, आप ये काम कोई नहीं कर सकता बेटे। दैट्स वाई वी हैव दिस टेक्नोलॉजी इनेबलिंग सेंटर्स, वो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आप अपनी R&D कीजिए, एंड बट यू शुड बी नोइंग कि एक तमाशा सरा है क्या बेटे। ओके, थैंक यू वेरी मच। Still you have time for any other questions? अभी सब टेक के लोग हमारे पास बैठे हुए हैं. We have three managers and the director and the person behind the technology enabling center. Any questions? Any quick questions? Vastav? No, sorry. Sir, we have seen many success stories in tech, but I wanted to know what are the failure stories and the main reasons behind failure story. So, as budding entrepreneurs, so we shouldn't commit these mistakes from the very beginning. दो चार जो आपको लगता है कि बड़ी glaring है, that is a common mistake any entrepreneur can make.
आई वेरी एक्साइटिंग क्वेश्चंस मेरे को बहुत अच्छा लगा कि एंड एवरीबडी वांट्स टू नो द सक्सेसेस. I am Dr. Ajay, Senior Manager at Technology Enabling Center, like associated with this for last 2.5 years now with Technology Enabling Center, and पूरी जर्नी एक मैंने कहूँगा कि एक साथ ही लिया है, टेकिंग गाइडेंस फ्रॉम सर मनु सर, आवर लाइक अंकुश वाज देयर. सो फेलियर्स बहुत सारे हैं, बहुत ज़्यादा चीज़ों से सीखा है इन एवरीथिंग. आप टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र की बात कर रहे हैं, मैं आपको एक स्टार्टिंग की बात बताता हूँ. स्टार्टिंग हाउ वी थिंक कि टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र हो जाएगी. एक टेक्नोलॉजी का पेटेंट है, उस पेटेंट के लिए हमने पढ़ना शुरू किया, उस पेटेंट को पढ़ लिया, उसका एक एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट बनाएंगे और इंडस्ट्री को भेजेंगे तो काम सारा हो जाएगा. ये हमने सोचा था, ऐसे किया, साइंटिस्ट के साथ बैठ के, मैम के साथ भी बैठ के एक पूरा 1 पेजर बनाया मैम के पेटेंट्स का. फिर पर वो क्लिक ही नहीं हो रहा, बहुत सारी इंडस्ट्रीज को पिच कर रहे हैं, नहीं हो रहा. देन आया कि नहीं, हम साइंटिस्ट बहुत सारे इकट्ठे कर लेते हैं, एक नहीं सुन पाएगा, हो सकता है 5, 7, 10 को इकट्ठे करके बताएंगे, तब वो ट्रांसफ़र हो जाएंगे, कुछ एक आधा हो जाएगा, ये एक पसंद नहीं आ रहा होगा. फिर सबको बिठा के फिर एक कॉन्फ्रेंस करवा ली, पहले एग्जीबिशन लगवाई यहाँ पे कि देख लो क्या है, फिर कॉन्फ्रेंस करवा ली, फिर नहीं समझ नहीं आया. देन वी अंडरस्टैंड कि देयर इज समथिंग डिफरेंट, हम कुछ गलत कर रहे हैं. देन वी इंट्रोड्यूस्ड बिजनेस कैनवस वर्कशॉप. एक हमने बिजनेस कैनवस वर्कशॉप खुद ऑर्गेनाइज की, किसी ने बताया कि ऐसी चीज़ होती है, लगवाई, उसको अंडरस्टैंड करवाया, मैम के साथ ही करवाई, एक पूरा बिजनेस कैनवस मॉडल कैसे बनता है वो अंडरस्टैंड किया. देन फॉर द सेकेंड टाइम व्हेन वी डिड द कॉन्फ्रेंस, वी इंट्रोड्यूस्ड बिजनेस कैनवस मॉडल विद द टेक्नोलॉजीज. तो वो जब वो बिजनेस कैनवस मॉडल करवाया तो सक्सेस स्टोरीज सामने आनी शुरू हुई. उस टाइम पे इंटरेस्ट बनना शुरू हुआ इंडस्ट्रीज का कि नहीं, ये टेक्नोलॉजीज वाकई ही प्रॉफिटेबिलिटी देती हैं. फिर समझ आया कि इंडस्ट्री को भाषा जो समझ आती है वो पैसे की आती है, कि व्हाट इज ROI, व्हाट इज मेरी कितने पैसा लगना है, कहाँ पे मार्केट है. उनको ये मतलब नहीं होता कि व्हाट इज द साइंस बिहाइंड द टेक्नोलॉजी, क्योंकि ज़्यादातर बेसिक साइंसेज ही हम यूज़ करते हैं. उनको ये मतलब होता है कि मैं पैसा इतना लगाऊंगा तो इतना कब बन जाएगा. तो वो बहुत टाइम लगाने के बाद, बहुत सारे फेलियर्स अंडरस्टैंड करने के बाद आज जो लेक्चर मेरे ख्याल से आपके सामने हुआ है, तो दिस इज़ वन फेलियर स्टोरी जो मैं कर सकता हूँ अंडरस्टैंड कि हमने सीखा है. एंड सेकेंडली अगर मैं बात करूँगा फॉर अंडरस्टैंडिंग व्हाट इंडस्ट्री वांट्स, हमें लगता है कि इंडस्ट्री को बहुत सारा कम्प्लेक्स चीज़ आती है. जब भी हम शुरू में जाते थे, वी यूज टू पिच कि हमारे पास हम ये कर देंगे, हम AI लगा देंगे, हम ये इंडस्ट्री का, वी यूज टू विजिट शॉप फ्लोर्स ऑफ इंडस्ट्री वेरी ऑफन, और हम उनको बताते थे कि बड़ी बड़ी चीज़ें कर देंगे आपकी इंडस्ट्री में. तो धीरे धीरे समझ आया कि बड़ी बड़ी चीज़ें नहीं काम कर रही हैं वहाँ पर काम क्या कर रहा है, उनकी छोटी छोटी प्रॉब्लम्स को सोल्यूशन देना. वहाँ पे काम कर रहा है उनकी बिल्कुल माइन्यूट, लाइक मेरे बिल्कुल गंगाराम सर हैं यहाँ केमिस्ट्री में, बिल्कुल वाटर के ऊपर काम कर रहे हैं, बेसिक केमिस्ट्री प्रॉब्लम्स लेके जा रहे हैं, IoT लगा रहे हैं हम छोटी छोटी प्रॉब्लम्स के ऊपर. स्टैम्प काउंट करना है उसको, मेरे कितना काउंट प्रोडक्ट बना है, सिंपल कैमरा लगा के मशीन काउंट कर रही है. दीज थिंग्स व्हाट इंडस्ट्री वांट्स, वो बहुत बड़ी साइंसेस नहीं चाह रहे. दिस इज व्हाट वी हैव अंडरस्टूड, लाइक. तो अब पता लग गया कि कैसे क्या अंडरस्टैंड करना है, कहाँ पर पिच करना है, क्या बनाना है. ऑल दिस इज वी हैव लर्नड विद टाइम. फेलियर स्टोरीज इसके अलावा भी बहुत सारी हैं, बट आई विल नॉट टेक मच टाइम ऑफ योर्स नाउ. हाँ, जैसे suppose आपने टेक्नोलॉजी डेवलप की, राइट, so what you want is कि भी हमने मार्केट में मैंने लेके जाना, इंडस्ट्री को मैंने देखा, आपने उसकी कितनी वैल्यू डाली है, वैल्यूएशन ऑफ योर टेक्नोलॉजी, तो साइंटिस्ट को पता होनी चाहिए. नॉर्मली हम जाते हैं, उनको 10 लगे थे, 15 लगे, कैसे कहा, कैसे निकाला आपने, दे हैव नो आइडिया. इंडस्ट्री बड़ी स्मार्ट है, इंडस्ट्री इज गोइंग टू आस्क, अच्छा 10 लाख कन्विंस अस. फिर वो कहता नहीं मेरा टाइम लगेगा, नथिंग नो यार, सही चलता ना, आप बताइए ना कितना है. फिर वो कहता तेरे को तो पैसा क्या सारा तो गवर्नमेंट ने दे देगी, राइट, क्यों नहीं है. तो दीज आर द थिंग्स वी शुड कीप इन माइंड कि मुझे इससे जाने से पहले मेरे पास टेक्नोलॉजी पेटेंटेड होनी चाहिए, तभी वैल्यू बनेगी उसकी, राइट. पेटेंट मेरे पास आ गया ना, उसकी वैल्यूएशन क्या है, फॉर द राइट पीपल. कोशिश करो अपने आप ही डायरेक्ट बात करो, अगर कोई इंडस्ट्री एसोसिएशन है या कोई इंडस्ट्री है, डायरेक्टली बात करके देखो आपसे,
पर डॉक्यूमेंटेशन के लिए आपको टेक के पास ही आना पड़ेगा। जैसे पेटेंट फाइल करना है उसके लिए पेटेंट अटॉर्नीज होते हैं, तो जो चीज़ें हमें मालूम है आप रॉ, ओके, बट फ्रॉम योर पर्सपेक्टिव ये चीज़ें आपको ज़्यादा, मैं जो चीज़ कर रहा हूँ इसकी मुझे वैल्यू दी। सेकंड एक और चीज़ है कि राइट असेसमेंट ऑफ द टीआर, वैलिडेशन। बहुत सारे साइंटिस्ट जो हैं उनको नहीं पता, मुझे मैं श्योर हूँ अभी भी कि आप इतने लोग यहाँ पे जो कमिट कर रहे हैं कि हमें टीआर समझ आ गया, मैच कर सकते हैं, राइट। मुझे लगता है कि हाँ 80% विल फेल जब आपको वेकेंट टेस्ट दिया जाए, राइट। तो राइट असेसमेंट ऑफ द, बहुत गलत जो हमारे पास जो ईओआई आते हैं ना उनमें टेक्नोलॉजी कुछ और लिखा होता है, लेकिन जब हम मीटिंग करवाते हैं और जब फिजिकल विजिट होता है इंडस्ट्री का वहाँ पे, तो वो सारी चीज़ें वो है बिल्कुल ऐसे रहता है कि हाँ कि ये तो चीज़ यहाँ थी क्या है। तो ह्यूज डिफरेंस बिटवीन, और सबसे बड़ी हमारी जो है वो ड्रॉबैक रहती है कि क्योंकि असेस नहीं कर पाते हैं टेक्नोलॉजी, हम तो सिर्फ उनसे रिसीव करते हैं टेक्नोलॉजी, तो हमें नहीं पता है हम उनकी लेबोरेटरी में क्योंकि प्रोटोटाइप मॉडल हम डिज़ाइन यहाँ नहीं हुआते हैं कि शोकेसिंग कर सकें, तो बहुत ज़्यादा दिक्कत रहती है इसमें। स्टार्टअप को लेके जो आप फेलियर्स को ये अगर समझना चाह रहे हैं, तो एक तो जैसे मैंने फाइनेमिक्स की बताई, फाइनेमिक्स में इन्वेस्टर से भी पैसा आ गया, इन्वेस्टर ने 10 लाख रुपया दे दिया और उसमें वो टेक्नोलॉजी भी रेडी थी, टेक्नोलॉजी के ऊपर काम भी हो रखा था, 4 साल काम हो रखा था, पर वो जो जिस लड़के के ऊपर पैसा लगाया ना, वो लड़का उसके अंदर वो एंटरप्रेन्योरियल माइंडसेट एज अ मैटर ऑफ फैक्ट इन रियलिटी वो चीज़ नहीं थी उसमें, वहाँ मिस्टेक हुई। वो कहीं वो नौकरी वाला माइंडसेट ही था उसका, और वो उस क्लैरिटी के साथ नहीं आया था। वो ही वॉज नॉट सॉर्ट ऑफ एक्सप्लोरिंग हिज कैरियर इन एंटरप्रेन्योरशिप। तो उसने देखा, वो पहले उसको लगा, मेरे को ध्यान है वो यूआईटी का स्टूडेंट था, फाइनल ईयर का था, तो बहुत शार्प, आप उसको कोई पेटेंट दोगे ना तो 15 मिनट में वो उसको अच्छे से समझ लेता था। तो मेरे को बड़ा शार्प लगा हर एक तरीके से। तो उसको मैंने एक दिन पिच किया कि यार भाई तू इसके ऊपर स्टार्टअप करना चाहेगा? कहता हाँ सर बड़ा अच्छा लग रहा है, यस। उसको वो एक रहता है ना स्टार्टअप फाउंडर सीईओ वाली फीलिंग। उसको इन्वेस्टर से मिलवाया, इन्वेस्टर भी रेडी हो गया, पैसे दे दिए। पर जब हार्डशिप्स आई, जब उसको खुद लेबर ढूंढनी पड़ी, हाथ काले करने पड़े, कपड़े गंदे हुए उसके, मैकेनिकल में तो ऐसे रहता ही है, तो ममा का उसको प्रेशर पड़ा, ये गिव अप। उसने कहा मेरे को तो आगे की पढ़ाई करनी है। इन्वेस्टर का 10 लाख डूब गया, और उस इन्वेस्टर को मेरे को फेस करना बड़ा मुश्किल है, आज तक फेस नहीं कर पा रहा हूँ। बल्कि 2-3 दिन पहले एक भरे हॉल में उस इन्वेस्टर ने मेरे को पब्लिकली पॉइंट आउट किया कि भाई इस बंदे के बोलने पर मैंने वहाँ 10 लाख रुपए लगाए और 10 के 10 लाख डूब गए। और उसके मामा ने बोला कि मेरे को ये तेरा ये काम पसंद नहीं है, तू छोड़ दे। और मेरे को आके वो बोलता है, मामा ने बोला कि छोड़ दे, तो मैं छोड़ रहा हूँ। मैं मामा की बात नहीं टाल सकता। मनु ये कह रहा है कि if your mummy is child, तो start मम्मा की बात रोज काम मानते हैं, जो खुद मानना चाहे वहाँ मम्मा का नाम यूज करते हैं। ये भी है इनका, टीचर की बात, मम्मा की बात, वो इनके मूड पे होती है। और एक और फेलियर स्टोरी है थोड़ी। उसमें क्या था कि यहीं यूनिवर्सिटी में ही कंपनी है, वो ठीक चल रही है। तो पहले उन्होंने अपना एक प्रोडक्ट बनाया जो कि प्रेडिक्टिव मेंटेनेंस करता था, कि आप उसको शॉप फ्लोर पे लगा दो तो वो प्रेडिक्ट करता था कि ये कब मशीन ख़राब होने वाली है। अब उन्होंने वो जो विजुलाइज़ किया, इमेजिन किया, वो अपने हॉस्टल में बैठ के या क्लासरूम में बैठ के विजुलाइज़ कर लिया। क्लाइंट को इनोवेशन जर्नी में डे 0 से इन्वॉल्व नहीं किया। क्लाइंट को इनोवेशन जर्नी में डे 0 से इन्वॉल्व करना चाहिए, उसको फिजिकली टच करना चाहिए क्लाइंट को, उसको उससे इनोवेशन करवानी चाहिए साथ में मिलके। तो उन्होंने उसको नहीं किया। उन्होंने कुछ तैयार कर लिया, बहुत खुश, पैकेज भी कर लिया, खूब पैसा भी लगा दिया, अपनी जेब से भी लगवा दिया, गवर्नमेंट का भी लगवाया। अब जब मार्केट में जा रहे हैं तो वो ऑब्जॉर्व नहीं कर रहे, उसको ऑब्जॉर्व नहीं कर रहे। फिर उनके पेशेंस लेवल एक समय के बाद कम होने लग गया। फिर उसके बाद वो जो फाउंडर्स थे वो आपस में ही लड़ पड़े, और फिर आपस में लड़ पड़े, फिर ब्रेकअप हो गया। तो ब्रेकअप यही तरह के होते हैं। सारे लेक्चर में ऐसे होने चाहिए।
अब एक और स्टार्टअप है जो कि उसमें क्या किया है उसने, एक स्टार्टअप अभी जो चल रहा है बड़ा अच्छा चल रहा है अभी, टचवुड, उसको इन्वेस्टमेंट भी दिलवाई है हमने। उस स्टार्टअप में उस बच्चे ने डे -1 में क्लाइंट को साथ में मिल के उसने इनोवेशन स्टार्ट किया। उसने अपनी इनोवेशन शॉप फ्लोर ऑफ इंडस्ट्री से स्टार्ट की। तो वो ये जो डॉक्टर अजय शर्मा जी हमारे साथ हैं, तो ये विजिट किया इन्होंने, तो वहाँ से इन्होंने देखी प्रॉब्लम कि भाई जो एफ्लुएंट ट्रीटमेंट में जो एफ्लुएंट है उसकी ट्रैकिंग का इशू आता है ट्रक में। तो ये लेकर आए प्रॉब्लम, फिर बच्चों से शेयर करनी शुरू की कि भाई कोई देखो कोई कर सकता है ये ट्रैकिंग की प्रॉब्लम को ठीक कर सकता है, टैंकर में कितना एफ्लुएंट जा रहा है, जो मालिक है वो चाहता है मेरे मोबाइल पे नज़र आता रहे कि कितना एफ्लुएंट है ट्रक में। फिर एक लड़का आया, बात की, उसने मिलाया उनके साथ, तो फिर जब मिलवाया तो उसने डे 0 में ही उसने 3 लाख रुपए दे दिए, ले भाई तू करेगा ये ले पकड़ो। जस्ट इमेजिन, क्लाइंट के पैसा डे 0 में ही मिल गया। किसको? एमटेक के स्टूडेंट को। लकी नहीं मैम, झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए। पीओसी तो उसने बना के दिया पहले उसको, अच्छा उसको पहले वो बहुत बोलता रहा उसको कंपनी वाले को कि भाई हम आपके ट्रक का जो है मोबाइल पे ला देंगे, ट्रक का जो डाटा है मोबाइल पे ला देंगे। लुधियाना का सेठ है, उसको समझ ही नहीं आ रहा। फिर उसने एक दिन क्या किया, एक बीकर ले गया, बीकर में एक छोटा सा सेंसर ले गया और उसके टेबल पे रखा, उसको बोला ये देख यार, ये देख सेंसर है, ये तेरे अपना मोबाइल खोल, मोबाइल पे सारा डाटा आ रहा है कि नहीं। अब मैं पानी थोड़ा सा इसमें कम कर रहा हूँ, रीडिंग चेंज हो रही है। तो हाँ यार तू तो कर लेगा है ना। तो एक्शन स्पीक बेटर देन वर्ड। और उसने फिर उसको 3 लाख की फंडिंग दे दी जब वो एमटेक कर ही रहा था, जैसे आप सब कर रहे हो। 3 लाख की फंडिंग दी उसने, फिर आगे उसका सारा बनाया। अब वो नेगोशिएट कर रहा है उससे, 20 लाख का ऑर्डर नेगोशिएट कर रहा है, इन्वेस्टर से उसको 10 लाख की फंड मिला है। और बाकी कंपनीज में अपने जो वो है ना प्रोडक्ट को डिप्लॉय कर रहा है। डाईप्लास्ट में उसने डिप्लॉय कर दिया अपना प्रोडक्ट। अब प्रतीक सानी के एफर्ट से वर्तमान केमटेक में वो अपना उसको बिजनेस मिलने का अच्छा चांस है। तो इस तरह से जो टेक है इस तरह से एम्पावर कर रहा है आप सबको टू क्रिएट योर ओन स्टार्टअप्स विच आर हेल्दी फ्रॉम डे 0। that is what I'll say कि learn from our failures, join this create your startup। इसमें हम बहुत सारी ऐसी लाइव एग्जांपल्स को बताते हैं, शेयर करते हैं क्या करना है क्या नहीं करना है। एंड इनफैक्ट वी ऑल्सो शेयर प्रॉब्लम्स ऑन विच इंडस्ट्री इज लुकिंग कि क्या करना चाहिए, लाइव इंडस्ट्री प्रॉब्लम्स क्या हैं। यहाँ बैठ के तो नहीं पता लग सकता। व्हाट आर देयर प्रॉब्लम्स टू विच ऑन विच यू कैन वर्क। और अगर किसी पेटेंटेड टेक्नोलॉजी पे भी बनाना है तो वी हैव लिस्ट ऑफ वेरी गुड पेटेंटेड टेक्नोलॉजीज। उस पेटेंट टेक्नोलॉजी पे भी अपना रिसर्च इंटरेस्ट रखते हुए वी कैन लुक इनटू फॉर क्रिएट स्टार्टअप्स। और ऐसे लाइफ एग्जांपल्स, बिजनेस मॉडल्स जो टैम सैम सॉम आज पढ़ा जो भी किया होगा वो पूरा इलेबोरेटेड आप लोगों को विद द हेल्प ऑफ मेंटर्स वी लेट यू अंडरस्टैंड विद प्रैक्टिकल थिंग्स। यू शुड ज्वाइन। मेरे ख्याल से दिस इज द वंडरफुल इनिशिएटिव। और अगर किसी के अंदर भी ज़ील है टू क्रिएट स्टार्टअप, ही शुड ज्वाइन दैट। Link, you can scan this and register. We will share this in the group also. ग्रुप में शेयर कर देते हैं हम अभी, है ना, जस्ट टू लेट यू नो। सो स्टार्टअप्स आर सपोज टू फेल। आई वाज रीडिंग समवेयर नॉर्वे या किसी कंट्री में, जब वो कोई स्टार्टअप पिच करने जाता है अपना, तो दे आस्क हिम फेलियर्स कितने हुए हैं। So the more number of failures you have, more chances of you getting that pitch or getting that funding are more. और I remember my father used to say कि अगर एक बारी worst के लिए prepared हो जाओगे ना, फिर जो भी होगा उससे अच्छा होगा। So अच्छा ही होगा। So worst ये है कि हम fail करेंगे, हमें startup बंद करना पड़ेगा, ठीक है। So ये हम सोच के चलते हैं तो फिर मुझे लगता है कि
कुछ ना कुछ होता जाएगा एंड वी वुड नो क्या चीज़ें इसको बंद करवा सकती हैं. तो वहाँ से अगर शुरू करेंगे अपनी जर्नी तो बिकॉज रियलिटी चेक तो यही है ना, रेन चेक तो करना ही है एंड चांसेस हैं कि वो फेल करेगा, लेकिन फेल करने से पहले मैं उसको बेच देती हूँ, उसकी वैल्यूएशन बढ़ जाती है या उसके कोई बायर्स आ जाते हैं या मेरी टेक ट्रांसफ़र हो जाती है. तो आई थिंक आई एम अ विनर एंड द एक्सपीरियंस दैट आई गेन आउट ऑफ इट दैट इज़ गोइंग टू स्टे विद मी फॉर द होल लाइफ. मेरी छोटी रह गई है, तुम लोगों की ज़्यादा है अभी. So you will the experience would last you even longer, but don't shy away from it. अगर मन में इतनों का भी मन में आता है ना कि मुझे स्टार्टअप करनी है तो कर लेनी चाहिए, ट्राई ज़रूर करना चाहिए, है ना. ट्राई करने से पहले नहीं छोड़ना चाहिए. सो आई थिंक दैट्स द मैसेज, सब टेक वालों का भी, मेरा भी, सर का भी, हम सब यही चाहते हैं एंड प्राइम मिनिस्टर मोदी का भी, है ना. सो वी आर ऑल लुकिंग टूवर्ड्स दैट. सो I think with this we can close, and this is the time we would like to honor both our resource persons, and we are so very grateful. Dr. Manu is a very busy person, पर मैं इनके पीछे पड़ी हुई थी कि नहीं मुझे एक सेशन आपसे करवाना ही करवाना है. ही kept on saying नहीं नहीं मेरे मैनेजर्स आ जाएंगे एंड ही हैज़ बिन वेरी बिजी. कभी कभी मेरा जवाब नहीं देते थे, कभी कभी देते थे, लेकिन वो किसी बात के लिए भी मुझे कॉल करते थे तो मैं सबसे पहले कहती थी मेरा प्रोग्राम तो करवा नहीं रहे हो, मुझे आपका टॉक चाहिए उसमें. सो आई थिंक इवेंचुअली आई कुड कन्विंस हिम टू कम एंड आई एम श्योर ईच वन ऑफ अस gained an insight from that. And thank you so much Dr. Manu. And ये बोनस हो गया कि सर हमारे पास आ गए आज. Professor Rupinder Tiwari has so much of experience behind him. I think his energy, वो कहते हैं ना सर के साथ तो shoulders ऐसे कर लो. So I think we can all learn so many things from him. Thank you so much sir. I'm sure every one of you would agree we had a lovely sessions with the tech team, and we had the energy of 4 managers with us, और उनके ऊपर से डॉक्टर मनु और डॉक्टर मनु के ऊपर the mentor प्रोफेसर तिवारी. So I'm sure हम लोगों के लिए कितनी इनके लिए रिस्पेक्ट है ना बेटे, बता नहीं सकते. So can have a picture with you with the tech team. प्रतीक आ जाओ बेटे. अच्छा दिव्या कर देंगे. बाकी कोई वरिंदर बेटे आओ उधर. No, you should be in the center. सादा भी रहेगी ना. हाँ सर. Photoshop.
मेरे साथ 2-2.5 साल से है, लेकिन आई सी सो मच चेंज इन हर एवरी ईयर। सर होंगे और सर होंगे, सब लोग होंगे, ऐसे तो मिली है डॉक्टर अजय।